बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग तमाम व्यूवर्स को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी से, जहां पर कायद-ए-आज़म ट्रॉफी सीज़न 2022 का आगाज़ है। चौथा मरहला, आज दूसरा दिन। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। एक अच्छी क्रिकेट देखने की उम्मीद है आज, और ओवरऑल जो सिचुएशन अब तक की रही इस मैच में पहले दिन में, उसका अहवाल आपको बता दे चलें। बहुत ही खूबसूरत जुड़वां शहरों का मौसम है। हल्की हल्की हवा चल रही है, और ये हवा जो है ये कैसे बॉलर्स को लेकर चलेगी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं स्कोर कार्ड। 47 रन की पारी की रेहान अफरीदी ने, और उसके बाद साहिबजादा फरहान 53 रन। और जो सबसे हाईलाइट है यहाँ पर वो है पार्टनरशिप अभी कामरान गुलाम और उनके साथ मोहम्मद सरवर अफरीदी की, जो कि जारी व सारी है। 291 रन पे पहुंची है केपी की टीम, उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। किसी भी तर्ज की क्रिकेट में पार्टनरशिप का जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये देखिए 163 रन पे जा पहुंची 274 बॉलों पे। तमाम इतराफ स्ट्रोक्स खेले गए और वेल प्लान्ड, हवा में भी बॉल गई लेकिन गैप्स निकाले, उसके साथ लेट कट, तमाम तर जो एक अच्छे बैटर में शॉट्स होते हैं, स्ट्रोक्स होते हैं, वो देखने को मिले। आगाज़ बेहतर नहीं था केपी का, लेकिन ये शराकत ऐसी थी जिसने जान डाली स्कोर कार्ड में, हिम्मत बंदी प्लेयर्स की और दिल बड़े हुए। लेकिन यहाँ पर बॉलर्स के लिए बड़ा मुश्किल वक्त था सिंध की टीम के, जब स्पिनर्स पेसर्स इस कोशिश में थे कि कोई विकेट निकाल पाए। उस मरहले में 163 रन की ये शराकत जोड़ी सरवर और कामरान ने, और एक्सीलेंट बैटिंग की। बॉलर्स के लिए काफ़ी टफ दिन था। शुरुआत बेहतर थी जब 2 विकेट अर्ली गिरे, मीर हमजा ने उड़ाए, 2 विकेट हासिल किए मोहम्मद उमर ने, 1 विकेट मिली अबरार अहमद को। बड़ा लंबा काम रहा उनका, 32 ओवर 105 रन दिए और 291 पे पहुंची टीम 5 विकेटों पे। जो आखिरी विकेट था वो 128 पे गिरा था। उसके बाद से जो बॉलर्स थे उनको बड़ा अच्छा खेला बैटर्स ने और अपनी दाग बिठाई। और मौसम तो बेहतर है, लेकिन पिच का मौसम कैसा है, क्या होगा, कैसे खेलेगी ये 22 यार्ड, शाह फैसल हमें बताएंगे। Day 2 of this Quaid-e-Azam Trophy clash. Yesterday, 291 runs were scored on this pitch, which was expected to do a lot more for the bowlers. One reason, you could argue with the plans that the skipper applied and the bowling that was done. But on this day too, if you look at the pitch, probably it should be the best batting day. Like we said yesterday, it started out quite dry, so nothing much has happened. That green tinge has disappeared. If you look further down, there's some bowler's footmark developing. It's dry. It won't have any impact today, but we need to keep an eye on this for the days to come, because remember, KP has Sajid Khan, and this is an ideal length for an off spinner when he comes to bowl. Something we need to keep an eye, and probably later this afternoon when KP bowls, we will know if this will have any impact. Like I said, best batting day for me. ग्रेट बैटिंग डे, शाह फैसल बता रहे थे पिच को देखकर। कामरान गुलाम ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, उनके लिए कल बड़ा ज़बरदस्त दिन था, तो उन्होंने जिस तरीके से बैट की वो अली यूनुस ने उनसे पूछा। आइए चलते हैं उनकी तरफ। कामरान, बहुत अच्छा आगाज़ हुआ है सीज़न का, अब ऑलमोस्ट अपनी दूसरी सेंचुरी कर रहे हैं। आप चाहेंगे कि अब 2019 वाली परफॉर्मेंस रिपीट की जाए? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ है। इंशाल्लाह ताला यही माइंड सेट है कि इस बार भी अपना वो रिकॉर्ड तोड़ने का कोशिश करूँ। अब रिकॉर्ड आपने तोड़ा, आप हर साल रन्स करते हैं, पाकिस्तान टीम के लिए अभी तक नहीं खेल सके हैं, तो अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? जी बिल्कुल, काफ़ी 2-3 साल से काफ़ी अच्छे रन्स हो रहे हैं माशाल्लाह। T20 में भी, वनडे में भी, 4 में भी काफ़ी अच्छे रन्स हो रहे हैं। पाकिस्तान टीम में भी जगह नहीं बना सका, पर अपना हार्ड वर्क करूँगा इंशाल्लाह ताला। जब भी ज़रूरत होगी पाकिस्तान टीम में मुझे चांस मिलेगा तो अच्छे से अच्छा करूँगा। अब इस मैच में कप्तानी के फ़राइज़ भी अंजाम दे रहे हैं, क्या वो एडिड प्रेशर है? नहीं, कप्तानी से पहले भी मैंने काफ़ी कप्तानी की है, अंडर 19 में किए, सीनियर डिस्ट्रिक्ट में किए, क्लब क्रिकेट में किए। इसका कोई प्रेशर नहीं है, एक्सपीरियंस है। फर्स्ट क्लास का मेरे ख्याल से पहली दफ़ा कप्तानी कर रहा हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं है। थोड़ा इस मैच के बारे में बात करते हैं, इस पिच के बारे में स्पेशली बात करें। क्या ख़ास बात है कि आप रन्स कर रहे हैं? क्योंकि सिंध ने पहले बॉलिंग की थी,
तो थोड़ी मुश्किलात हुई थी शुरू में आपको? जी स्टार्ट में यहाँ पिंडी का विकेट तो मशहूर ही है, मतलब काफ़ी स्टार्ट में काफ़ी मुश्किलात होती है, पर यही था सारा गेम आई थिंक मेंटल का होता है सारा। मेंटल अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो डजंट मैटर, विकेट चाहे घास हो पटाखा हो जो भी मर्जी हो, सारा के लिए मेंटल का है। तो मेंटली आप स्ट्रॉन्ग हो तो ईजिली आप रन बना सकते हैं। अबरार अहमद एक मिस्ट्री स्पिनर हैं, 11 विकेट्स हासिल की उन्होंने लास्ट मैच में यहाँ पे, उनको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, तो क्या खास बात थी उनको खेलने में? हाँ क्योंकि उसने पिछले मैच में काफ़ी अच्छी मतलब 10-11 विकेटें ली थी, सारा टीम उस पर ही डिपेंड कर रहे थे कि मतलब उसको बैक करे। तो मेरे माइंड में यही था इसको थोड़ा थका के मतलब थकाऊँ, तो उसी तरह मैंने तो उसको थकाया, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद रन स्टार्ट हो गया। अच्छी पोजीशन में इस वक्त कहाँ तक स्कोर लेके जाना चाहेंगे? जी काफ़ी माशाल्लाह अच्छी पोजीशन में अभी देखते हैं, मैक्सिमम जितना भी ज़्यादा स्कोर बोर्ड पे लगाए तो इंशाल्लाह ताला फिर हमारे लिए आसान है। चलिए, थैंक यू वेरी मच कामरान गुलाम एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। वेल कामरान गुलाम कप्तानी कर रहे थे और अंपायर जिस वक्त आ चुके हैं सेंटर में, सेकंड डे नासिर हुसैन, प्रोफेसर नासिर हुसैन इनफैक्ट, और बड़े अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, लगभग 30 साल से जो जनरेशन्स हैं उनको पढ़ाते हुए, स्पेशलिटी बायो। और सऊद भी यहाँ पर अपने जो बॉलर्स हैं उनको कुछ पढ़ाएंगे आज, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग की ज़रूरत है। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं यासिर हमीद, वेलकम करते हैं आपको। और इसी असना में दोनों जो बैटर्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता चल कदमी आते हैं। शुक्रिया इजाज़। कामरान गुलाम और सरवर, जिनकी एक शानदार पार्टनरशिप जो है, वहीं से आगाज़ होगा पार्टनरशिप का, जहाँ से उन्होंने छोड़ा था कल। जी हाँ, और आगाज़ होना भी वहीं से चाहिए, क्योंकि जिस वक्त आपके बैटर सेट हों, जो माइंड है वो जेल हुआ हो, अच्छी बैटिंग कर रहे हों। सरवर ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की और अच्छा साथ दिया कामरान गुलाम का। और 118 बॉलें जो इन्होंने खेली, 121 इनफैक्ट 79 में, आप कह सकते हैं जो स्ट्राइक रेट है वो भी बहुत बेहतर है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का। और उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ रही, जो प्रेशर था उसमें से निकाला अपनी टीम को, क्योंकि 5 खिलाड़ी जब ऊपर नीचे आउट हों, उसके बाद से जब आप कम बैक कर रहे हों और ये शराकत लगे, और बीइंग अ कैप्टन कामरान गुलाम की इनिंग की भी यहाँ पर तारीफ़ करनी होगी कि उन्होंने पूरा वक्त लिया, 2 छक्के और 9 चौके इस इनिंग में शामिल हैं यासिर। जी हाँ, बिल्कुल एक आला इनिंग खेली कामरान गुलाम ने। उस वक्त आए पिच पे जब इनकी टीम मुश्किलात से दो चार थी, और उस वक्त इन्होंने छोटी छोटी पार्टनरशिप्स की, और फिर ये जो मेन पार्टनरशिप है इनकी और सर्वर की, इसने बहुत ज़्यादा डैमेज किया सिंध की टीम को। अभी 291 पे 5 है मीर हमजा, जिन्होंने 18 ओवर्स किए, 5 मीटर 38 रन और 2 विकेट्स हासिल किए। इन्होंने ही शुरू में विकेट्स ली थी। और पहला बॉल होने को है सुबह का, बड़ी ज़बरदस्त सुबह है यहाँ पर जुड़वा शहरों की, मौसम इस वक्त बहुत बेहतर है। केपी वर्सेस सिंध, पहला बॉल आज के दिन का, स्पॉट ऑन। अच्छा यासिर, एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि कल भी हम इंतज़ार करते रहे नए बॉल का कि किस वक्त जो है वो नया बॉल आएगा, और जो पेसर्स हैं उनको यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। तो अर्लियर ऑन क्या 2-3 ओवर लेकर उसके बाद चांस हो सकता है नए बॉल लेने का? जी हाँ, बिल्कुल, डेफिनेटली नया बॉल जो है वो ड्यू है, इनको अवेलेबल है। और ना लेने की एक वजह ये भी है कि दोनों बैट्समैन सेट खड़े हैं, और नए बॉल से एक चांस होता है कि कहीं बैट बॉल जो है वो बल्ले पे आना शुरू हो जाए तो रन्स का फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई मेरे ख्याल से ऊंचा खेले हवा में, लेकिन बॉल इस वक्त फील्डर से आगे है, और इंटेंशंस कुछ ऐसा ही है, लगता है यही है कोच कैप्टन ने ये फैसला किया कि तेज खेलेंगे सुबह। जी बिल्कुल, एक ऐसी शॉट जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम सर्वर से, मिड ऑफ के ऊपर से खेलना चाहते थे, पूरी तरह टाइम नहीं हुई, लेकिन लकी रहे कि हाथ में नहीं गई। बिल्कुल तीसरा बॉल था ये आज के दिन का, और है वैसे एग्रेशन है इनमें, ये एग्रेसिव ही खेलते हैं, और इस दफ़ा लकी रहे। एक स्लिपी है इस वक्त और एक गली, कवर में 3 फील्डर,
कोशिश यही होगी यहाँ पर सर्वर की कि जिस तरीके से इनकी जो शॉट के नतीजे में डीप पॉइंट आप देख सकते हैं कि एक फील्डर खड़ा किया, और क्या दोबारा से बैक ऑफ लेंथ जाएगा या फुलर? यहाँ पर विकेट की खोज है सिंध की टीम को। जी हाँ, और सर्वर को रन्सों की खोज है। 81 रन 124 बॉलें खेलें और इन्होंने एक्सीलरेट किया है। अगर देखा जाए दोनों के स्ट्राइक रेट में फ़र्क भी है काफ़ी। सर्वर जो है वो थोड़े से एग्रेसिव है इस इनिंग्स में, इस पार्टनरशिप में। फुलर बॉल था, इसको खेल दिया गैप में, लेकिन इस तर्ज के शॉट के लिए उन्होंने फील्डर डीप में ले रखा है। 2 रन हासिल किए। वेल, इसका काफी फ्री फ्लो है बल्ले का। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था और थ्रो की अपना हैंड्स पूरी तरह। बॉल मिडल नहीं हुई, लेकिन अच्छी इफेक्टिव शॉट 2 रन्स के लिए। ऑफ स्टंप से बाहर, और ऐसा करना पड़ेगा। आप हर बॉल पे इस तरह से एरी फेरी हवा में शॉट नहीं लगा सकते इस तरह की क्रिकेट में, और ऑलरेडी ये दोनों कर चुके हैं कि जिस अंदाज से इन्होंने टाइम स्पेंड किया और वक्त लिया अपनी बैटिंग का, और ओवरऑल अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। वेल, खालिद महमूद सीनियर और नासिर हुसैन अंपायर ही हैं, प्रोफेसर नासिर हुसैन, अच्छे पीसीबी के अंपायर। ये हैं खालिद महमूद सीनियर। बड़ा अच्छा इनका इस वक्त कहना चाहिए जो टाइम है वो गुजर रहा है मैचेस में। थोड़ा लेट खेले, लेकिन नीचे रहा बॉल। इवेंट फुल ओवर। 91 ओवर गए, 295 पे 5 केपी। थोड़ी सी सर्वर की अप्रोच से मेरे ख्याल से थोड़ा सा डगआउट में भी थोड़ी हलचल और बेचैनी सी हो गई है केपी को भी, कि क्या हो क्या रहा है। मोहम्मद उमर पवेलियन एंड से अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। 19 ओवरों में 45 रन दिए, 2 मेडन भी किया और 2 विकेट्स भी हासिल की। इम्पॉर्टेंट स्पेल जो बीच में साहबजादा फरहान को और नबी की विकेट्स ली इन्होंने, उस वक्त बहुत अच्छे रिदम में लग रहे थे ये। वहाँ पे इन्होंने अच्छी लंबी बॉलिंग की। यासिर ऑफ साइड की फील्ड को पैक कर रहे हैं, और एक फील्डर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए डीप बैकवर्ड पॉइंट की जाने बढ़ रहा है, लेकिन जो स्लिप है और जो शराकतदारी ओवरऑल है इनकी बहुत बेहतर रही। कामरान गुलाम के जो 183 बॉलों में उन्होंने रन्स किए वो बहुत बेहतरीन थे। कोई रिस्क नहीं लिया, तमाम तर जो क्रिकेट थी उनकी ऑन मेरिट रही, और कप्तान होने का हक अदा किया फिलहाल अब तक। ऑफ स्टंप से बाहर था, प्रोटेक्शन मौजूद है। पहला बॉल ऑफ स्टंप के बाहर की, और इब्रार थे फील्डर। 2 रन हासिल किए कामरान गुलाम ने। पहले इस वक्त जहां पर विकेट्स लेना मुश्किल है, लेकिन दूसरी जानिब हमें देखना होगा कि जो वक्त है, जो लम्हात हैं इन दोनों की बैटिंग को, वो कितनी देर तक कैरी करेंगे, क्योंकि आज दूसरा दिन है। और कोशिश होगी यहाँ पर कि
350 मार्क भी टचिंग 400 के राउंड अबाउट आज लंच तक की बारी लें और इन दोनों के पास बड़ा अच्छा मौका है। अबरार अहमद कल बड़े लंबा स्पेल किया इन्होंने, लेकिन टायरिंग एफर्ट थी, लेकिन हो सकता है कि दूसरे दिन पिच जो है वो काफ़ी बेहतर हो उनके लिए। यहाँ कामरान ने बड़ी अच्छी बारी ली कल, और आज जब अब सुबह आए हैं, अभी सिर्फ इन्होंने एक बॉल खेली है, लेकिन दोनों के जो इंटेंट है वो बड़ी पॉजिटिव है। अगर देखा जाए कामरान ने दोनों क्रिकेटिंग शॉट्स खेली, अच्छी शॉट्स खेली हैं, लेकिन ये वो बॉल्स थी जो अर्ली ऑन छोड़ी जा सकती हैं। और यासिर अभी ये देखिए डीप पॉइंट का फील्डर है, कैसी अप्रोच है ये? देखिए बॉल पुराना है और जो शॉट्स लग रही हैं तो अब तो बनता ही है डीप पॉइंट, इन्होंने पहले ही ले लिया था। लेकिन बैट्समैन जो है अभी सुबह का टाइम है और ये स्लिप में से बॉल गैप में से गई और 4 रन हासिल किए सर्वर ने। लकी रहे इस बार सर्वर, जो हम देख रहे हैं सर्वर को पहले ओवर में भी शायद ये वो अपने 100 का प्रेशर लिए हुए हैं। पहला 100 होगा इनका फर्स्ट क्लास करियर में। बहुत ज़्यादा गैप था। ये परफेक्टली सेकंड स्लिप का कैच था और ये खुरम जो है वो मेरे ख्याल से थर्ड स्लिप में खड़े हैं। हाँ, अब थोड़ा सा अंदर हुए वो एक स्टेप और यहीं से बॉल गया। लकी रहे सर्वर। एक बार फिर हार्ड हिट, बहुत जबरदस्त स्ट्रोक 4 रन्स के लिए, और शायद पलक भी नहीं झपकी और बॉल बाउंड्री पार कर गई। यहाँ सर्वर जो है वो हीट फील कर रहे हैं, वो 100 की जो प्रेशर होता है 100 का, तो कोई भी अपने आप को बिल्कुल बॉक डाउन नहीं कर रहे या बैक फुट पे नहीं या फ्रंट फुट पे आके शॉट्स खेल रहे हैं। सिंध के लिए अच्छा साइन है, वो शॉट्स खेल रहे हैं लेकिन वो भी अपने 100 के करीब पहुंच चुके हैं सर्वर। हार्ड हिटिंग, इस दफा फिर इंटेंशंस वही थी लेकिन गैप नहीं निकाल पाए। मेरे ख्याल से कि जिस तरीके से अभी बॉल उठा था स्लिप से, 1-2 स्लिप और ले लेनी चाहिए। इस तरह के स्ट्रोक देखते हुए 92 गए, 306 पे 5। आई थिंक ये एक बेस्ट चांस है सिंध के पास कि नया बॉल लें और नए बॉल से अब अटैक करें, क्योंकि सर्वर जो है वो प्रेशर में अपने 100 के शॉट्स मार रहे हैं, उसमें ज़्यादा चांस मिलेगा, स्लिप्स ज़्यादा होंगी और नया बॉल आपको पता है एज लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। $306 पे 5 और 300 का हिंसा जब टच किया तो 3 पॉइंट्स यहां पर हासिल करने में कामयाब हुई केपी की टीम। रिफतुल्लाह मोहम्मद जो कि इस वक्त हेड कोच की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, क्योंकि अब्दुर्रहमान जो है वो पाकिस्तान जूनियर लीग में है और ये नए बॉल का इशारा हो गया है और मेरे ख्याल से नया बॉल ले लिया गया है फाइनली 92 ओवरों के बाद। और आई थिंक ये अच्छी मूव है जिस तरह सर्वर खेल रहे हैं और दोनों नए हैं, लेकिन स्लिप जो है वो एक ही है और गली भी कोई फील्डर जो है वो ऐड नहीं किया गया स्लिप में। जो इस नए बॉल को प्रॉपर्ली यूज करना होगा। ये बिल्कुल प्रॉपर एरियाज़ में बॉल करें और ये ना देखें बैट्समैन किस तरह खेल रहे हैं, ये देखें कि मैंने कहाँ बॉल करने, ये मेन चीज़ ये है। और उसके बाद ये है कि बैट्समैन अपनी शॉट्स खेले, उसमें आपको चांस मिलेगा कि स्लिप लगे और नया बॉल है, ऑलवेज चांस के जगह पे हो तो ज़्यादा चांसेस हैं।
आगे रखा था बॉल को, हल्की सी मूवमेंट नजर आई। ये बिल्कुल आगे बॉल था और अंदर आया और कामरान ने बड़ा अच्छा मैनेज किया। बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं कामरान। दोनों 90s में, कामरान और सरवर। और सरप्राइज किया और काफी पेन में है। बॉल को अनपैडेड एरिया पे लगा और जिस तरीके से ये रिएक्शन दे रहे हैं, बहुत ये नया बॉल जो है हार्ड हिट होता है। जी हाँ, ये बिल्कुल यकीनी तौर पे बहुत तकलीफ दे होगा। और सरप्राइजिंगली इन्होंने इनर थाई पैड पता नहीं पहना है या नहीं, लेकिन इनर थाई पैड बहुत ज़रूरी है, स्पेशली इस तरह की पिच पे जहाँ पे बॉल सीम भी होता है, स्विंग भी होता है। देखिए बाहर की तरफ निकला बॉल और पूरी तरह डिसीव हो गए, बीट हुआ और पीछे इनर थाई पे लगा। ओफ, और बहुत पेनफुल। जैसे ही बॉल हिट किया उसी लम्हे उन्होंने बल्ला छोड़ा और साइड पे हो गए। मैजिक स्प्रे किसी हद तक आपको रिलीफ देता है। और जो थोड़ा सा इस वक्त रन का जो फ्लो था, वो बाज़ का जब बॉल हिट करता है बैटर को, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चीज़ आती है। गो के इतने ज़्यादा ये फायरी विकेट नहीं है कि बॉल पड़कर स्किट हो और इतना तेज़ आकर लगे। अनलकी रहे यहाँ पर कि बॉल बल्ले के सामने नहीं रहा और उनके जिस्म पे आ लगा। तो अभी काफ़ी बेहतर है। देखिए एक और रिव्यू, सीधा बॉल जो है वो निकला और बल्ले की जो डायरेक्शन थी वो लाइन में नहीं रही। यहाँ इन स्विंग खेलने गए थे और बॉल पड़ के बाहर की तरफ निकला। बहुत पेनफुल होगा, लेकिन वो अच्छा महसूस कर रहे हैं। अब ट्रीटमेंट ली उन्होंने और दोबारा अपने गार्ड पे। यासिर, कभी ओपन करते हुए आपको भी ऐसा बॉल लगा कहीं अनपैडेड एरिया? ये काफ़ी दफ़ा लगा है। ये तो अक्सर यहीं पे लगता है बॉल, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। इनर थाई जो है ये आपकी ये थाई पे होता है, ये इनके ऊपर लगा है जॉइंट पे। ऑफ स्टंप के बहुत बाहर। और अच्छी थिंकिंग मीर हमज़ा की। इनवाइट किया बैट्समैन को ड्राइव खेलने के लिए, लेकिन कामरान गुलाम ने बहुत अच्छा छोड़ा। वेल, अभी भी कहीं ना कहीं जो दर्द के आसार हैं चेहरे पे नमूदार, लेकिन वो अपने 100 के बहुत करीब है। ये दर्द यकीनी तौर पर ख़त्म होगा जब वो 3 फिगर्स को टच करेंगे। और यही वो मेहनत होती है क्रिकेटर की कि जहाँ से वो इज्जत कमाता है। इतनी बड़ी इनिंग खेलना इतने बड़े मार्के में किसी भी एजाज से कम नहीं। सरवर काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। एक आध रैश शॉट उन्होंने लगाया जो हवा में गई। यासिर, जी हाँ, ये जो शॉट था पिछले ओवर्स में और ये सेकंड स्लिप से गई ये बॉल, तो ये जो था इस तरह के चांसेस जो हैं वो ग्रैब करने चाहिए। ये होता है नुकसान आपकी जब आप अपनी फील्ड, आप नेगेटिव माइंडसेट से अपनी फील्ड सेट करते हैं, तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आप मिस करते हैं। 306 पे 5। केपी की टीम ने पहले दिन आगाज़ किया तो बेहतर नहीं था, लेकिन मिडिल ऑर्डर को देखें आप, रन्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अच्छा स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर है। पार्टनरशिप्स भी लगी और वो जो प्रेशर था 5 विकेट गिरने का, उसको सस्टेन भी किया इन दोनों ने। जी हाँ, बड़ी इम्पोर्टेंट और
मैं कहूँगा क्रूशल पार्टनरशिप, तकरीबन 178 रनों की पार्टनरशिप हुई है इन दोनों के बीच में, और ये सिंध के इरादों को बिल्कुल इस पार्टनरशिप ने बहुत ज़्यादा कमज़ोर किया होगा इस मैच में। तेजी से रन मुकम्मल किया और कोई भी चीज इस वक्त छोड़ नहीं रहे। इंटेंशन यही है कि जो भी आए आपके पास उसको ग्रैब करें, वो चौका है, छक्का है, रन्स हैं, किसी तरह से भी। ये बहुत एक दफ़ा फिर बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव रनिंग मैं कहूँगा। थोड़े से फील्डर अगर और क्विक होते और बॉल विकेट्स को हिट करती तो यकीनी तौर पे ये करीबी हो सकता था। ऑफ स्टंप से बाहर। वेल यासिर, नॉर्मली हम देखते हैं कि जो दायरे के फील्डर्स हैं या इनफैक्ट जो करीब खड़े होते हैं फील्डर, वो इस तरह के जब बॉल पिक करते हैं तो अंडर आर्म थ्रो बेहतर रहती है, वजह इसके कि आप टाइम लें, ऊपर उठें, उसके बाद बॉल को रिलीज़ करें। या लेकिन ये तेज़ शॉट था, इस पे अंडर आर्म तो नहीं हो सकती थी, क्योंकि अगर अंडर आर्म पिक करने वो जाते तो उसमें बॉल फंबल भी हो सकता है। अंडर आर्म तो जब टैप करें, स्लो बॉल हो तो उसमें अंडर आर्म का ज़्यादा वो। रन इस वक्त आ रहे हैं, कोई भी सूरत नहीं लगती, क्योंकि एक आध चांस मिलता है जो हमने कुछ देर पहले अभी रीप्ले भी देखा सर्वर का, लेकिन मज़ीद चांसेस क्रिएट करना होंगे। और अगर आप ने चैनल बॉलिंग करनी, अच्छी लाइन पे बॉल करना है, तो यकीनी तौर पर जो बैटर है वो आपको कहीं ना कहीं मौका ज़रूर देता है। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से खेले और एक रन हासिल किया। सरप्राइजिंगली बैट्समैन की पता भी है इंटेंट का सर्वर का, लेकिन कैप्टन जो है वो बिल्कुल आके कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही उस तरह। थोड़ी प्रोएक्टिवनेस हो, बॉल थोड़ा नीचे रहा, छोड़ के किया था ये बॉल ऑफ स्टंप के बाहर, और हसन को जो है वो थोड़ा सा ऑकवर्ड बाउंस मिला। और बड़ी धमक होती है जब सीने पे बॉल, ये हार्ड बॉल इनफैक्ट लगे। और ओवरऑल हसन ने बड़ा ज़बरदस्त कीप किया, और मैं जब भी इनको देखा इवन स्पिनर्स के अगेंस्ट, तो इनका बैलेंस हमेशा टो पे रहा। बड़ी जल्दी क्विकली उठते, विकेट के पीछे अच्छी बॉलों को थामा भी। एज हुआ एक और विकेट कीपर पहुंच ना पाए। जी हाँ, एक और चांस, एक और एज और एक और मिस। आउटसाइड एज हुआ और ये कीपर का ही कैच था। थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया इन्होंने, थोड़ी और फुर्ती दिखाते तो ये कैच इन्होंने पकड़ सकते थे। बिल्कुल जो परफेक्टली फर्स्ट स्लिप की जो पोजीशन है उसका कैच था ये, लेकिन फर्स्ट स्लिप इन्होंने नहीं रखी, बल्कि एक स्लिप से ऑपरेट कर रहे हैं इस वक्त। अभी भी हसन जो है वो खुरम को वही गैप रखा है। मेरे ख्याल से एक दो स्लिप वैसे भी ले लेनी चाहिए अभी नए बॉल पे। एक बार फिर बॉल निकला, और यहां पर किस्मत की देवी मेहरबान है सर्वर पर, और इसके साथ इनका पहला सैकड़ा सीजन का और कैरियर का फर्स्ट क्लास। बहुत ही उम्दा, जहां पर किस्मत भी रही मेहरबान। जी हाँ, सर्वर ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की और उसी गैप में से शॉट खेला जिसमें से पिछला शॉट खेला था उन्होंने, और पहला 100 जो है वो सर्वर ने मुकम्मल किया अपने करियर का। मेरे ख्याल से इनके लिए एक बड़ा खुशाइन मौका है, लेकिन जिस चीज़ से वो डर रहे हैं वही चीज़ हो रही है उनके साथ। कीपर जो है वो, क्योंकि वो लेग स्टंप पे खेले थे तो उनकी जो उन्होंने नेचुरली रिएक्ट किया और लेग स्टंप की तरफ किया, लेकिन अभी भी इनको देखें, इनको एटलीस्ट 3 स्लिपें चाहिए नए बॉल से, एटलीस्ट 2 तो चाहिए, और एक स्लिप से ऑपरेट करें। 100 रन कर लिए सर्वर ने 134 बॉलें खेल के, और 15 चौके 2 छक्के, स्ट्राइक रेट भी अच्छा रहा।
बैटिंग उन्होंने कल बहुत अच्छी की, लेकिन आज जो सुबह आए हैं तो बहुत ज़्यादा 100 के बारे में अपने टेंटेटिव थे, लेकिन फाइनली इन्होंने हासिल कर लिया अपना पहला 100। ये थोड़ा सा, वो कहते हैं कि जब एक बड़ी कहावत है कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो यहाँ पर जो ब्रेवरी है सर्वर ने वो दिखाई, थोड़ा सा चलकर आगे आए उस स्ट्रोक पे जब इन्हें 100 मिले, और वहाँ पर किस्मत भी मेहरबान हुई। ये देखिए, और खुरम अब भी हसन की तरफ देख रहे हैं कि तुम्हारे कहने पे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ। और मेरे ख्याल से कि जब कोई भी बैटर 100 के करीब होता है तो बॉलिंग कैप्टन जो है उसकी कोशिश होती है कि फील्डर्स ऊपर लेकर आए, उस चीज़ को रोके। जी हाँ बिल्कुल। और वहीं से बॉल गया है, मतलब अजीब फनी सी बात है कि वहीं पे बॉल गया है, वहीं पे दोबारा 2 बॉलें 2 जगह कंसेक्टिवली एक ही जगह से गई हैं, तो उनका जो गैप है ये हम शुरू से देख रहे हैं, ये इसमें प्रॉब्लम ही रही है शुरू से ही। इस चीज़ को लोग ठीक नहीं कर सके। हसन जिन्होंने अच्छी कीपिंग की, लेकिन यहाँ पे 2 कैचेस जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ थी जो ये ग्रैब कर सकते थे। जी हाँ, यकीनी तौर पर कहीं ना कहीं प्रेशर कुछ चीज़ ज़रूर होगी, लेकिन इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए आप कि जो गलती मिस्टेक आप कर गए, फ्यूचर को फोकस करना चाहिए। अपिश था लेकिन गैप नहीं निकाल पाए। पर इंटेंशंस यहाँ पर यासिर बड़ी क्लियर है कि जो रन का फ्लो है वो चाहते हैं कि मुसलसल तवातर के साथ आता रहे, जिस अंदाज से ये स्ट्रोक देखा हमने। जी हाँ, देखिए पहले से वो लेग स्टंप पे उन्होंने पहले से प्रीएम्प्ट कर लिया था कि ये लेग स्टंप पे मैं ये शॉट खेलूँगा, और वॉक की उन्होंने, लेकिन बॉल बाहर निकल रहा था तो एज हुआ और 4 रन हासिल किए उन्होंने। और अगर हम फिर देख सकें तो इसमें एक चीज़ कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वो जो कहते हैं कि तूफान आता है उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सेटल डाउन होती हैं। सर्वर का जो फेस है वो भी इसी तरीके से दिख रहा है। अच्छा कंट्रोल शॉट, इसके साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 95 ओवर हुए, केपी 316 पे 5। सर्वर ने जो बारी की इस 3 फिगर्स के लिए, ऑन साइड, उसके साथ साथ फ्रंट पे कवर में, या सिर्फ तमाम तर आला स्ट्रोक्स थे। यह अच्छी इनिंग्स खेली कल सर्वर ने, और कल जो टाइम था बड़ा प्रेशर टाइम था। 5 विकेट्स गिर चुकी थी इन लोगों की, और इन लोगों ने जो पार्टनरशिप इन दोनों ने वो बहुत अच्छी थी। और ये आज सुबह जो इन्होंने 100 जब किया, 3 कैचेस एक ही जगह से, और कीपर की अगर आप देखें जिस पे 100 किए तो वो पहले से उधर वॉक कर रहे थे। उसकी वजह ये थी कि वो पहले से सर्वर ने प्रीएम्प्ट कर लिया था ऑन साइड, तो नेचुरली कीपर की मूवमेंट उसी तरफ बनती है। जी हाँ, एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त बैटिंग। कहीं ना कहीं किस्मत भी उनका साथ देती रही, लेकिन जो एग्रेशन था वो बहुत बेहतरीन था। ओवरऑल अब तक 317 रन की जो टैली है, इसमें जो पार्टनरशिप है 189, 200 के करीब है हिंसा इस दोनों की शराकतदारी का इस टोटल में। उमर को अपनी जो एक्यूरेसी है, अपनी अच्छी लाइन है, उसको जल्द अज जल्द यहाँ पर डिलीवर करना होगा। अदरवाइज ये दोनों बैटर जिस अंदाज से बैटिंग कर रहे हैं, लगता यही है कि अगर
सर्वर भी यहाँ पर कामरान गुलाम भी यहाँ पर अपने 100 मुकम्मल करने में कामयाब होते हैं, तो जो अपलिफ्ट है या जो कॉन्फिडेंस है वो कहाँ से कहाँ बढ़ेगा बैटिंग लाइन का। जी हाँ बिल्कुल। और जिस तरह सिंध ने थोड़ा सा, मैं समझता हूँ कि टैक्टिकली कल बहुत ज़्यादा जाने दिया है इन्होंने बैट्समैनों को, और इस बार विकेट लेने में कामयाब हुए उमर, और फाइनली जो है वो विकेट हासिल की कामरान गुलाम। इस बार अपनी सेंचुरी के करीब पहुंच के आउट हो गए। फाइनली एक ऐसी कामयाबी मिली है सिंध को जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। जी हाँ, बहुत करीब था। अच्छा बॉल, ये देखिए बिल्कुल लाइन में आने की कोशिश की, एज किया, और यहाँ पर इस दफ़ा हसन ने ग्रैब किया बॉल को प्रॉपरली। उम्दा बॉलिंग, बहुत ज़बरदस्त। जिस वक्त दोनों बैटर अच्छी बैटिंग कर रहे हो, विकेट निकालना। कामरान गुलाम 93 बनाए, 202 पे वापस, अच्छी बैटिंग, और इसके साथ 317 पे 6 केपी। साजिद खान 1200 से जायद रन्स, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इनके पास भी एक सैकड़ा है, कैन बैट। और रीसेंट पास में काउंटी क्रिकेट खेल कर पहुंचे पाकिस्तान, तो इस वक्त इनके लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑलरेडी उनके साथ एक सेंचुरी मेकर क्रीज पे है। लो डाउन रहा, लेकिन काफी करीब था ऑफ स्टंप के और बल्ले के भी। जी फाइनली जो है वो सेकंड स्लिप नज़र आई अभी, और इस तरह अनलकी रहे। थोड़ा सा बाहर का बॉल था, उसे चेस कर गए कामरान गुलाम, लेकिन 100 जो थे वो डिज़र्व करते थे जिस तरह इन्होंने बैटिंग की है। अनलकी रहे, अपना 100 नहीं मुकम्मल कर सके। डॉट बॉल ओवर के ओवरऑल अगर हम देखें जिस अंदाज से विकेट मिली, उसके बाद फिर सेलिब्रेशन, जुबिलेशन, तो थोड़ा सा कमबैक करते हुए यहाँ पर उमर और सऊद भी किसी हद तक रिलैक्स होंगे कि जिस अंदाज से उनके बॉलर ने यहाँ पर विकेट ली। क्योंकि सुबह से और इवन हम कल शाम का भी सेशन देखें तो स्ट्रगल किया बॉलर ने, उनके लिए आसान नहीं था वक्त। पिच जो है वो बैटिंग के लिए बहुत साजगार रही। यहाँ पर अब प्रोटेक्शन बढ़ाई है सऊद ने। इसके साथ ओवर का हुआ इख्तिताम, 94 ओवर गए। केपी 317 पे 6। Finally, a breakthrough for Sindh after a mammoth partnership of 189. Kamran Ghulam was dismissed this morning. He's unlucky, couldn't get to his 100. Richly deserved that 100, but his partner has
gone through and got his 3 figures. He's on 101 not out. Important 4 overs before the 100 over mark is reached. Bonus points are still at stake up until we get up to that 100 over mark. Mir Hamza has bowled at a good line of length since morning. Sarwar Afridi been given a couple of chances in the slips. But overall, if you look at his batting performance, I think he's been brilliant. He's been positive, and the way he hits it, hits it with some force. He's a really good prospect for KP cricket. Sarwar Afridi scored a wonderful 100, his first one of his career. Fetching outside. This is what he's been trying to make the batter do. Mir Hamza outside the off stump. That left arm over the wicket angle was always taking the ball away. New ball, early morning. There's still something in the air as well on that fuller length. Not much footwork. He just threw the hands at it. And finally, Sindh have got 2 slips in place. Long off for Mir Hamza with the new ball. What do you make of these tactics from South Shakil? Having just 1 slip early in the morning, couple of chances going through, and now long off in place. Too defensive? Yeah, I've been baffled, really. Yesterday, I think it was a day to forget for Saud as a skipper, and this morning hasn't been any different. Too many fielders. Look at that mid-wicket fielder. I mean, for Hamza, you can understand, but he's had it all day for the right-arm pacer. 2 is the call. No, says Sajid Khan, that's the right decision. Absolutely, I think you made a very good point. Since yesterday morning, we're witnessing that fielder at mid-wicket. And we've hardly seen the ball go to him. And he's been persistent, he's been consistent with that fielder there. Probably thinking about the 4th inning, where he likes chasing. He doesn't want to give too many runs in the first inning. That's what he said in an interview to me. Yeah, if he's thinking like that, I don't think you can think that far ahead in the game. And also, the staggering of the slip cordon, they just try to cover as much space with as few people as they can. And every time the ball's found the edge, it went through the gap. Look at that field now. Beautiful. That is a top-class delivery by Mir Hamza. Yeah, let's have a look. There's a deep point in position. There's deep cover. Long off. There's deep square leg. There's fine leg in place. They're all scattered all over the ground. Only 2 slips. The premier bowler is bowling with the new ball. 3 sweepers on the offside, and now coming into your picture, 3 on the onside. There's a fine leg hidden somewhere by the dugout. Beaten again. That is good bowling by Mir Hamza. I think this is probably the image they have of Sarwar Afridi, that he's gonna go after them and go hard at Mir Hamza. 97 gone, 319 for 6 KP. Sindh needs some rescue. Definitely, they want this innings closed out, because you saw that new ball, the way it was behaving in the last over against a batter who's batting on 100. Sindh will find that out when they come out to bat. And mind it, KP has some fire in their bowling lineup. Ahsanullah, Arshadullah, both of them, tall, fast bowlers. Imran Khan is a different sort of bowler. So yeah, it's going to be a great challenge for Sindh side when facing these 3 fast bowlers. Alongside Sarwar Afridi, we know what he's capable of doing with the new ball. Yeah, we saw what Saad could do here, swing the ball, the new ball. Sarwar is a bit quicker than him.
So probably just pitch the ball up and wobble the ball in the air and a little bit off the seam. This will be a different kettle of fish when KP comes to ball. I can really assure you that. Deep point for number 8, who's just walked in. And the captaincy of Saud Shakil has been disappointing in this game. Although he's done well in the previous 2 games that we have witnessed here in Rawalpindi. They came so close of winning those games but couldn't in the last. But over here in this game he's been too defensive. Yeah, if he thought 278 in the previous round were too many when he put the opposition in, definitely 319 for 6 is a lot more. As we watch another quick single, everybody's on their heels, not reading the plot, and it's just that kind of a game so far for Sindh in the field. I think they're definitely missing the leadership qualities of Sarfraz in this side. Because him there in the side, not just as a wicketkeeper but as a leader, I think it's very useful. He's a very handy wicketkeeper and a leader, Sarfraz Ahmed. And what do you think? Paul Nixon has gone back to his family time, not having him around. Has that made a difference? I think yes, because he's a very shrewd tactician, very vastly experienced. I'm sure he would have had a word or two with Saud with these tactics. And also when you have a field scattered out as it is, with the new ball, with your 2 premier bowlers bowling, the signal you send to the batter is that we're not looking to get you out. And that makes a lot of difference for a batsman's confidence as well. And what does number 8 thinks when he's got a field all set at the boundary line? Look at that now, just the 2 slips and the rest, they're scattered. Beautiful. Mohammad Umar has bowled at a great line and length. We saw a couple of chances gone down on his bowling, right through wicketkeeper and first slip, and this one almost getting that edge. He's probably looked the one bowler since morning who's troubled the batters. Look at, there is movement, there is carry. Sindh has missed a trick here big time. Umar on another day could easily have had a fifer the way he's bowled. And not just today, even in the previous 2 games also. He's bowled beautifully, Mohammad Umar. He bowled with some venom. Got that line and length right. 98 gone, 320 for 6 KP. We are yet to see the guy on the right, Mohammad Asghar, in action. Left arm spinner. What happened to him, Shah Faisal? He showed so much promise when he first came into scene. He almost played for Pakistan and then lost his way. What happened? He's completely lost that zip that he used to have off the wicket. He made his name in the white ball format and then toured with Pakistan Test squad. Fallen off the rails. We see him training day in, day out during the breaks. But last time when I saw him play, he's very inconsistent with his lines and lengths. Does this has to happen to do with the white ball cricket that they focus on? That they eventually forget that red ball bowling? To be fair, wickets in the last couple of years haven't been very conducive to spin. We've covered a lot of first-class cricket. Down the track, in the air, but away from the fielder. They will get a couple of runs. Sajid Afridi. He's gonna go after them. Yeah, he's not going to hold back. Look at that. This is what I was talking about. When you have the spread out field like this, even the number 8 takes the courage to charge down the wicket and attack your premium bowler.
got away with it. Couldn't time it, but the intent is there. I think KP is looking to push on. Probably they will miss out on that extra batting point, bonus point, because they have only 10 deliveries to get up to 350, which is very unlikely. You can put it that way, 18 runs off 9 deliveries now. 22 rather, 28 rather. I thought you were talking about 340. The point is available at 350, but Sindh can get another point if they get 2 wickets in 9 deliveries. Some interest in the remaining. Was it a slow delivery? It didn't reach to the keeper. We haven't seen that a lot here at the Pindi Stadium. Yeah, we have seen a few deliveries kept low. Yeah, over here and in Multan also, there were a few patches. Whenever the ball hits those patches, it keeps low. And this is not the first time that we're seeing here in Rawalpindi. This is your department. Yeah, this pitch is drier than the other 3. Even when we were starting out yesterday, it will get drier, so it may just lose a little pace as we go along. These cracks are more visible in this game, although they won't have any impact maybe till day 4, or if at all. Was there an edge? Was there an edge? There was a huge appeal. No, says Nasir Hussain. The bat hit the turf, that's for sure. That was the noise. Did it get the edge? Man in action once again. Yeah, that ball was quite far away from the bat. Clear gap between the bat and the ball. It was worth a try, the appeal, to test this man, but he stood up firmly. Man with steel nerves. It's 322 for 6. He's a good man. Always has a smile on his face. He makes the right decision most of the time. Yeah, we were talking about the pitch, Shah Faisal, and you were mentioning those cracks, and by the 4th day you were talking about, do we expect some turn on the 4th day because of due to this dryness and those cracks, or it's going to be the same like Rawalpindi that we witnessed from last 2 games? If anything, I expect a little bit more from the rough that may be generated by the left arm pacer from Sindh, Mir Hamza. That may help the off spinner, although Sindh has got 5 left-handers, so that may take that out of the equation as well. Don't see much happening, to be honest. Yeah, there's not much difference between these pitches of Rawalpindi. They're all the same. But it was just amazing that there was a lot of difference between pitches made for National T20. They were much harder. They had bounce. Nice. Where is he running? Run, Diego, run. He wants to be part of the action. He already is. All these 22 men, they rely on his decisions. Quick run. And more. One more. And again. I think I've seen 2 men most of the time in this game, especially Sal Shakil and this man. Director loves him. Two slips and a gully. Nicely done. That is beautiful. Sajid Khan playing like a proper batter through mid-wicket region for a boundary.
just walked across his stumps. Wasn't really a bad delivery. It was probably on the off stump. The way he just walked across, probably middle and off. Good flick of the wrist. Good balance as well. Middled it quite nicely in the air, but away from the fielder. Imagine had he missed it, it would have been dead. But he timed it, and with some force also. Huge shout of no. He can bat. Sajid Khan, he has that habit of getting important runs down the order. Scored some runs against Australia too. He had a little stint with Somerset as well in county cricket. He averaged 27 with the bat. Scored a 53 not out as well in the county championship. So yeah, he can hold the bat. He's handy and he likes to play his strokes. Yeah, he's sort of a cricketer who always involved. If he's bowling, if he's batting, he wants to be the part of the action and not to forget his celebration. That moustachious part. Just love this character. So energetic, always involved. Yeah, to see his celebration quite a few times in this game. Sindh would really have to bat poorly because there's not a lot for him in the wicket. Yeah, the only thing that goes in his advantage is that Sindh has got plenty of left-handers. Nice use of the wrist. 1 run. So yeah, that thing definitely goes in his favour, and that with that completes the 100 overs. KP has scored 330 runs for the loss of 6 wickets. So with the completion of 100 overs, the bonus points won have been 3 to KP and 2 to Sindh. So that will give a lot of confidence to KP side, who have been struggling in this tournament to get those batting points. They just got 4 before this in their 3 games. So definitely this will give them a lot of hope. With Kamran Ghulam getting runs, Sarwar Afridi getting his 100, Saibzada Farhan getting a 50, Rehan Afridi also getting 47 runs. As we see the change in the bowling for the first time this morning. Asif Mahmood, he didn't have a good day yesterday, would like to forget it. Beautiful start. Before the game started, he was really working hard and trying to get the lines right for this pitch. Yesterday, look at that economy rate. He actually bowled 2 spells of 7 overs each, went exactly the same, 34 each in each spell. That means that throughout the day he was inconsistent. Just the one maiden, he won't like that. Yeah, he's been inconsistent with the line and length. Sajid Afridi. Yeah, this is what happened the last delivery, the last over. He was just running right into that danger area, that 5-meter mark. Good umpiring by Khalid Mahmood. They just quickly realized it, went up to him, just told him that you cannot run here. This is not allowed. You got to stay away from that 5-meter area. Good umpiring, good check. Yeah, he's been very good, Khalid Mahmood. This is second game that we're seeing him. He was right on top of the situation and made sure that Sajid got the message loud and clear. Finally, we see him on screen. He's a good umpire, very good umpire. Even in the last game, there were a couple of very close decisions, and he got them spot on. Again, keeping low. This is not the first time. This is what Sajid is realizing. There's this patch, we've spoken about it. Whenever the ball hits that patch, it keeps low. Pitch master, you didn't see this?
It's on the other side. It's kept low. Yeah, this is the second. You're right. We saw the second delivery this morning. That has kept a little low. Probably we'll see more and more of that. Good for the game because the game needs to move forward. The question now after the completion of the 100 overs is that how long KP wants to bat. What is a target in their mind? Because time is very important in this game. Because we've seen teams struggling to close out the game at the back end of the game. So they have to be thinking about it now. And also, KP is at the bottom of the points table. They would want to win out of it rather than a draw. They would like to win this one, the complete game, and get those maximum points. So unlike Central Punjab or Balochistan or Sindh that we have witnessed here, I see attacking declaration from this team. This is what I expect from KP, the type of cricket they play. 101 gone, 330 for 6 KP. A very solid looking batting card now. 50 for Sabzada Farhan yesterday. A brilliant partnership between Kamran Ghulam and Sarwar Afridi. Unlucky Kamran Ghulam didn't get to his 100. Sarwar has slowed down after reaching his 100. But an important knock. And that huge partnership between Sarwar and Kamran Ghulam has put KP in a very strong position. And it's that time of the day again. The Harry Potter, Abrar Ahmed, is into the attack. 32 overs. That's a lot of over in one day. 105 run with 1 wicket. This man Sarwar has played it with some authority. That is brilliant timing. There was a fielder placed, but he had no chance because of the force behind this shot. Sarwar is on a roll. Sarwar and also Kamran Ghulam, they really read him well and played him really nicely. And the key is that they've been looking out to attack. And that's why it didn't allow Abrar to settle. First ball, welcome to the bowling crease. Good cricket. Very good cricket. Good footwork too by Sarwar Afridi. I think this sort of characters we need for the game. In red ball cricket, Sarwar Afridi is definitely one of them. From the very first delivery, he's been very attacking, very positive with his footwork. He's got, and the way he hits it, it's quite forcefully. He's very good with that. Any delivery that is pitched up or pitched short, he really punishes them. Abrar has got a chance with this new ball because it may skid through. It'd be a better option if he was to bowl to Sajid, because Sajid will also attack him. Well scattered outfield, just the short leg catching. A couple of sweepers back there. Wanted to cut this one, but the balance not quite there. The weight not coming really into the shot. Always on the back foot. Well played, Sarwar Afridi. 334 for 6. Yeah, we were talking about what might happen and what should happen in this game. And we were talking about the KP needs to win this one because they are at the bottom of the table. This morning I was speaking to their captain Khalid Tisman, their ex-captain. He's not fit in this game. And I said, I don't like this KP being at the bottom of the table. This is what I said to him. And he said, yeah, we don't like it even. We are very, very much hurt. And you will see a change in this game. We need to win this one, and we will win this one. So that is why I'm hoping that we might see a good declaration from KP side. 330, maybe 50 more runs. Would that be a good declaration?
Nicely pulled. There's no one there to stop that. Another boundary to Sajid. Yeah, too short on that occasion from Asif. There wasn't much heat behind that ball as well. Just ran up and down and put the ball in the slot. Too easy for Sajid Khan. Look at that, how easy pace it is, and just set up. Sajid had all the time in the world to dispatch it. It's not good from Asif. But yeah, talking about that declaration, I think anytime just before lunch, give a little session with the new ball before lunch to Sindh. Because time, like I said, is important. So they can just give them a target, like another 7 overs, 8 overs, see where they end up. And if they get anywhere close to 380, 390, just give a testing little session to Sindh just before lunch. Yeah, they must realize that this Sindh side is a very quality batting side. They might struggle in the bowling department because of the inexperience, but they're a very quality side as far as batting is concerned. So they got to keep that in mind also. They got to have enough time to bowl Sindh twice in this game. They do have enough fire, KP side, in their bowling lineup, but still it's gonna be a good battle between Sindh batters and KP bowlers. So, but you still got to have enough time to bowl them out twice. Absolutely, and if you think the possible scenarios, even if Sindh bats 100 overs and they overhaul your total, you'll still have chance to make some running. But KP is safe. What I'm playing a miss. Just wanting to say is that KP cannot lose this game from here. It is very unlikely unless they rolled over for 100 in the second innings. So if they can't lose it from here, they should make the running and go get that victory. Yeah, for that to happen, they need to score quickly now. Probably they've just gone past the first hour, just losing 1 wicket. That of Kamran Ghulam. And if this man, Sarwar Afridi, is just given the license to thrill, you will see that some quick runs coming. Because he has that potential in him to go big whenever wanted. We have seen that in National T20, that he can hit very, very big hits. He's a very strong lad. When he hits, it stays hit. You can say that about him. Just like that. Good fielding by young Saim Ayub. But you heard the sound, the way it was hit, very forceful. Once again, room on offer. Asif giving too much room. He missed out on the previous one. This one, he really crunched it. Good work from Saim Ayub. He's been very athletic. Saved a certain boundary there. Just a single to finish off the over. 340 for 6. Everyone is gathering around because it's time for drinks.
ये केपी का बैटिंग कार्ड आप देख सकते हैं। 93 रन्स बनाकर आउट हुए कामरान गुलाम, अनलकी रहे लेकिन शानदार सेंचुरी स्कोर की। सरवर आफरीदी ने अभी नॉट आउट हैं 108 पर, और साहिबजादा फरहान ने 53 रन्स की इनिंग्स खेली थी। उनके साथ साथ रेहान आफरीदी ने भी अपना हिस्सा डाला 47। और बॉलिंग में मोहम्मद उमर ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 3 विकेट्स हासिल किए। आज की एक वाहिद विकेट कामरान गुलाम को आउट किया। उनके साथ मीर हमज़ा ने 2 विकेट्स हासिल किए हैं, और साद खान ने भी अबरार अहमद ने भी अपना हिस्सा डाला है, 1 विकेट हासिल की है। अबरार अहमद अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। इस दफ़ा कदमों का इस्तेमाल ज़ोरदार तरीके से इसको खेला है। लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद, 1 रन बनेगा। और मेरे साथ कॉम बॉक्स में हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद। थैंक यू के आसिफ। सरवर अपनी जारहाना बैटिंग को जारी रखे हुए हैं और साजिद भी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। आते ही कुछ पॉजिटिव शॉट्स खेले, यकीनी तौर पे काउंटी से खेल के आए तो काफ़ी कॉन्फिडेंस इनमें नज़र आ रहा है, इनकी बॉडी लैंग्वेज। और अच्छी तरह खेले, कट किया, लेट कट किया, थर्ड मैन की जानिब 2 रन हासिल किए साजिद ने। यासिर, साजिद की बैटिंग एबिलिटीज़ की बात की जाए तो डोमेस्टिक में एक सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं और अच्छी बैटिंग करते हैं। 450 स्कोर की हैं। अब अगर इंटेंशंस की बात की जाए तो केपी ने जिस तरह से आज के दिन का आगाज़ किया, अटैक किया, और सर्वर की जानिब से जिस तरह से अटैकिंग क्रिकेट देखने को मिली, तो इंटेंशंस क्लियर हैं कि अब मैच में वापस आ चुके हैं। इस दफ़ा फिर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन कारगर नहीं रहा और कोई गलती नहीं की इस दफ़ा विकेट कीपर ने। ये विकेट हासिल हुई अबरार को। साजिद जोरदार तरीके से इसको डाउन द ट्रैक जाकर खेलना चाहते थे। जी हाँ, साजिद इस बार बड़ा शॉट खेलना चाहते थे और डिसीव हुए अबरार की बॉल पे। कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन बॉल सीधा रहा, फ्लिपर किया साजिद ने, अबरार ने, और साजिद इस तरह आउट होके पवेलियन की तरफ वापस। 18 रन किए इन्होंने, 343 पे 7। इमरान खान सीनियर, नए आने वाले बैट्समैन। 114 मैचेस खेल चुके, 709 रन हैं इनके और 32 इनके हाईएस्ट हैं। सिंध के पास एक अच्छा चांस है कि यहाँ पे इनिंग्स को रैप अप कर सकते हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे थे इंटेंशंस की, तो केपी डेफिनेटली अच्छा बॉल, एक और करीबी फील्डर हो सकता है अगर लेना चाहे तो। दो स्लिप्स प्लेस की हैं इमरान खान सीनियर के लिए और एक शॉर्ट लेग।
और एक कामयाब ओवर ख़त्म हुआ अब्रार का। 104 ओवर। ये आप इस ओवर में एक विकेट हासिल हुई यासिर। जी हाँ बिल्कुल, और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे साजिद, क्योंकि केपी की जो इंटेंशंस की आप बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली उनका प्लान है कि बड़ा रन्स हो और उसमें 2 दफ़ा आउट किया जाए, क्योंकि बिल्कुल बॉटम पे हैं इस वक्त और उनके लिए मैच जीतना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अब्रार ने अपनी विकेट लेने का जो सिलसिला है उसको जारी रखे हुए, पिछले मैच में भी 11 आउट किए और अभी फिर टेल जो है उनके सामने ओपन है। आसिफ अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। एक्सपेंसिव रहे हैं अब तक, 74 रन्स दिए हैं 16 ओवर्स में, कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सके। इसको फाइन लेग की जानिब खेला और दूसरा रन लेने की कॉल थी। अच्छी फील्डिंग और विकेट कीपर ने इस दफ़ा अच्छा कलेक्ट किया। अर्ली ऑन उमर की गेंदों पे हमने देखा था उमर कुछ एजेस हुए और स्लिप में अनलकी रहे बहुत ज़्यादा। जी हाँ बिल्कुल, और ये यहाँ पे 2 रन्स लेना चाहते थे, क्योंकि स्ट्राइक जो है अपने पास ही रखना चाहेंगे सर्वर, क्योंकि ये लास्ट विकेट्स जो है उसमें वो अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पे खुद ही रहें तो केपी के लिए भी बेहतर होगा। यासिर, जिस तरह वन हैंड कलेक्ट किया उमर ने, ज़्यादा ये देखा जाता है और बड़े जो अच्छे फील्डर्स हैं वो हमेशा दोनों हाथों से बॉल को कलेक्ट करके थ्रो करते हैं। जी हाँ, लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी कि बॉल स्लो था और वो दूसरे रन के लिए भाग रहे थे। इसको सॉफ्ट हैंड से खेला है थर्ड मैन की जानिब और सर्वर इंटरेस्टेड हैं कि एक रन लें और जो है वो हमेशा से वो अपने पास स्ट्राइक रखें। जी हाँ बिल्कुल, सीनियर बैट्समैन है और इस वक्त 110 रन पे खेल रहे हैं सर्वर। डेफिनेटली स्ट्राइक वो अपने पास रखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रन्स यहाँ से ऐड ऑन किए जाएं। ये ऑफ साइड की फील्ड, डीप पॉइंट कवर, 2 स्लिप्स, लेकिन इस दफा इसको खेल दिया मिड विकेट की जानिब और 4 रन यहां पर हासिल किए। शॉर्ट पिच डिलीवरी थी, इसका भरपूर फायदा उठाया और ये 4 रन का इशारा अंपायर नासिर हुसैन की जानिब से। जी हाँ, शॉर्ट बॉल, काफ़ी पीछे बॉल था और बहुत टाइम मिला सर्वर को। मिड विकेट की जानिब खेले 4 रन के लिए, हालांकि मिड ऑन का फील्डर डीप है, लेकिन शॉट में इतनी कुवत थी कि वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। अच्छा शॉट सर्वर का। सर्वर सेंचुरी बनाने के बाद मजीद पुरएतमाद, और जिस तरह से आज के दिन का आगाज़ किया था, चार्ज किया और कोशिश की कि सिंध को प्रेशर में लाएं और हमने यहाँ पर देखा इसके साथ ही 350 रन भी मुकम्मल हो गए और 4 पॉइंट्स अब मिल गए हैं केपी की टीम को। जिस तरह आप बात कर रहे थे कि पॉइंट्स टेबल पर केपी जो है बिल्कुल बॉटम पर है, ये मैच जीतना भी ज़रूरी है, ये पॉइंट्स भी बहुत वैल्यूएबल होंगे। जी हाँ बिल्कुल, जो केपी की जो इंटेंट है और जो प्लानिंग है वो यही नज़र आ रही है कि इस मैच को पूरा जीतने के लिए जाएं और उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि 400 के हिस्से को जो है वो टच किया जाए। यासिर, ये गेंद थोड़ी नीचे रही, लो रही, सो इट मींस कि अब यहाँ पर बॉल जब नीचे रह रहा है तो आगे जाकर स्पिनर्स को मदद मिल सकती है। ये बॉल आगे का बॉल था, उसे पीछे खेले तो डेफिनेटली उसकी हाइट जो है वो इसलिए नीचे लगी कि वो बैक फुट पे जाके खेले, आगे का बॉल था। 3 स्लिप्स के साथ इस वक्त आसिफ बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी गेंद, लकी रहे इस दफा इमरान। ये एक बार फिर बीट हुए और बैक फुट पे रहे। 350 पे 7।
या कामरान गुलाम जिन्होंने अपनी सेंचुरी नहीं स्कोर की और बहुत आला इनिंग खेली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अच्छी बॉल पे आउट हुए। आप ये देख सकते हैं यासिर जिस तरह से प्लान किया है सर्वर, क्योंकि सर्वर की इंटेंशंस बिल्कुल क्लियर हैं, चार्ज कर रहे हैं, डाउन द ट्रैक जाकर शॉट्स खेल रहे हैं। सो अब डीप में आपको फील्डर्स नजर आ रहे हैं ऑन में, ये डीप फाइन लेग, लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट भी है। सर्वर ने इसको सॉफ्ट हैंड से खेला, फाइन लेग की जानिब, दूसरे रंग के लिए इमरान सीनियर, और बहुत अच्छा, बहुत अच्छी कॉल के वापस आ गए, रन आउट हो सकते थे। जी हाँ, 2 रन लेना चाहते थे सर्वर भी और इमरान भी, और इमरान की ज़्यादा लग रही थी ख्वाहिश कि 2 रन हो जाएं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि सर्वर ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्राइक पे रहें। जैसे बात की डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑन, बॉल स्क्वायर लेग की जानिब गई थी। थ्रो अगर अच्छी होती, डायरेक्ट हिट होती तो खतरे में पड़ सकते थे। और एज हुआ, इस दफा लकी रहे, अच्छी कोशिश थी, स्लिप में फील्डर की, अपने दाएं जाने फुल लेंथ डाइव किया, लेकिन लकी रहे इस दफा। जी हाँ, एज लगा, लेकिन वाइड ऑफ द फील्डर, दाएं जानिब गए फवाद आलम के। ये तीसरा बॉल है जो फवाद आलम की कैचिंग थी, लेकिन दाएं जानिब पे था। कल से हमने देखा, कल एक और भी, इससे पहले भी एक शॉट जो लगी थी, और थोड़ा सा वाइड अगर खड़े हों, क्योंकि स्लिप थोड़ी सी वाइड होनी चाहिए जो सेकंड स्लिप होती है, लेकिन अब एक स्लिप निकाल ली उन्होंने। एक चीज़ देखने में आई है कि अबरार जो है वो कम फ्लाइट से बॉल करते हैं, ज़्यादा फ्लिपर और रॉन्ग वन गुगली के ऊपर इन्हिसार करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और उनकी जो वेरिएशन है उसको वो चेंज करते रहते हैं, अपनी फ्लाइट ट्रिजेक्टरीज भी चेंज करते हैं, कभी ऊपर से आई लाइन से ऊपर बॉल करते हैं, कभी ज़्यादातर इनकी जो बॉल है वो फ्लैटर होती है और तेज़ जो आपने कहा, लेकिन फ़्लाइट भी बहुत अच्छी करते हैं, बड़ी जगह पे करते हैं। दो विकेट्स हासिल किए अब तक अबरार ने, एक दफ़ा फिर कदमों का इस्तेमाल किया था सर्वर ने, और अच्छा इस दफ़ा रीड किया अबरार ने। जो इस चीज़ में ये एक्सपर्ट है, जब इन पे हिटिंग हो रही हो, क्योंकि T20 क्रिकेट की वजह से ये इस चीज़ पे एक्सपर्ट हो गए कि यार किस तरह एक बैट्समैन जो अगर चार्ज करना चाहे। इस दफ़ा इसको कट किया है थर्ड मैन की जानिब, और फील्डर बॉल के पीछे ज़रूर हैं, और इस दफ़ा साइम अयूब ने बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया यहाँ पर। साइम अयूब एक ज़बरदस्त बैटर और फील्डिंग में बहुत ज़्यादा जान मारते हैं, कल भी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया था। 352 पर 7, 106 ओवर्स के इख्तिताम पर। मोहम्मद उमर को बॉलिंग के लिए लाया गया मीडिया एंड से, बहुत अच्छी बॉलिंग की इन्होंने। अंपायर्स कोई बात कर रहे हैं,
कंफ्यूजन ये है कि लास्ट डिलीवरी पे कितने रन्स बने। ये सिंगल हुआ है, ये और ये इंतहाई मज़ा का खेज है यासिर। अच्छा, ये एक रन भी नहीं हुआ क्योंकि इन्होंने स्ट्राइक चेंज नहीं की, क्रीज को टच नहीं किया एक रन मुकम्मल करते हुए, तो सारे ही इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। और इमरान खान सीनियर रन लेना भी चाह रहे थे, फिर आखिरी वक्त में अपना फैसला तब्दील किया और सो ये कंफ्यूजन थी कि स्ट्राइक पर कौन होगा। बॉल बाउंड्री लाइन पे गई है और रोप के पास उसने ये तो भाग के 4 भी बना सकते थे, उन्होंने एक भी नहीं बनाया। और इमरान खान सीनियर स्ट्राइक पर हैं। उमर 3 स्लिप्स के साथ अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। जोरदार तरीके से हिट करना चाहते थे इसको। और इमरान खान सीनियर बॉल को ग्राउंड से बाहर फेंकना चाहते थे। हट के शॉट खेलना चाहते थे, बड़ा शॉट 6 रन्स के लिए। जी हाँ, इमरान की इंटेंशंस क्लियर हैं, ज़ोरदार तरीके से हिट्स लगाना चाह रहे हैं और यहाँ पर रन्स हासिल करना चाहते हैं। और इस दफ़ा इसको खेल दिया है और आउट हो गए। इस दफ़ा इसको सॉफ्ट लॉफ्ट किया और इस तरह ये विकेट हासिल कर ली यहाँ पर इमरान की। सॉफ्ट डिसमिसल। ये इमरान खान फाइनली डिपार्ट हुए। क्लिप किया उन्होंने एयर में और शॉर्ट स्क्वायर लेग के फील्डर के हाथ में, शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर के हाथ में। बहुत आसान कैच। अबरार ने कोई गलती नहीं की और इस तरह इमरान खान सीनियर 2 रन्स बनाने के बाद आउट हुए और 352 पर 8। नए आने वाले बैटर अरशदुल्ला बाएं हाथ से बैटिंग करते हैं। जी हाँ, 3 मैचेस खेले, सिर्फ 8 रन और ये इनका पहला सीजन है। लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर हैं और लेफ्ट हैंड से बैट करते हैं। तो यहाँ पे इनकी बैटिंग के जोर दिखाने का मौका है। 8 विकेट्स ले चुकी सिंध की टीम। अगले एक ओवर पिच डिलीवरी थी, लेकिन इसको जिस तरह से खेले बैक फुट पे, जाहिर है ये टेल एंडर जब आते हैं बैटिंग के लिए तो आपको या तो कुछ एक्शन देखने को मिलता है, कुछ सनसनी भी देखने को मिल सकती है, जिस तरह से इमरान ने चाहा था कि वो ज़ोरदार हिट्स लगाएं। दूसरी जानिब सर्वर जो हैं वो इस वक्त, ये आउट होने का मंजर था, अच्छा कैच लिया। अब जबकि 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, जो भी रन्स होंगे बोनस के रन्स होंगे। दूसरी जानिब सर्वर रन्स में कुछ इजाफा कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उनकी कोशिश तो यही होगी कि वो सारी बॉल्स अब खुद खेलें। यहाँ से उनको ये करना पड़ेगा थोड़े से रन्स ऐड ऑन करने के लिए, क्योंकि जो केपी की जो टेल है उसमें कोई बैटिंग स्किल्स इतनी लग नहीं रही।
ये भी हैं अरशदुल्ला और इसके बाद हसानुल्ला, दोनों जो हैं ये जो पेयर जो टेल एंडर्स होते हैं उसी की तरह बैटिंग करते हैं। और इस दफा शॉर्ट पिच डिलीवरी बिल्कुल क्लूलेस रहे, एक अच्छा बाउंसर था। जी हाँ, और उमर जो है वो इस दफा खुद भी उन्होंने सॉरी भी किया कि हौसले से रही है। या पीछे बॉल था और उसको ठीक खेल नहीं सके। डेफिनेटली एज अ बॉलर इनके माइंड में रहेगी चीज़, जब ये बॉलिंग करने आएंगे तो शायद कोई ऐसा मौका है जहाँ पे इनको मौका मिले बाउंसर्स मारने का, तो वहाँ पे ये याद आ सकती है इन्हें। यासर, जब आप बैटिंग करते थे तो कौन सा फास्ट बॉलर आपको तंग करता था अटैक करके? बहुत से बॉलर्स खेला हूँ मैं आसिफ, और डिफरेंट बॉलर्स, यू नो। 352 पे 8। अबरार अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे फार एंड से। और सर्वर जो है वो अब सर्वर का एक ही जो है वो अब उनके जहन में होगा कि मैं बाउंड्रीज लगाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा रन्स यहाँ पर हासिल कर लूं। लेकिन पैक फील्डिंग है, आप देख सकते हैं कवर्स में डीप एक्स्ट्रा कवर। और इस दफ़ा इसको मिड विकेट की जानिब खेलें, लेकिन रन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है सर्वर। जी बिल्कुल, फील्ड टोटली खोल दी है, सारे बाउंड्रीज पे है। डीप पॉइंट, डीप कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। ये ऑन साइड की देखें तो डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप मिड ऑन। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो गैप में फ्लैटर शॉट खेले तेज, और या फिर ग्राउंड से बाहर फेंका जाए। मेरे ख्याल से इब्रार पे चांस लेना इतना आसान नहीं होगा। इन दो बॉलों ने साबित किया है कि बिल्कुल बैक फुट पे जाके उन्होंने इन दो बॉल्स को खेला। ये रॉन्ग वन थी और इसको पिछले कदम पर पुश किया लॉन्ग ऑन की जानिब। मीर हमजा वहां पर मौजूद थे, सऊद शकील। इस वक्त देखना यह है कि सर्वर को कैसे डिसीव करेंगे अबरार और ये विकेट हासिल करेंगे। कट किया इसको और डीप में फील्डर मौजूद हैं, रोकना चाहते थे खुरम मंजूर, लेकिन ये बाउंड्री हासिल हुई। सो कारगर हुई ये कट शॉट और 4 रन यहां पर हासिल किए। ये अच्छा शॉट, तेज शॉट, और अंदर लगा थोड़ा। खुरम मंजूर जो थे वो थोड़े से बाहर खड़े हैं और 4 रन हासिल किए सर्वर ने। ये जब फ्लिपर करते हैं अबरार, ये डिस्कस हम पहले भी कर रहे थे, थोड़ा सा तेज जब होता है तो उसका भरपूर फायदा उठाया इस दफा सर्वर ने। और अब यहां पर 1 रन लेना चाहेंगे कि आखिरी गेंद इस ओवर की, और 1 रन हासिल किया। केपी 357 पर 8। ये आखिरी बॉल था ओवर का, और स्टिल मिड ऑन का फील्डर पीछे था। 357 पे 8।
सर्वर क्रीज पे मौजूद हैं। 357 पे 8 केपी की टीम, और उनकी कोशिश यही होगी 400 तक अगर चला जाए, अगर सर्वर खेलते रहे, यहाँ से 15 से 20 रन और ऐड करें और साथ में खड़े रहें तो शायद। और जोरदार कट, और यहाँ पर 4 रन हासिल किए। बेहतरीन बैटिंग का मुजाहरा, बैकफुट पर इसको पुश किया, और ये वैल्यूएबल रन्स हैं अब यहाँ पर केपी के लिए। जी बिल्कुल, ये तो एक गिफ्ट था मेरे ख्याल से। आउटसाइड द ऑफ स्टंप उनको इनवाइट किया कट शॉट के लिए, और वहाँ पे फील्डर भी मौजूद नहीं था। हालांकि डीप मिड ऑन, डीप मिड विकेट खड़ी है, डीप स्क्वायर लेग है, अगर बाउंस से ट्राई करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डीप कवर्स में फील्डर मौजूद हैं, स्वीपर थर्ड मैन में भी हैं। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं सर्वर इस वक्त। थोड़े से टेंटेटिव नज़र आए सुबह जब 100 के करीब थे, लेकिन उसके बाद अब कंट्रोल से खेल रहे हैं। ये ऑन साइड की फील्ड है, डीप मिड ऑन, डीप मिड विकेट, स्क्वायर लेग, 2 स्लिप्स भी रखी हुई हैं। डीप थर्ड मैन, डीप कवर, सर्कल में इस वक्त 2 स्लिप हैं, और इसके अलावा बाकी तमाम ही फील्डर्स जो हैं वो बाउंड्री पर हैं। सर्वर 125 पर नॉट आउट हैं। जिस तरह आप कह रहे थे कि आज सुबह जब ये खेल का आगाज़ हुआ तो काफ़ी ज़ोरदार तरीके से हिट्स लगाई, और सिंध की टीम को दिफाई अंदाज पर आने पर मजबूर किया। और इस दफा गेंद हवा में जरूर है, लेकिन लकी रहे, और बहुत अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा यहाँ पर फील्डर की जानिब से। यकीनी तौर पर 2 रन बचा लिए। जो टॉप एज हुआ, स्लिप के ऊपर से गया बॉल थर्ड मैन की तरफ। 2 रन हासिल किए सर्वर ने, 2 और रन जो उन्होंने ऐड किए अपने और केपी के स्कोर में। अच्छा एफर्ट साद खान का। और सर्वर आखिरी 2 गेंदों के लिए एक दफा फिर इसको कट किया, और यहां पर फील्डर मौजूद नहीं है। 4 रन मिलेंगे। शानदार बैटिंग का मुजाहरा सर्वर की जानिब से। जी 10 रन आ गए इस ओवर में, और 2 बाउंड्रीज लगाई एक ही जगह पे, एक ही एरिया में सर्वर ने। और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉलिंग हो रही है, और मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा यहाँ पे प्लान जो है वो सिंध का, मतलब बैट बॉल था इस पे। हालांकि सारे फील्डर्स पीछे हैं, लेकिन फिर भी आप ऐसी बॉल पे फील्डर नहीं खड़ा कर सकते। अब आखिरी गेंद है, और सऊद शकील जो हैं वो, सऊद शकील इस वक्त फील्डिंग जो है वो सेट कर रहे हैं आखिरी गेंद के लिए। तमाम ही फील्डर्स को अब सर्कल में ले आए हैं ताकि सिंगल रोक लिया जाए और स्ट्राइक पर अरशद आ सकें। अगले ओवर में आखिरी गेंद है, ये देख सकते हैं तमाम ही फील्डर्स इस वक्त सर्कल में हैं, और इसको ज़ोरदार तरीके से खेले हैं। फाइन लेग की तरफ ये गेंद जा रही है, स्लो आउट फील्ड है, और फील्डर मीर हमजा ने इस बॉल को यहाँ पर कट किया। 1 रन हासिल किया सर्वर ने। तो इस तरह सर्वर ने स्ट्राइक दोबारा संभाल लिया है, और 109 ओवर्स का इख्तिताम हुआ है। 368 फॉर 8।
Server's marathon knock is continuing. He's really farming the strike now. Arshad has only played 4 deliveries in this partnership. 132, and now the interesting question arises that how much does KP think would be enough? Yeah, South looking to keep Server on strike on the final 2 deliveries of the over to get Arshad back on strike. So far, Server has been farming Arshad quite nicely with some help from Saud, I guess. The day hasn't got any better for Sindh. Good afternoon, or still good morning, Ali Yunus. Good morning, my friend. It's been a lovely morning, especially for this man, Sarwar Afridi, still unbeaten on 132. The way he's been hitting is just phenomenal. Very good to see, very pleasing on eyes, the way he hits the ball. Very clean, very forceful, very thoughtful also. See, the way Server is doing this, because KP's tail is quite a long tail, and you know that when Imran Khan walks in to bat at number 9, then you know what's the capabilities of the other 2. 1 delivery to go now, so the slip has come out, just trying to plug the gap, but none of the sweepers have come in, so still plenty of room available for singles. Just that little lap, and Server will keep the strike with ease. 369 for 8. Ali Yunus, I'll put you on the spot. What do you think is a good first inning score that KP are looking at? Well, if it was in my hands, I would declare right now. Right, 20 minutes to go for lunch. I'll just give it a go to our fast bowlers. Get a wicket or 2 maybe before lunch. Put pressure on Sindh. 369 is a good total. Let's see if they can get to that 400 mark and declare. Because we see Ahsanullah is padded up. So we're not seeing that declaration coming anywhere soon. But definitely, KP is in the driving seat in this game, but just to get a result out of it, to give enough time to your bowlers, I would declare right now. Good call. I tend to agree with you. We don't agree on many things, but yeah, I'll have to say with a heavy heart that I agree with you on this. That also would allow the new ball bowlers to have 2 bites at the cherry. Just bowl a quick spell, short spell, and come back and try again after lunch. And you know, if you knock over a couple of batters from Sindh, they also have pretty long tail, so they can put him under a lot of pressure. At the moment, it looks like KP is just content to bat on. As long as Server is there, I think they will take the chance, because he's the one who's a dasher, who's looking to get more positive. Looking to hit big hits now, get those quick runs, get to that 400 mark quickly as possible. Mir Hamza will try to make life difficult for him. It's a relatively new ball, just 10-12 overs old. We've discussed this before. Sindh has clearly lacked leadership. Don't have the head coach in the dugout for this game. Room on offer, just crunched it away. Looking for 2. Good work in the deep, excellent work, and that will keep Server at the non-striker end. Fawad Alam was quick to move across and get a strong return back. Good cricket from him. Yeah, Falum is good. And that long opposition, he must be disappointed. He wanted a 2 out of it. Look at that, he hit it with some force into the gap. Look at Falum. Did this
quite quickly. We couldn't see it here in this action replay, but he did a good job there. So here's an opportunity for Mir Hamza to bowl 4 deliveries to Arshad. It's a good opportunity to get this wicket. In the 4 deliveries that Arshad played, one of them was a bouncer from Umar. Probably short leg wouldn't be a bad idea. To Quaid-e-Azam, he's probably realized that this Sindh side needs some leadership. He's helping out South. 2 slips in a gully, no short leg yet. That's a good sign. Taking the responsibility for Alam. Well, he showed Mir Hamza all his 3 stumps. I think Mir Hamza is good enough to work him over in the remaining 3 deliveries. Looks like a proper old-fashioned tail-hander, Arshadullah. Yeah, doesn't like covering the line at all. Did you take a guard? I didn't see that. And the way his setup and stance was, he was standing outside of his leg stump. So clear sight for Hamza. He blocked the straight one. That's frustrating. How did he do it? We don't know that, but he's managed to bring the bat down. Very unconventional. Reminds me of Hazratullah Zazazai from Afghanistan. Same sort of stance, same sort of footwork. Just got down in time. You've been talking about Quaid-e-Azam. Anytime you bring a topic about stance and setups, definitely Quaid-e-Azam will be topic. Mir Hamza hasn't been able to get through the defenses of Arshadullah. You'll have 2 more chances. A quick Yorker would do. But the pace quite not there for Mir Hamza. He'll have to set him up. Maybe look to bowl a short one and then a fuller one. As we see a change in the fielding, there's a fielder from offside coming on to the leg side, probably getting 2 fielders on that catching position. He's putting that thing in his mind that he's going to bowl those short pitch deliveries. So that's the setup we talk about. Maybe we expect a fuller one, a Yorker now. He's got 1 delivery, so would he go for the short one or for the full Yorker? Full Yorker, Shah Faisal. Okay, let's see. That was a full delivery. The bat came down on time. And it was not a bouncer, so he was able to block it. 370 for 8. Hard luck, Ali Yunus. 370 for 8. .370. This is KP's highest first inning score of this year's Quaid-e-Azam Trophy. The previous highest was 290. On a challenging pitch, they've done well. They had to do it. Right at the bottom of the table in this trophy so far. They were hurt. They were down and out. They had to come up. This is a good opportunity here. Just keep your eyes on Kamran Ghulam, the captain, the standing captain in this game, right on your left of your screen. Yeah, I think they want to just push the scoring along. Looking for 2. Will get there comfortably. Arshadullah is a tall lad. Only a few yards and he gallops across the pitch. Nicely played, right between the 2 fielders. Good running also from Arshadullah.
realizing that he had to come back. The longer this innings goes, it also plays psychologically on the minds of the two openers, because they start thinking about their turn. As we watch, almost got defeated in flight and slipped as well, but still found the middle of the bat. Such form, and watching the ball so good. Yeah, the psychological effect on the openers is immense. This little period that's happening right now, and that could work against them when they come to bat, because they're not as fresh as they would be normally. There's a little something that KP is achieving out of all this exercise at the moment, besides getting some runs here and there. They're just tiring them off mentally and physically. They're all ready though, all in whites. Look at Sajid Khan also. Imran Khan there. So, are we expecting a declaration soon? I hope they do, because there's 15 minutes to go for lunch. Maybe a couple of overs before that. If they do at the end of this over, probably they'll still have time for 2 overs. Ahsanullah is still padded up though. Well, I don't think then, because he wasn't in a changing room. Probably he's in the dugout. Everyone around Arshad. What can Abra do? How can he just sneak through his defenses? Slip gully, leg slip, short leg. Goes past the outside edge. They're appealing. Did the drag was on the back foot. Umpire Nasir Hussain, he's been razor sharp. Rules in favor of the batter. 373 for 8. What is he saying? Kamran Ghulam? That's what he's talking to the batter. Don't get out, get maximum runs till lunch. We're playing till lunch. Is that the message coming through quite loud? Yeah, really, like you said earlier, KP could have done with the declaration, but probably want to get as close to that 300. Just keep the 400 rather. Keep that option open for a follow-on. Even if Sindh get up to around 250, they would still be forced to follow on. Anything closer to 400, that will give that option to Sindh and KP. That's some positive thinking about follow on right now at the moment. Call for 2? No. It's not happening. Wasn't there. Fallon is right there at extra cover. Yeah, I remember Sindh lost 8 wickets for 120 odd in the previous game, and they were almost on the brink of follow on when they were only chasing 278 on the first innings. So Server initially thought he can sneak for a couple. Look how quickly off the blocks was Arshadullah. He covers the distance quickly. That's Saim Ayub. Just a while ago, he's shadow practicing his batting. This is what we were talking about. He's already thinking about his innings. Look at that. Doing his setup, little things. That is mental fatigue. When you keep thinking about it and you don't know when KP is going to give you a chance to come into bat. I'm sure he's not learning a thing or two from Arshadullah. Not advised. Please don't say that ever again. Super talented he is. Yeah. So yes, it will be a big responsibility for somebody like this man, this boy on your screen, Saim Ayub, facing Arshadullah, Ahsanullah. It will be a huge learning for him. He did a superb job in National T20 against KP. This is a different ball game. You're tired, you're fatigued, as you said, and that's on your left, Khurram Manzoor, his partner.
They'll have a job to do early on against that quality bowling of KP. Not an easy job opening the batting. Goes through the gap. Went for that big booming drive that just sneaked back in just a little bit and missed everything. Excellent delivery from Mir Hamza. Just a touch in swing, touch, just a little. That was enough to beat him, not quite enough to get that off stump off. Good spell by Mir Hamza. He's into his 25th over, just 47 runs, couple of wickets to his name. Senior pro. Well, any lip reading, Ali Yunus? Probably he's saying you can show confidence in me in a couple of deliveries. I'm not that bad. I've survived for what, 9 deliveries now. You can show some trust. Give me a couple of deliveries every over. Or maybe he's getting the permission that if you allow me, I can go big. I can go big hits too. Let's see if he does. That bat looks like a toothpick in his hand. He's so tall. Look at that. Saud is taking his time. It's been a slow session in terms of over rate. Just the 23 overs after this one delivery is bowled. Now the 9 minutes to go just before the lunch break. Thinking, trying to see how they can dislodge this number 10 with only one delivery left in this over. Would this be a bouncer this time, Ali? No. Another Yorker. I'm going for that again. Cross seam? Yes, maybe. Because if you look at the grip, he's holding the ball cross seam. So maybe yes. Did he try to flick it? Just swung the bat as he ducked the ball. Strange way to leave the ball. Yeah, it was the short pitch delivery. But just the one chance. Everybody's enjoyed that. Look at the way he left the ball. Look at the bat. He just tried to get the bat as close to the ball as he possibly could have. Yes, something that the tail-enders do bring out. A lot of laughter, a lot of enjoyment with their batting. 374 for 8. Talking about the tail-enders, who do you think had the weirdest of the stance or the action? Other than Courtney Walsh, I think to me he was the funniest while batting. Aqib Javed was right up there. Danny Morrison? Danny Morrison, yeah, he didn't put bat to ball often. He collected quite a few ducks along the way in his career. Phil Tufnell? The man just dismissed in this session, Imran Khan, not far off. Goes for that big slog sweep. Couldn't find the middle of the bat. He's really looking to take on that fielder. He's looking to hit it for 6. Just didn't get the elevation. But he's showing his intentions. Like I said, just a few minutes before lunch. Now, has he got enough? Has he got enough? Just! Umar bin Yusuf was lurking along, and for a moment he was in the game, but it just landed over his head. Sarwar Afridi has clearly showed his intentions. Yeah, just would be enough. Look at that flighted pitch top. Anything in his zone, just cleared his left leg and gave it all he had. Although he got that elevation, it was in the air for a long time. But just quite enough to go over the boundary line. That was a tremendous hit from Sarwar Afridi. Look at that. Look at the power he possesses. Wonderful hitting. This boy is talented. Umar bin Yusuf was in the game for a little while, a good effort. But the ball was always travelling away from him.
Another landmark. Sarwar Afridi is approaching 150. He's not letting up. Just one big blow can take him there. See if he will try in this over. Just a single, allowing Arshad to face 2 deliveries. He'll have one more over to go after this delivery to complete his milestone. As you were mentioning, 150 is nearing that. That is a fantastic inning, I tell you. Under pressure, and the last couple of quick wickets. In fact, 3 wickets, 111, 111 and 128. Three quick wickets fell. And then after that, that partnership with Kamran Ghulam was just fantastic. It definitely put KP on a commanding position in this game. Would it be a googly or a leg spinner? Didn't do much of the wicket, and safely negotiated by Arshadullah, allowing Sarwar Afridi to continue with his assault. 381 for 8. Inside edge onto the pads, little bit of in swing. You would still say that it'll be a fair comment that there is some movement still for the bowlers. Yeah, that's Sajid Shah. Played for Habib Bank. 557 wickets at first class level. Tremendous swing bowler he was of his time. He's now into this coaching setup of KP. Especially coaches that under 19 boys. There you can see Yasir Hamid is never short of words. But Sajid Shah, what a fantastic bowler he was of his time. 557 wickets. It's an excellent record. Yeah, unfortunate for him. He was playing cricket in the era where Pakistan was blessed with so many good fast bowlers. Come to the national team, anywhere close to the national team, would have been a big ask in that era. Like so, the great 2Ws. We had Shoaib Akhtar, Muhammad Zayed, Muhammad Akram, Shahid Nazir. Aqib was still around. Play enemies. Quite a few bowlers that didn't even get a mention. They were playing in domestic cricket. Could never come close to that national side. Sajid was one of them. I miss Kabir Khan. Fazl Akbar also did play for Pakistan in South Africa. Yeah, such was the competition in those times. Late 90s, early 2000. That was just fantastic time for Pakistan fast bowling. Still is. It seems like the times have returned now with the fast bowling, especially in that department, because we've got plenty of quality bowlers now. Call is for 2. Fawad Alam, brilliant. The senior pro really throwing himself around. Saved a couple of runs for his team. Fawad Alam doing his best. He wasn't happy with Chal Shakil. He probably dived in front of him. There was something going on between two of them. All is well. That ends well though. He saved a couple of runs. Such a trier he is. Fawad Alam. I call him Falam though. Why did you call him Fawad Alam? He's Falam. 5th delivery. It's been all too easy. Saud's captaincy has left a lot to be desired in this game. You can understand Sarfraz is not behind the stumps. He was a born leader.
even if he's not a nominated captain. He's a born leader. They're missing Paul Nixon in the changing room as well. Seen some really exasperating expressions from Khurram Manzoor and Fawad Alam at times during this innings. And Mir Hamza, the senior fast bowler. Huge learning for young South. Yeah, the champions of national T20 Sindh side. They're all gathered around these two. So this will probably be the last delivery before lunch. What is it gonna be? It's your turn to answer now. Bouncer. Nothing. And an easy leave for Arshadullah. Umpire Nasir Hussain, the professor, calls time on the morning session. And that session has once again belonged to KP. Since plans and executions were not up to the mark, and they're well behind the 8th ball in this game. Sarwar Afridi, take a bow. He's played beautifully. 3 wickets though. But bowling with the second new ball and at the tail, not good enough result for Sindh. Sindh side, they won't be a happy side at the moment. They dropped a couple of chances this morning. Things could have changed after that. That was Sarwar Afridi's chances, both of them going between the wicketkeeper and first slip. If they had taken that chances, things would have been different, but still they've taken 3 wickets. But those runs, 93 runs they've given away at 3.72 run rate. And this man on your screen, Sarwar Afridi, has played a wonderful knock. 148, still unbeaten. His first century at this level. They'll have a bit of work to do when they come out after lunch. At the moment, Rifatullah Mohammad having a word with Sarwar Afridi, encouraging him for the inning that he has played. Dominated by Sarwar Afridi, that batting card. 148 of just 203 deliveries. A very decent strike rate. He's been quick to pounce on anything loose, and he's been aggressive in his intent. That grand partnership with Kamran Ghulam has really given KP the upper hand. 384 in 115 overs. Plenty of action as always in the opening session of the day. New ball was expected to be taken. It was taken, but not before this happened, as Sarwar really rode his luck at times. There you go. There's 3 through that cordon, but couldn't take that smile off his face because he was delighted with the 100. Richly deserved. Kamran Ghulam couldn't get to the milestone. Gone for 93. Sajid lasted a little while. Kept Sarwar for company. Frustrated the Sindh bowlers. Before he decided to give charge to Abrar and was second best on that occasion. Sarwar and Imran. At this moment, Sarwar was doing all the scoring. Imran didn't last very long, which was expected. Abrar's bad deliveries weren't spared. And Umar, who had a very, very good spell, unlucky, finally came for some treatment from Sarwar. Like I was saying, Abrar under attack from Sarwar throughout his innings. Unbeaten once again at the end of the session. 148 for this man. Yeah, tough work for Sindh bowling unit. Pick of the bowlers, definitely Mohammad Umar, 26 overs, taken 4 wickets. Deserves a fifer, not for the first time in this tournament. 2 for Mir Hamza, 2 for Abrar Ahmed. The rest, it's been a struggle. 384 is what KP has managed at lunch day 2. So we're going to take a short break here. We'll see you in about 30 minutes time.
अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं आपको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में, जहां पर क्वाइद-ए-आज़म ट्रॉफी चौथा मरहला दूसरा दिन खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के दरमियान है मुकाबला। और आधा दिन आज का भी गुजर चुका। 384 का इस वक्त तक का मजमुआ है। कुल 8 विकेटों के नुकसान पे 148 रन की हाईलाइट इनिंग है सरवर आफरीदी की, और 93 रन की इनिंग थी कामरान गुलाम की, जो कि हाईलाइट थी। इस वक्त केपी की टीम यकीनी तौर पर इस कोशिश में होगी कि जल्द अज जल्द ज़्यादा से ज़्यादा रन बटोर सकें, कम विकेटें गिराकर। और जो पिछला सेशन हुआ उसमें 3 विकेट हासिल किए सिंध की टीम ने। ये पहला विकेट था जो कामरान का था 93 पे, वो वापस हुए, कदम इस्तेमाल किए साथ जितने, लेकिन प्रोडक्टिव ना हो सके। उसके बाद चिप इन किया और सीधा हाथों में कैच अबरार के। इमरान खान सीनियर थे उस वक्त, जो कि तीसरी विकेट हासिल की थी आज के सुबह के सेशन में। 4 विकेट मिले मोहम्मद उमर को, कंसिस्टेंट, उसके साथ साथ लाइन और लेंथ अच्छी थी। 26 ओवर की अमीर हमजा ने, उन्हें 2 विकेट मिले और 2 विकेट हासिल किए 39 ओवर में 130 रन देकर अबरार अहमद ने। सरवर आफरीदी बड़ी ज़बरदस्त, जारिहाना और इंटरटेनिंग इनिंग खेलते हुए 148 पे हैं, एक लैंडमार्क के करीब। और क्या ये बात है, यासिर हमीद हैं इस वक्त मेरे साथ, कि एक प्लेयर जो कि अपने सीज़न का पहला जब उन्होंने सेंचुरी बनाई उसके बाद 150 की तरफ गामजन, और अबरार अहमद यकीनी तौर पर इस कोशिश में होंगे कि 150 से अंदर अंदर उन्हें आउट कर सकें। और मेरे साथ इस वक्त हैं यासिर हमीद इन कॉम बॉक्स। चार्ज किया पहली बॉल पे लंच के बाद हवा में, लेकिन ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड कवर किया और ख़ुद को गिरने से भी बचाया, बॉल को भी गिरने से बचाया, और इस तरह से सर्वर वापस हुए। जी ज़बरदस्त कैच। सर्वर ने पहला बॉल जो है वो उसको चार्ज करना चाहा और थोड़ा सा विजुअल आउट हो गए थे, लेकिन क्या कैच लिया, ज़बरदस्त कैच। रिप्ले में देखेंगे, देखिए मिड विकेट पे खेलना चाहते थे और मिड ऑफ के फील्डर ने बहुत ग्राउंड कवर किया और बहुत अच्छा कैच, रनिंग कैच था। और सर्वर की एक इंतहाई अच्छी इनिंग्स, प्रोडक्टिव इनिंग्स, बिग इनिंग्स, 148 रन बना के उसका इख्तिताम हुआ और बहुत आला इनिंग खेली। अबरार ने अपनी इनिंग्स की तीसरी विकेट हासिल की और इस तरह से 384 पे 8। नए आने वाले बैट्समैन एहसान उल्ला। करते हैं यासिर, लंच के बाद ब्रेक मिला, एहसानुल्लाह आए हैं, चौथा मैच। और अब प्रोसीडिंग्स देखते हैं कितनी जल्दी रैप अप करेगी सिंध की टीम। बोल्ड कर दिया गुगली और इसका कोई रिप्लाई नहीं था, खड़े खड़े इस बॉल को खेलने गए। जी पहली 2 बॉलों में इनिंग का इख्तिताम कर दिया अबरार ने सिंध की तरफ से, और सिंध के लिए साई ऑफ रिलीफ। टेल एंडर्स के लिए बहुत ही अच्छे बॉलर हैं अबरार। पहला बॉल जो एहसानुल्लाह ने फेस किया, 2 लंच में इन्होंने बहुत प्रैक्टिस की थी, लेकिन पहला बॉल रोकने गए थे, बहुत अच्छा बॉल गुगली हुई और गैप बना। तो इस तरह अबरार ने अपनी 4 विकेट्स हासिल की इस इनिंग्स में। ये देखिए बॉल बहुत अच्छी गुगली, स्लो थी, नॉर्मली जिस पेस से करते हैं उस पेस से नहीं थी, थोड़ी स्लो थी, लेकिन बहुत ही आला बॉल। तो इस तरह एहसानुल्लाह कोई रन बनाए बगैर पवेलियन वापस। केपी की पूरी टीम 384 रन बना के आउट हुई। लंबा दिन था कल सिंध के लिए, आज लंच तक काफ़ी एफर्ट किया उन्होंने और इस तरह बिल आखिर उन्होंने कामयाबी हासिल की।
जी हाँ, खाने के वक्फे के बाद जैसे ही खेल शुरू हुआ, विकेटें समेटी 2 और वापस किया केपी की टीम को। आपको बताते चले आगाज़ बेहतर नहीं था केपी की टीम का सिंध के खिलाफ, लेकिन रिहान आफरीदी, साहिबजादा फरहान, कामरान गुलाम, इन्होंने रन स्कोर किए, सस्टेन किया प्रेशर को और सबसे बड़ी इनिंग 148 रन की सरवर आफरीदी की रही 204 बॉलों में और कुल मजमुआ 384 केपी बना पाई। बॉलिंग कार्ड मीर हमजा 26 ओवर में 51 रन दिए, 2 विकेट्स हासिल किए। मोहम्मद उमर ने 26 ओवर में 87 रन देके 4 विकेट हासिल किए। आसिम महमूद कोई विकेट हासिल नहीं कर सके, 17 ओवर्स के 81 रन देके। इब्रार अहमद 40वां ओवर कर रहे थे, 130 रन दिए और 4 विकेट हासिल किए। साद खान, साइम अयूब और फवाद आलम विकेटलेस रहे। यहाँ पर हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, कुछ ही देर में आपके पास वापस आएंगे लाइव एक्शन के साथ।
वेलकम बैक पिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी, जहां पर डे 2 है इस क़ायद-ए-आज़म ट्रॉफी के चौथे राउंड का। खैबर पख्तूनख्वा वर्सेस सिंध, और जो पहली इनिंग है वो आपसे कुछ देर पहले रैप अप हुई और 148 रन की सबसे बड़ी इनिंग रही सरवर आफरीदी की, जिन्होंने बड़ा ज़बरदस्त डिस्प्ले किया। किस्मत भी उन पे मेहरबान रही, लेकिन ओवरऑल अगर हम बाकी देखें 93 रन की सेकंड हाईएस्ट इनिंग कामरान गुलाम की अच्छी कप्तानी वाली इनिंग खेली उन्होंने, अनलकी रहे, और 384 रन टोटल मजमुआ है पहली इनिंग का। केपी की विकेट्स इस तरह घिरी। पहली विकेट वकार एक्सपेंसिव शॉट खेली, दूसरी वॉकिंग शॉट खेली इशफाक ने, फिर ये तीसरी, ये यहाँ से बहुत बड़ी कामयाबी अब्रार को मिली रेहान आफरीदी की सूरत में, और ये सबसे बड़ी विकेट इस केपी की टीम की, फरहान साहबजादा फरहान, और उसके बाद बैक टू बैक विकेट्स ली। उमर ने नबी गुल को आउट किया, और ये आज के दिन की बड़ी विकेट कामरान गुलाम जो कि 93 रन पे आउट हुए, और ये साजिद जो स्टंप हुए इब्रार की बॉल पे, ये इमरान सीनियर शॉर्ट मिड विकेट पे कैच आउट हुए, और ये आखिरी विकेट जो थी, आखिरी तो नहीं थी लेकिन सर्वर आउट हुए ये 148 रन बना के, ये लास्ट विकेट एहसानुल्लाह इस तरह आउट हुए। तो इस तरह केपी की टीम 384 रन बना के ऑल आउट। बॉलिंग कार्ड वंस अगेन मीर हमजा जो है 26 ओवर में 51 रन देके 2 आउट किए। मोहम्मद उमर ने 26 ओवर में 87 रन देके 4 आउट किए। आसिम महमूद ने कोई विकेट हासिल नहीं की, 17 ओवर में 81 रन दिए। इब्रार अहमद 40वें ओवर में उन्होंने 4 विकेटें हासिल की, और साद खान ने कोई विकेट हासिल नहीं की। साइम अयूब और फवाद आलम विकेटलेस। वेल, अब इंतज़ार है सिंध की बारी का कि वो कैसा आगाज़ करेंगे। सिचुएशन इस वक्त बहुत आसान है बैटिंग के लिए, हमने देखा जो सरफेस है वो बैटिंग के लिए बहुत साजगार आसान हो चुका। नया बॉल इंपॉर्टेंट होगा कि कितना अच्छा यूटिलाइज़ करेंगे, क्योंकि साइम और खुरम मंजूर दोनों इस वक्त आ चुके हैं क्रीज पे, और दोनों की जो आई कांटेक्ट कह लें या शॉट सिलेक्शन कह लें वो बहुत बेहतरीन है। वो ये खुरम मंजूर एक अच्छे तजर्बाकार बैटर, 191 ओवर 11,000 रन्स, मैसिव, बहुत तजर्बा, और इनसे अच्छी तवक्कुआत वाबस्ता होंगी सिंध की टीम को कि आज एक अच्छा आगाज़ देंगे। और उनके साथ यंगस्टर साइम अयूब, बेहतरीन बैटर, डबल नेल्सन्स उनका कुल मजमूआ अभी 250, और इनका कैलिबर ऐसा है कि ये भी 100+ रन कर सकते हैं। और दूसरी जानिब यासर इमरान खान सीनियर मौजूद है, जिनके पास भी बहुत तजर्बा है, 382 विकेट्स। जी 114 मैचेस में 382 विकेट्स लिए हैं, 20 दफ़ा इन्होंने 5 विकेट्स हासिल की, और बड़े ही कामयाब और तजर्बाकार बॉलर हैं। स्पॉट ऑन होते हैं अपने नई बॉल से, लेकिन इस बार डाउन द लेग। यासिर इमरान खान सीनियर का जो पहला बॉल है क्योंकि ऑफ टारगेट था, लेकिन जो उनकी फील्ड प्लेसमेंट है उन्होंने कप्तान के साथ मशवरा करके यकीनी तौर पर ले रखी है। 3 स्लिप है, 1 गली है, बैकफुट पॉइंट है, कवर पे फील्ड है, मिड ऑफ पे, तो उन्होंने ऑफ साइड को काफ़ी अच्छा। जी बिल्कुल, 3 स्लिप 1 गली, कवर पे कैचिंग पे उन्होंने लिया हुआ फील्डर, और नया बॉल बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इस चीज़ को जानते हुए उन्होंने ये फील्ड रखी, और ऑब्वियसली नए बॉल के लिए स्लिप्स होती हैं। अच्छी जगह पे बॉल किया, बाहर निकला थोड़ा सा, खुरम मंजूर अच्छा खेले। जी, और स्ट्रेट अवे बहुत सारी आवाज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं तमाम फील्डर से, तमाम के तमाम इस वक्त चर्पिंग में हैं, एक दूसरे से गपशप लगाते हुए, एक दूसरे को बैक करते हुए, और ये बहुत प्लस पॉइंट होता है कि जब फील्डर्स आपस में घुल मिल कर एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हों, क्योंकि सेशंस लंबे हैं और जान डलती है इससे, बॉलर का दिल भी बड़ा होता है। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इन 3 स्लिप कॉर्डन्स को इंतज़ार में रहना होगा हर वक्त तैयार, कि इमरान खान सीनियर के पास ये एबिलिटी है कि बॉल को ऑफ स्टंप पे बड़ा अनसर्टेनिटी के पास रखकर बाहर निकालें। जी आगे घिरा हुआ बॉल से अच्छा ड्राइव किया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। जी बिल्कुल,
वो लेंथ फाइंड करना चाहेंगे इमरान खान सीनियर इस पिच पे, जितना जल्दी उस लेंथ को हासिल करेंगे, क्योंकि स्विंग तो इनके पास है। अभी हमने सारे बॉल देखे, थोड़े से आगे पिच किए इन्होंने, थोड़ा सा वो जो लेंथ है, जो एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे बॉल अगर पिच करेंगे तो बॉल बाहर निकलेगा, तो उससे कोई रिजल्ट शायद क्रिएट हो। पैड पे ये बॉल था, कलाइयों का इस्तेमाल, बहुत खूबसूरत डीप मिड विकेट की जानिब, लंबा ताक़ुब है फील्डर का, लेकिन बॉल की रफ्तार आहिस्ता हुई, रन्स बने यहाँ पर, ऑफ द मार्क हुए। खुर्रम मंजूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है या सिर्फ ऑफ द मार्क होना अर्लियर ऑन। या अच्छा शॉट ऑफ द टोज खुर्रम मंजूर का, अच्छी तरह मिडल किया उसे, गो बाउंड्री नहीं मिली उन्हें, लेकिन अच्छे भाग के 3 रन्स लिए। तो इस तरह खुर्रम ऑफ द मार्क हुए। बिल्कुल डेफिनेटली बड़ा प्रेशर रिलीज होता है, अच्छा फील होता है जब आप पहले रन्स लेते हो इस तरह के शॉट पे। साइम अयूब जिन्होंने, इनका काफ़ी चर्चा चल रहा है और बड़े इम्प्रेसिव इन्होंने बैटिंग की पहले 3 मैचेस में सिंध के लिए, और अपने स्ट्रोक प्ले के लिए बड़े जाने जाते हैं। एग्जैक्टली लेकिन उनकी बैटल है इस वक्त एक तजर्बाकार बॉलर के खिलाफ, और यही वो महारत है जो यहाँ पर साइम को दिखानी होगी कि इमरान खान और उनके साथ जो सीनियर बॉलर्स हैं उनको किस तरीके से खेलते हैं। पहला बॉल जो उन्होंने खेला अच्छा मिडल किया, और बिल्कुल बल्ले के दरमियान ये बॉल आया। आपने बिल्कुल सही कहा, अच्छे स्ट्रोक मेकर हैं, अपनी इनिंग को बिल्ड करना जानते हैं, और इनके पास ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है यहाँ पर कि अपनी वो तमाम तर स्किल्स जो उनके पास एज अ बैटर हैं उनका लोहा मनवाएं। ये अच्छे प्लीजिंग शॉट्स हैं इनके पास, और बड़ा अच्छी ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेलते हैं, बुक शॉट्स खेलते हैं, और उनकी शॉट में जान भी है। बाहर बॉल, बेहतर है कि इसको छोड़ा जाए, और वही किया यहाँ पर साइम ने। और ये वो तमाम तरह एबिलिटीज़ हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि पहला ओवर इस वक्त हुआ ख़त्म 3 रन बगैर किसी नुकसान के। जी अरशदुल्ला पवेलियन एंड से बॉल करेंगे, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं, 3 मैचेस में सिर्फ 2 विकेट्स हासिल की। अभी आगाज़ किया इन्होंने अपने करियर का, और अच्छे टॉल हैं, देखना होगा कैसी बॉलिंग करते हैं। ऑफ स्टंप के बाहर, ऑन टारगेट, और सबसे और जैसे यहाँ से आपने बात की कि काफ़ी टॉल बॉलर है, और वो जो लंबा कद है वो काफ़ी अच्छा यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी पेस बॉलिंग में। यॉर्क लैंड करवाना चाहते थे, बॉल प्रॉपर्ली पिच इन नहीं हुआ, और काफ़ी तेज़ी से स्लिप की जाने पड़ा। यहाँ फुल टॉस बॉल था, एज हुआ, पूरी अच्छी तरह टाइम नहीं कर सके खुर्रम मंजूर। एक इजी बॉल था जिसको वो आराम से गैप में खेल सकते थे, टाइम कर सकते थे, लेकिन थोड़ा जोर से खेलने गए खुर्रम। अच्छी फील्डिंग स्लिप में। अच्छा बॉल, उतना ही अच्छा खेला क्योंकि इसमें टाइमिंग इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन यकीनी तौर पर बड़े राइट वक्त में अपना जो बल्ला है
उसको लेकर आए और उन्होंने कहा कि बॉल मूव हुआ। जहाँ थोड़ा सा अंदर आया बॉल, और इन स्विंग मेरे ख्याल से इनकी नेचुरल जो है स्विंग है, और वो लेफ्ट हैंडर को बाहर की तरफ निकलेगी। अभी तक तीनों बॉल इन्होंने आगे पिच किए। अच्छी थिंकिंग है, लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे अगर लेंथ को फाइंड करें, लेंथ बेहतर करें, तो बैट्समैन को ट्रबल में ला सकते हैं। एक्सीलेंट, ज़बरदस्त, बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड साइम अयूब का। साइम इससे पहले भी पिंडी में मैच खेल चुके और अब तक बड़ी अच्छी बैटिंग की, और जिस तरीके से इसरार की बात कर रहे थे यासिर। जी हाँ, इनका रन अप, स्ट्रेट रन, टारगेट पे अपनी नज़र है इनकी, और रिलीज भी अच्छा है, अच्छा एक्शन है, गुड एक्शन। इस वक्त अच्छा मिडल कर रहे हैं, तमाम बॉलें जो अब तक खेली साइम ने, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस मिलता है बैटर को जिस वक्त वो रन्स कर रहा हो। उसके साथ साथ जैसे अरशद ने अब तक 5 बॉलें करवाई हैं, और ज़बरदस्त जो केपी है ओवर द ईयर, जैसे हम बात कर रहे थे कि बिल्कुल बॉटम पे पेट्रोल करिए, तो अच्छा एडिशन है अरशदुल्ला का। जी हाँ, एहसानुल्लाह एक और इनके बड़े प्रॉमिसिंग यंग टैलेंट है, जिनको एज हुआ और गैप में गया 4 रन्स। इस बार चेस करने गए थे और लकी रहे कि बॉल जो है वो गैप में गई और 4 रन्स हासिल किए साइम अयूब ने। ओवर का इख्तिताम हुआ 8 पे, कोई विकेट नहीं। ये देखिए थोड़ा सा एयर में था, अगर गली होती तो उसके हाथ में जा सकता था बॉल, लेकिन गली मौजूद नहीं, चौथी स्लिप ली हुई है, तो लकी रहे साइम इधर। वाल इमरान इस वक्त टारगेट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं पैड के एरिया में बॉल फेंकें, और इससे पहले भी जब इन्होंने 1-2 बॉलें की तो थोड़ा सा इनको स्विंग मिला था बॉल पे। जी बिल्कुल, इस वक्त केपी के बॉलर्स की यही कोशिश है कि बॉल को जितना आगे रखा जाए और पूरा आगे अटैक करें। कोई भी बॉल हमने बैक ऑफ लेंथ या पीछे नहीं देखा, सारे बॉल आगे किए हैं, और इसमें एक चांस भी हमने देखा कि एक बॉल जो है वो स्लिप और गली से गई। तो एक अच्छा ये माइंड सेट होता है बॉलर का कि जब नया बॉल हो और थोड़ी सी सपोर्टिंग पिच हो तो बॉल को आगे रखा जाए। अच्छा लीड किया इमरान खान का, काफ़ी लंबा रनअप है, और जिस तरीके से वो भागते हुए आते हैं यकीनी तौर पर अब तक का जो उनका ये ओवर है, दूसरा ओवर, तो काफ़ी अच्छी जानदार बॉलिंग, तमाम तर तजर्बा, और कप्तान की यकीनी तौर पर, क्योंकि अगर नेशनल T20 में एहसान ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। यासिर अभी आप जिक्र कर रहे थे एहसानुल्लाह का। जी बिल्कुल, अपनी पेस और बाउंस से इन्होंने इम्प्रेस किया, और फर्स्ट क्लास की जो है टीम में इन्होंने जगह पाई, और अब केपी की टीम इनको खिला रही है परसिस्टेंटली। इनके पास पेस है और ये वो चीज़ कर सकते हैं, वो जो फैक्टर होता है पेस वाला, वो एक ऐड ऑन कर सकते हैं। उनके कोच से भी जब बात हो रही थी तो वो भी इनको थोड़ा सा अच्छा रेट कर रहे थे इस चीज़ में कि इनके पास वो पेस है, कट है बॉल में। फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली कर रहे हैं कामरान गुलाम, मिड विकेट के फील्डर को एडजस्ट किया है।
नो की कॉल है। खुरम के लिए सिर्फ 2 स्लिप है। हमने देखा जब लेफ्ट हैंडर साइम खेल रहे थे तो स्लिप का एक जाल बिछा हुआ था, लेकिन खुरम जिस वक्त आते हैं स्ट्राइक पे उनके लिए सिर्फ 2 स्लिप रखी हैं। अच्छा, बिल्कुल एक फील्डर जो है वो मिड विकेट पे लिए हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं इस वक्त सिंध की जो टीम है, क्योंकि लॉन्ग इन्होंने सेशन किया अंदर, 1.5 दिन फील्डिंग की है और बॉलर्स काफ़ी रिलीफ फील करते हैं। अब्रार एक बार फिर 4 आउट किए उन्होंने पहले मैच में, इससे पिछले मैच में 11 आउट किए थे और 4 इस इनिंग में। अच्छा सीज़न जा रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर था, अच्छी फील्डिंग, बहुत जबरदस्त। ये बॉल ट्रैवल कर रहा था और एक्सीलेंट। ये अच्छी फील्डिंग नबी गुल की, कट शॉट था और उनके लेफ्ट साइड पे थी ये बॉल, बाएं जानिब घिर के बॉल रोका नबी गुल ने। इस तरह की जो फील्डिंग एफर्ट होती है वो बॉलिंग साइड को लिफ्ट करती है। लेकिन आपको देखना होगा कि खुरम ने काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया था, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल था, इससे पहले उन्होंने बॉल छोड़े, लेकिन इस दफ़ा वो गए थे इस बॉल के पीछे। इस दफ़ा फिर अंदर को बॉल लेकर आए, तेजी से रन हासिल करने गए, डायरेक्टेड। तेजी से ये रन मुकम्मल किया खुरम ने। थ्रो बहुत अच्छी थी लेकिन खुरम जो थे वो अपनी क्रीज में पहुंच चुके थे। अच्छी कमिटमेंट एहसान उल्लाह की तरफ से। वेल अंपायर नासिर हुसैन भी एकदम अपने मार्क से हटे, ये जज करने के लिए कि अगर रन आउट होते तो कितना क्लोज होता। ओ इनसाइड एज, लेकिन इमरान खान का ओवर हुआ यहाँ पर इख्तिताम पजीर। 3 ओवर गए, सिंध 10 बगैर किसी नुकसान के। वेल कप्तान को बहुत ज़्यादा एडवाइसेस मिल रही हैं इस वक्त, और जिस अंदाज से उनके ओपनर्स बैटिंग करें इन द सेंटर, यकीनी तौर पर ये दोनों मेन फ्रेम जो पर्सनालिटीज़ हैं ये मुतमईन होंगी, क्योंकि अब तक जो भी साइम की अगर हम बात करें या खुरम की, जो भी बॉल उन्होंने खेला सिर्फ एक बॉल के, जो कि साइम के बल्ले से एज हुआ था गली से, उसके अलावा बेहतर बैटिंग कर रहे हैं, बॉल को अच्छा मिडल कर रहे हैं। इवन जो बॉल पैड पे आई या ऑफ स्टंप के बाहर छोड़ने वाली थी, उनको मेरिट पे खेल रहा है। एक्सीलेंट बैटिंग सर्वर की, जारहाना इनिंग कह सकते हैं आप, फर्स्ट क्लास क्रिकेट की तर्ज पे, कि उन्होंने इतना वक्त भी ज़ाया नहीं किया, रन्स भी हासिल किए, उनका जो एवरेज था वो बेहतरीन रहा, और वो तमाम तर जो प्रेशर बॉलिंग ने उनकी बैटिंग पे डाल रखा था उसको वापस धकेलने में कामयाब हुए। बिल यासिर, अभी हमने देखा इसरार को, अरशद को, इनके दराज का के बॉलर हैं ये, और मुझे वेस्ट इंडीज़ का ईरा याद आता है जिस वक्त लंबे लंबे बॉलर थे, पटकते थे बॉल को क्रीज के ऊपर। ये दोनों टॉल बॉलर्स हैं, और जिस तरह अभी हमने देखा अरशदुल्ला जो पहले 2 बॉल के थोड़े से बाहर निकाले और दोनों को लीव किया, और एक बार फिर एंगल के साथ बाहर निकला बॉल अरशदुल्ला का, लेकिन बहुत ही अच्छी आला लाइन और लेंथ, और बहुत ही अच्छा छोड़ा खुरम मंजूर ने, वेल लेफ्ट।
जी हाँ, यहाँ पर हमें स्पिन भी देखने को मिलेगा और किस अंदाज से साजिद ऑपरेट करेंगे। गो के भी वक्त है उसमें, क्योंकि जैसे अबरार ने विकेट हासिल की है, यकीनी तौर पर इनको भी अपनी बॉलिंग से उम्मीद होगी। लेकिन उससे पहले अभी पेसर्स का काम बाकी है कि इस नई बॉल को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करें, ब्रेक थ्रू हासिल करें। लेकिन विकेट आसान है यासिर, यहाँ पर इतना आसान नहीं है अर्लियर ऑन विकेट हासिल करना या ब्रेक थ्रू हासिल करना। जी बिल्कुल, जिस तरह खेल रहे हैं और अपनी शॉट्स को रोक रहे हैं, बाहर का बॉल छोड़ रहे हैं। खुरम को हमने पिछले मैच में भी देखा, साइम अपनी शॉट्स पे जाते हैं, लेकिन खुरम जो है वो अपने आप को होल्ड कर रहे हैं इस सीज़न में, ज़्यादा शॉट्स की तरफ नहीं जा रहे। तो दोनों का मेरे ख्याल से डिफरेंट रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि साइम जो है वो शॉट्स खेल रहे हैं, हो सकता है वो कोई 1-2 बाउंड्रीज भी लें और एक गली का इजाफा किया है। बहुत उम्दा, एक्सीलेंट बॉलिंग। इससे पहले भी हमने देखा थोड़ा सा फ्लैशी थे ऑफ स्टंप के बाहर साइम अयूब, जिसकी वजह से एक गली का इजाफा हुआ और बहुत उम्दा। बहुत ही अच्छा बॉल लाइन पे पड़ा और लेंथ भी अच्छी थी, थोड़ा बाहर की तरफ निकला और बैट्समैन को बीट किया। लकी रहे साइम। और कप्तानी बेहतर है कि इन्होंने ऑफ साइड पे जो स्लिप कॉर्डन गली है उसको पैक करके रखा है किसी भी स्टार्स के स्ट्रोक के लिए, कि किसी वक्त एज निकले तो कोई भी चीज निकले ना हाथ से। एक और अच्छा बॉल, एक्सीलेंट बॉलिंग और बहुत ही अच्छे बॉल के साथ ओवर का इख्तिताम हुआ। 15 पे कोई नहीं। Two straight from Imran. The fine leg fielder is quite wide, very well placed. I don't think you can expect the bowler of Imran Khan's caliber to be straying outside of leg stump. That will allow the ball to go fine. Slightly straighter middle and leg. That angle has been protected very nicely. Good start for Sindh. It's a good battle expected between the bowlers of KP and Sindh's batting lineup. Khurram Manzoor is a very experienced campaigner, and young Saim is in good touch. And looking in good nick is K. Asif alongside me in the comm box. Good afternoon. Good afternoon, ladies and gentlemen. Rightly said, the way Saim started his first-class career, it's been phenomenal. Looks energetic, confident, cool and calm. And one thing I appreciate that he's pretty much active in fielding as well. I like his stance, I like his head position. I was just observing him. Really nice prospect. Every game presents him with a different challenge. And this time it's against the firepower of Khyber Pakhtunkhwa fast bowlers. His driving has been a treat. He succumbed to that loose drive in the first innings against Southern Punjab here, but then he corrected his mistake and was very compact in the second innings. Was very unfortunate not to get to that 100. Was dismissed for 95. Umpire Nasir Hussain is once again involved.
What is happening here? Well, still a chat going on between the captain and umpire. Watching his wristwatch, of course. What's happening there? Skipper Kamran Ghulam, both the umpires are having a word with him. Not quite sure really. There's a few smiles at the end of all that, so shouldn't be that serious. Any word? Where is Russell, the floor manager? Did we miss anything? Now Sarwar Afridi is in the middle of all that. Plenty of smiles, so all is well that ends well, I guess. Yes, after a long debate, conversation between captain and among the players. Now the umpire has given the ball to Imran. And both of the batters, they're also participating in this conversation. Well, that ball hasn't traveled a lot, so it hasn't hit anything. Just normally that would concern the umpires. The shape of the ball or any scratches on it. If it hits the concrete when it hits outside the boundary, because there's no signboards here, so no advertising hoardings. Gorgeous. This is magnificent stroke. Just leant into it. Lazy elegance. This is superb from Saim Ayub. It's straight to watch. Lovely straight drive. An over-pitch delivery. Look at that head position and then execution. Wow, brilliant stuff from Saim Ayub. The new ball will travel fairly quickly. Just so pleasing on the eye when he drives down the ground. Imran, change of angle. Bringing the ball back in. Saim knew exactly where his off stump is. Good leave. That's exactly how Ahmed Bashir got him out in the first innings, luring him into that drive outside the off stump. And Saim, who used to go for that big booming drive, has really compacted himself, just tightened his technique. We saw that in the second innings, where multiple times he was lured into that drive, but he didn't give any gap to the bowler, just played so close to the body. So he's learning. That's also another good trait to have as a youngster. Go fetch that. This is once again a stunning cover drive with an offer all right, but he went after it. Second boundary of the over. Well, again, look at this cover drive now. Once again, nicely struck by Saim Ayub. Lovely to watch. Ending up this over with this boundary. $25 for none. The left arm over the wicket, Arshidullah. Got onto it nicely. Khurram Manzoor once again with an offer. Got on top of it nicely. Khurram Manzoor earns himself a boundary. Runs from both the sides, boundaries from both of the batters. This time Khurram Manzoor with offered and a nice cut shot. Runs are coming for Sindh.
It's a good positive start from Sindh. Khurram Manzoor will put any bad ball away. He's prepared to wait for those. Very, very experienced. Good foil for the youngster at the other end. Arshidullah is a tall, lanky fellow and very well built as well. Broad shoulders. Releases the ball from quite a height. KP is known to produce fast bowlers, one after the other. He's also a very good addition to that pace battery. Getting picked ahead of Arshad Iqbal and Irfanullah Shah. Nice use of the race, just angled face, and it will run away. This outfield is very, very quick. For Manzoor, good hands. Yes, it's a typical subcontinent wrist work, I must say. Nicely done by Khurram Manzoor. Another boundary. Look at that shot. Nicely mid-link. Mid-link properly. Angled face, but he really covered the line nicely, so there was no risk involved in that. Boundaries are flowing. 2 in the previous over and 2 now in this over. Slightly tighter line now on that occasion from Arshad. I was saying good addition to the battery of KP bowlers. Arshad got quite a smooth run up, quite tall as well. Steady head. Good pumping of the arms. Keep an eye on that front arm. Uses good height, but once again can do a little bit more with that front arm. Thick inside half of the bat. It will run away. Nice work there. Couple of runs for Khurram Manzoor. Yes, Khurram Manzoor, plenty of experience. And supported by Sam Ayub, a youngster. Again, plays towards square leg area, just for a couple. KP is attacking, so there's plenty of gaps there. It's again that inside edge of the bat. Not much swing there, Asif, just that left armer's angle. We haven't seen any prodigious swing with this new ball. 36 for none. Well, as you were discussing, Faisal, that KP producing plenty of fast bowlers in the past. Kabir Khan, same the left-arm fast bowler, Junaid Khan. Both of them, they were really good swingers. Manzoor is rotating strike nicely, putting the bad balls away. Yeah, you mentioned 2 very, very good fast bowlers from KP. Kabir Khan was probably the first one who broke the ice and made it to the national team. After Zakir Khan, there was quite a big gap. But left arm quicks, yeah, Kabir was, you can say, unfortunate. He played in the era where the one and only Wasim Akram was around, so he didn't get many opportunities. But still, to get to Pakistan team, he must have done well, and he was a very, very skillful bowler. And more recently, Junaid Khan still involved. We saw him in the national T20. Another very skillful bowler. And yeah, both of them, they could swing the ball, the new ball, and they could hit the seam as well and seam the ball as well. So they were
very skillful with their art. And one cannot never forget that Junaid Khan, the series he had in India in 2012, ODI series that Pakistan played and won there. Probably the last time that a Pakistan team played a bilateral series in India. They won it 2-1, and Junaid Khan was at his very best in that series. Great fast bowlers coming out from that region, and now it's just an unstoppable juggernaut of fast bowlers coming out from KP. Yes, it's amazing to watch that the way KP produced fast bowlers for Pakistan. And you're reminding me a very good series. Mohammad Hafiz was the captain, and we had fantastic win. And Imran now bowling with 2 slips and a gully. Here's another one, Ahsanullah, who really made headlines in that National T20 Cup here in Pindi and Multan with his pace and bounce. Definitely looking forward to seeing him bowl on this pitch. Imran inviting that booming drive, but Syme's discipline has improved, like I said, throughout this first-class season. He's maturing into a good opener, the red ball opener. But here we're talking about the pace battery, and Ahsanullah, definitely look forward to see him. Probably he'll bowl that back of a length and see if this second day pitch he can generate some bounce. So far these 2 quicks have been looking to push the ball up to the batters to get that swing. Well, that's right, and Imran is coming now round the wicket. Well, a treat to watch this boy play. He is a real treat, especially driving down the ground. He is quite pleasant. And any left-hander, when they drive, they look more pleasant than the right-handers for some odd reason. Look at that, just front foot down. That bend on the front knee and the high front elbow as well. Just a check drive, not the extension. And Kamran Ghulam skippering the side, doing pretty well. Well, dot delivery in the end of the over, just 1 run. 7 gone, 37 for none. Plenty of batting to come for Sindh. Umar bin Yusuf fresh from a magnificent 100 in the second innings of the last round. Saud Shakil, another elegant left-hander. Hasn't scored much here at the Pindi Cricket Stadium, but got a big 100 under his belt this season. Fawad Alam, the resilient, the nuggety, and then free-flowing stroke play of Saad Khan. Plenty to look forward to on a Sunday afternoon here at the Pindi Cricket Stadium. It's a gorgeous day, Asif, and you see the sun is just blazing down on this gorgeous outfield. It's just about perfect conditions for cricket, and this contest is riveting. Yes, it's a sunny day and lovely weather for cricket. Look at these settings. Wow. Gorgeous. Yeah, this blazing midday sun is just relentlessly shining on this gorgeous outfield. Playing a miss. That angle, the left armer's angle, it just keep going away from Khurram Manzoor. He's looking to reach out for it. Lucky he didn't get a touch. Yes, this time playing away from the body, very away, and remained lucky. It was a very good delivery. It also shows that Sindh's intent is to just go for the bowling and make sure they remain in the game. Last week we remember that
They were behind in the game after that first innings. Especially their batting was blown away by the likes of Abbas and Ahmed Bashir. They had 8 wickets down for 120 odd, which meant that they were always chasing the game. And despite them chasing a bigger first innings target in this match, they're really going after the bowling, being positive, which is good to see. Once again getting on top of it nicely. That sweeper has been pushed back, Sajid Khan, so just a single. Yes, this is the intention, Claire's, but look, it's pretty much, it's too early that you are pushing down your fielders towards boundary, putting on the sweeper. This is the Sajid Khan and the D point. This is fine leg now, actually, after the single. Now he's gone finer. So it's a regulation fine leg. Actually, he was quite square. Bakar moving swiftly, preventing Saim. Yep, what we expected from KP was a little bit of more heat on the deliveries. Imran, we know that he doesn't rely on pace, but Arshadullah, so far he's content to just push the ball across and push the ball into that good areas. We haven't seen any real short pitch deliveries just yet. They were a bad idea to push the opener onto the back foot by letting him know earlier on. But what can you do with your short pitch deliveries? See the way he's coming onto that front foot. This won't be a bad idea to just slip in a bouncer. Won't happen in this over because it's done and dusted. We'll see what happens when Imran comes back. He's 38 for now. Wide of the crease, Imran just looking to change his angle on the crease. He'll do that from time to time. If I talk about Khurram Manzoor, that's plenty of experience already, playing for a long time, since 2002, and played plenty of domestic cricket. Played for 16 test matches as well. Represented Pakistan, averaging 28 in test cricket. It's again lost his shape a little bit, looking to push that ball down the ground. Not happy with his stroke. Just a little bit early. Have a close look. That little forward press. Just the head falling over too far outside the line of the ball. And I think this is the reason that he's not coming up properly and is not able to execute his shots.
This one he watched it better, all the way on to the bat. Batting is also about rhythm, Asif. Sometimes it's inexplicable how it works, but as a batter, you know when you're in good rhythm, everything works for you, your movements, everything becomes in sync, and it looks just so simple. But on other days, you just don't seem to middle the ball, don't time it. And you practice hard, you prepare the same way, but it can happen, and that's rhythm. Both these batters are in a different planet right now. The way Saim is batting in pure rhythm, and Khurram Manzoor is battling hard. It's rightly said, and I must ask about, I was talking about his span of test cricket, that the way he came. Played nicely this time towards short mid-wicket and fielded well. His span for the test cricket was short. It didn't make an impact there, actually. We'll come back and talk about it more. Is 38 for none. As you're talking about Khurram Manzoor's span with the Pakistan team, opening is a very, very tough job, especially at international level. And you don't have to do a lot wrong to lose your spot, as it may seem. Sindh, so far in this year's Quaid-e-Azam Trophy Championship, as far as their batting performances are concerned, 1624 runs. Runs per wicket, 37. And the run rate is pretty decent as well. As a matter of fact, all the teams. Wow. Simply stunning from Saim Ayub. Look at the balance and the poise to hit that ball in that area with a straight bat. This is incredible from the youngster. And this time targeting onside. It's turning on drive towards mid-wicket. Look at that shot. Simply gorgeous. Look at that. That ball was onto his pads and he ended up hitting it with straight bat. He didn't break his wrist. Incredible. We've seen him do that before though, so in the air, falling just short of the fielder. It wasn't a full-blooded pull shot, it was just a short arm jab. Almost carried to that fielder. It was quick delivery. Didn't go for the full shot. It was, oh, remained lucky. Remained lucky. Just short from the fielder. Waqar for a moment must have thought that was coming straight to him. Got himself a little bit cramped for room as well. We were discussing this in the last over, Asif, that may not be a bad idea to just go short at him for a while. Just test him with a few short pitch deliveries, the real bouncers. With this ball now, almost 10 overs old. Pitch is quite dry, sun is baking down. I'm sure that it's not long before KP will try that. Yes, Arshad is coming up with two slips, gully, extra cover and mid-off, short mid-wicket and mid-on. Then there's a fielder in deep fine leg. Saim Ayub, not just his attacking play but also his defense is in good order.
If you see that replay, the last delivery, that ball did seem a little bit. Now we just see his driving today. That was exquisite. Another gorgeous. This is just simply regal. Probably the best of the lot. What a sight to see this youngster bat. Impressing us all every day. And we'll get to see plenty of him, because since most games here at the Pindi Stadium will be live streamed, so you can see that as well at your homes, on the digital platforms of Pakistan Cricket Board, the YouTube channel. You can see this live stream, and plenty of exciting batting from this young man. Yes, Saim Ayub is in good touch, looks confident, playing really nicely. So, his shot selection is perfect so far. Compact. 10 gone, 44 for none. वल इस वक्त खुरा मंजूर साइम अयूब बारी कर रहे हैं, 44 पे पहुंची है ओवरऑल एफर्ट बगैर किसी नुकसान के। सिंध की टीम उमर बिन यूसुफ, सऊद शकील, फवाद आलम, साद खान, अच्छी बैटिंग लाइन है, आगाज़ बेहतर है और दोनों ने बड़ा अच्छा आगाज़ किया इस इनिंग का। जब स्ट्रोक लगाए थोड़ा सा फ्लैशी थे उस वक्त जब ये बॉल निकला, उसके अलावा अब तक अच्छी शॉट्स खेली ऑल अलोंग द ग्राउंड, वैराइटीज़ ऑफ स्ट्रोक्स जो थे इन 44 रन पे हमें देखने को मिले। चौके भी, उसके साथ अच्छे सिंगल्स, गैप निकालने में कामयाब हुए और
साइड पे बेहतरीन एक्सीलेंट शॉट्स। मेरे साथ हैं इस वक्त अली यूनुस कॉम बॉक्स में और एहसानुल्लाह आ चुके हैं इस वक्त बॉलिंग के लिए। जहाँ इनका इंतज़ार था हमें कि कब एहसानुल्लाह को हम एक्शन में देखेंगे। फर्स्ट चेंज पे बॉलिंग करना है इमरान खान की जगह। 4 मैचेस में 6 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। बेहतरीन बॉलिंग, 3 विकेट्स 45 रन देके। एक्साइटिंग टैलेंट है ये भी। ये अच्छा मुकाबला होगा साइम और एहसानुल्लाह का। बहुत करीब बॉल आया लेकिन नो बॉल हुई और मूवमेंट जरूर मिली अली यहाँ पर एहसान को। बहुत इंप्रेस किया था एहसानुल्लाह ने नेशनल T20 कप में अपनी पेस और अपने बाउंस से। अब देखना होगा क्या इस पिच पे उसी तरीके से बाउंस हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत टीम्स को तो हमने देखा इन्होंने डरा के आउट किया जिस तरीके से ये शॉर्ट पिच डिलीवरीज करते हैं। लेकिन वो कतरे बाउंसी पिचेस थी, बेहतर पिचेस थी। यहाँ पे थोड़ा एफर्ट डालना होगा इनको। अच्छा बॉल पढ़कर उठ रहा है इनका एहसान। एग्रेशन और ये पेसर की निशानी है। अली ये बर्थडे मंथ भी है, 20 साल मुकम्मल किए एहसान ने 11 अक्टूबर को। और जो एग्रेशन है वो भी हमें इस बॉल में देखने को मिला। यह बहुत अच्छा स्मूथ रनअप है। फोर्स जनरेट करते हैं अपने रनअप से भी। अच्छा जंप, अच्छा स्मूथ एक्शन, रिस्ट मारते हैं। कोशिश करते हैं कि सीम को हिट किया जाए उस रिस्ट से। शानदार प्रोस्पेक्ट है। ऑफ स्टंप से बाहर था, 2 की कॉल है। दूसरे के लिए भी पलटेंगे और 2 रन का इजाफा। बहुत ज़बरदस्त इस वक्त बॉलिंग, बैटिंग, स्ट्रोक मेकिंग है। ये अच्छा कॉम्बिनेशन है खुरम का और साइम अयूब का। दोनों में फ्लेयर है, दोनों को रन्स बनाने आते हैं और रन्स की तरफ जाते हैं। क्वालिटी है, पॉजिटिव इंटेंट है। रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी शानदार है। अच्छा मुकाबला कर रहे हैं केपी का। 337 रन्स की ट्रेल है और ये ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत अहम होने वाली है। अगर ये एहसानुल्लाह का जो पहला स्पेल है इसको गुजार जाते हैं तो काफ़ी मैच में वापसी हो जाएगी इनकी। और हमने देखा खुर्रम ने इवन जब पिछला बैकफुट पे पंच लगाया तो थोड़ा सा उनके पाँव हवा में थे, जो कि इस बात की इंडिकेशन है कि एहसान जो बॉल है उसको पटक रहे हैं, उनको अच्छी हाइट मिल रही है सरफेस से। जी हाँ, एक तो वो खुद लंबे कद के हैं, उसके बाद हाई आर्म एक्शन है, ऊपर से बॉल को पटकते हैं। इस वजह से थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस बाकी बॉलर से निस्बत ज़्यादा मिलता है। दूसरी जानब जिस तरीके से अरशदुल्ला बॉलिंग कर रहे थे वो भी काफ़ी तेज़ हैं, लेकिन उनका एक्शन थोड़ा डिफरेंट है। और जो जिस भी पिच पे थोड़ी एक्स्ट्रा पेस होगी वहाँ पे बहुत कारआमद होने वाले हैं। बहुत ज़बरदस्त, एक बार फिर 2 की कॉल है, लेकिन बॉल की रफ्तार बिल्कुल बाउंड्री के करीब पहुंचकर आहिस्ता ज़रूर हुई, लेकिन इसी असना में बैटर्स के रन्स और बहुत ही पॉजिटिव क्रिकेट। आगाज़ बहुत बेहतरीन सिंध का। जी हाँ, रन रेट अगर देखें तो 4 से ऊपर की रन रेट पे ये बैटिंग कर रहे हैं दोनों। तो थोड़ा आगे गिरा हुआ बॉल था। ये लेंथ आसान है निगोशिएट करना। जो आगे पड़ा हुआ बॉल है उस पर रन्स आते हैं क्योंकि आसानी से बैटर खेल सकता है, विकेट्स के दोनों जानिब खेल सकता है, क्योंकि सीम और स्विंग उस तरीके से हो नहीं रहा है। लेंथ ढूंढना बहुत ज़रूरी है, जो सही लेंथ है इस पिच की। रन्स नहीं रुक पा रहे। ऑफ साइड पे, ऑन साइड पे, जहाँ पे भी स्ट्रोक मेकिंग है वहाँ से प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी मिल रही है इस वक्त इन दोनों बैटर्स को। 50 रन की शराकत मुकम्मल हुई। अच्छा आगाज़ बगैर कोई विकेट गंवाए। ये इंपॉर्टेंट इनिंग है साइम अयूब की जानिब से। फ्लेयर, स्टाइल, टेम्परामेंट सब कुछ हमने देख लिया। अब रन्स देखना बाकी है इस लेवल पे, बड़े रन्स देखना। 92 रन्स की इनिंग खेली थी, लेकिन उससे आगे जाना होगा। बड़े रन्स करने होंगे, बड़े 100 करने होंगे, तभी आप पाकिस्तान के कंटेंडर बनेंगे। 90, 70, 60 इस तरह के रन्स उतने करामद होंगे नहीं। जब आप बड़े रन्स करते हैं, 150 करें, 200 करें, तब आप ज़्यादा हाईलाइट होते हैं एज ए टैलेंट।
डॉट बॉल। ओवर का हुआ इख्तिताम, 11 ओवर हुए, सिंध 50 बगैर किसी नुकसान के। उमर बिन यूसुफ इस वक्त यकीनी तौर पर अच्छे टिप्स ले रहे होंगे और ये बेहतर है कि आप अपने कैरियर के इस लम्हे पे बेहतरीन लोगों से मिलें, अच्छे कोचेज़ आपके पास हों। टैलेंटेड प्लेयर की ये निशानी है कि वो उन तमाम तर टिप्स को, एडवाइसेस को जो वो बैक करता है। जी हाँ, टूल्स तो मौजूद हैं सारे क्रिकेटर्स के लिए। जिस तरीके से हमने देखा सेंट्रल पंजाब पॉल फ्रैंको लेके आए, सिंध की साइड में पॉल निक्सन आए हैं, इन फिशर अभी आपने देखा स्ट्रेंथिंग एंड कंडीशनिंग कोच हैं। इससे ज़्यादा और पीसीबी प्रोवाइड कर नहीं सकता टूल्स। आगे अब प्लेयर की अपनी हिम्मत है, किस तरीके से कितना सीखते हैं, कितना अडॉप्ट करते हैं, कितना एब्जॉर्ब करते हैं। ये जो कॉन्वर्सेशन है इससे क्या सीखते हैं, ये प्लेयर की एक इंडिविजुअल लर्निंग भी होती है। एक्सीलेंट ड्राइव कवर्स की जानिब से, ताक़ुब ज़रूर है फील्डर का, लेकिन दूर हैं वो इस बॉल से। 4 रन्स कवर करने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन बॉल जो है वो इस दफ़ा फतहगर हुई। जहाँ बहुत दूर से भाग के आना था एहसानुल्लाह को। प्लेसमेंट अच्छी थी खुर्रम मंजूर की जानिब से, ज़्यादा स्विंग मिल नहीं रहा है, एंगल के साथ ही बॉलिंग हो रही है और सही तरीके से प्लेस किया खुर्रम मंजूर ने। अभी तक ज़्यादा हमें इस सेशन में कुछ स्विंग या सीम देखने को मिला नहीं है। नए बॉल से भी काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड था। हमें लगा था कि इमरान खान सीनियर ऐसे बॉलर हैं जो इस पिच पे अच्छी बॉल करेंगे, अच्छे एरियाज़ में बॉल करेंगे, लेकिन ऐसा हमें देखने को मिला नहीं है। उसके बरक्स आसानी से रन्स हासिल कर रहे हैं। साजिद खान जल्दी एक्शन में नज़र आएंगे हमें। ऑन साइड पे आसानी रन्स मिल रहे हैं। इवन आपने सही कहा कि जहाँ पे भी स्ट्रोक्स खेले और डिक्टेट किया अपनी टर्म्स को, उन्हें कहीं भी दिक्कत परेशानी कोई भी ट्रबल नहीं हुई बॉलिंग को फेस करते हुए। पॉजिटिविटी है इंटेंट में, और पॉजिटिविटी अगर आपने देखनी हो तो सबसे पहले आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स देखनी होती है कि बैटर्स किस तरह भाग रहे हैं, कहाँ प्लेस करके सिंगल ले रहे हैं। चौके छक्के मारना तो एक अलग बात है, वो तो डेफिनेटली अटैक में आता ही है, बट पॉजिटिविटी आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आप बैट बॉल्स को कैसे खेलते हैं, अच्छे बॉल्स को कैसे नेगोशिएट करते हैं। यहाँ पे 2 स्लिप्स और 1 गली के साथ बॉल कर रहे हैं। और इस दफ़ा कवर्स पे निकाला साइम ने, दूसरे के लिए भी वापस होंगे। वेल साइम की आप बात कर रहे थे कुछ देर पहले, अभी हमने देखा कि वर्सेस सेंट्रल पंजाब उनकी पहली इनिंग में 71 थे, दूसरे में 5, फिर उसके बाद नॉर्दर्न के खिलाफ भी उन्होंने कुछ ऐसा किया, पहली में 35, दूसरी में 6। तो आप वो जो परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे कि उसको कैरी करना, फिर 95 दूसरी इनिंग में बनाए सदर्न पंजाब के खिलाफ, तो ये मिक्स कैलकुलेशन है इनके रन्स की। जहाँ थोड़े अटैकिंग प्लेयर हैं, फ्लैशी हैं, थोड़े आउटसाइड द ऑफ स्टंप, जब भी बॉल मिलता है वो रन्स के लिए जाते हैं। अर्ली डेज हैं अभी, बिल्कुल तीसरा चौथा मैच है इनफैक्ट इनके करियर का फर्स्ट क्लास। जितनी जितनी क्रिकेट खेलते जाएंगे रियलाइज़ करते जाएंगे इनका रोल क्या है। ये बेहतरीन शॉट है, लकी ज़रूर है कि फील्डर वहाँ मौजूद थे, लेकिन जितने ज़ोर से ये बल्ला घुमाते हैं ये बॉल हमेशा ही 4 रन्स के लिए जाएगा। और जब आप इतने बहादुर होते हैं तो किस्मत भी आपका साथ देती है, यहाँ पे ऐसा ही हुआ। या जिस्म से काफ़ी दूर था, बॉल में विथ भी थी, और यहाँ पर ये देखिए इम्प्रोवाइज किया और लेट हो गए फील्डर। यहाँ पर बिल्कुल उनके सामने बॉल टिप किया। जी हाँ, जितने ज़ोर से बल्ला घुमाया था, लकी रहे यहाँ पे नबी गुल मौजूद थे, लेकिन टिप कर रहा था बॉल, और जितनी तेज़ी से बॉल ट्रेवल कर रहा था, बहुत ही तेज़ फील्डर चाहिए यहाँ पे, क्विक हैंड्स वाला फील्डर। तो बात हो रही थी साइम अयूब की, और उनकी सेकंड इनिंग्स में इतने कामयाबी अभी तक मिली नहीं है। इस बॉल के बाद बात करेंगे। एक्सीलेंट, बहुत ज़बरदस्त, एलिगेंट गैप निकालने में कामयाब हुए 4 रन्स के लिए। क्या ज़बरदस्त बैटिंग और क्या ज़बरदस्त पारी।
या बहुत ही बेहतरीन शॉट, बैकफुट पे सिर्फ पंच किया है, ये कमाल की प्लेसमेंट है, हेड पोजीशन, एल्बो, सब कुछ इन पोजीशन, प्लेसमेंट भी कमाल की। ये एक स्टार हैं, ये बॉर्न स्टार हैं साइम अयूब, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किलफुल हैं। 12 ओवर्स के बाद 65 बगैर किसी नुकसान के सिंध। जब आप नेचुरली स्ट्रोक मेकर होते हैं, आपकी इंस्टिंक्ट में होता है शॉट्स की तरफ जाना, और जब चौथी इनिंग में आप बैटिंग करने आते हैं तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है, वेयर एंड टेयर होता है, पिच डिफरेंट होती है चौथे दिन की सेकंड इनिंग में, और नेशनल स्ट्रोक मेकर को के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं अगर पिच में वेयर एंड टेयर होता है। एक तो ये मुझे वजह लगती है, दूसरा एक अभी बहुत यंग हैं, जैसे जैसे क्रिकेट खेलते जाएंगे डिफरेंट कंडीशंस में, डिफरेंट ओपोनेंट्स के खिलाफ सीखते चले जाएंगे। और एक चीज़ जो सबसे बेहतरीन इनमें नज़र आई है कि सीखने का अमल जो है, सीखते रहते हैं, सीखने की लगन होनी चाहिए। एक बार फिर एक्शन में नजर आए हमें एम्पायर, बहुत ही अलर्ट एम्पायर हैं, कैमरा के भी फेवरेट हैं। नो की शाउट थी, बहुत लाउड, और बेहतर यही है कि आप वेट करें, क्योंकि इस तरह के रन, इस तरह की सिचुएशन में जब आप बिल्कुल रिलैक्स हों, बिल्कुल आसानी के साथ बारी कर रहे हो, तो इस तरह का पैनिक होना नहीं चाहिए। अच्छी कॉल, यहाँ टाइमली कॉल कर दी थी, एक्सपीरियंस है केएम के खुर्रम मंजूर खान, बहुत ही शानदार प्लेयर हैं ओवर द ईयर सिंध के लिए। इस दफा ऑन साइड पे खेले लेकिन गैप नहीं निकाल पाए। तमाम तरह से जो स्ट्रोक्स हैं वो बिल्कुल बल्ले के मिडल से आ रहे हैं, और जैसे हम बात कर रहे थे कि जो पार्टनरशिप है वो अच्छी चल रही है, 65 पे जा पहुंची, एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छा आगाज। यकीनी तौर पर यहाँ पर सिंध है वो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड है, और कहीं ना कहीं अब चेंज मतवक्को है बॉलिंग में। जहाँ साजिद खान एक बेहतरीन ऑप्शन मौजूद है, अच्छा काउंटी सीजन खेल के आए हैं, लेकिन फास्ट बॉलिंग डिसअपॉइंटिंग रही, काफ़ी एक्साइटमेंट थी हमें। उस तरीके से स्विंग सीम हमें देखने को नहीं मिला है, ये बॉल थोड़ा नीचे ज़रूर आया है एहसानुल्लाह की जानिब से, और शायद उतनी सपोर्ट जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं हासिल हुई है केपी के बॉलर्स को। और यूजुअली हम देखते हैं जैसे जैसे ये पिच चलता रहता है तीसरे चौथे दिन, ये बैटिंग के लिए बहुत शानदार हो जाता है, और यही यहाँ पे भी हो रहा है कि अब बैटिंग थोड़ी आसान हो गई है, रन्स मेकिंग आसान हो गई है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि जो सुबह का सेशन है लगभग 10 से लेके 11 सवा 11 तक का, वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ बॉलर के लिए सपोर्ट है। उसके बाद जैसे ही धूप की तमाज़त में इजाफा होता है या दिन बढ़ता है आगे को, बैटिंग निहायत सहल हो जाती है। अपील हो रही है इस वक्त, नासिर हुसैन इन एक्शन अगेन। वेल ये काफी जल्दी जल्दी सब कुछ हुआ, बॉलर ने बॉल करवाई, झुके, पोरों पे लगा बॉल, लेकिन बल्ला क्रीज के अंदर था। यहाँ 4 रन मिस हो गए, मैं तो ये कहूंगा खुर्रम मंजूर के बिल्कुल सीधा ही विकेट्स में दे मारा बॉल। इस वक्त अच्छा ओवर, कोई रन नहीं इस ओवर में आया, कर्टसी पिछली बॉल पे जो काफ़ी सीधा खेल गए और स्टंप्स पे जा लगा। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि
जो नॉन स्ट्राइकर पे इवन मैंने कई दफ़ा देखा जो बैटर्स हैं वो बगैर कोई बॉल खेले आउट हुए इस तरह से, जब डिफ्लेक्टेड होती है बॉल बॉलर के हाथ से। क्रिकेट में ये सबसे अनफॉर्चुनेट तरीका है आउट होने का कि आप नॉन स्ट्राइकर पे खड़े हो, बॉल सीधा लग जाए हाथ से लग के। किसको कसूरवार ठहराएंगे आप? किसी को भी नहीं ठहरा सकते हैं क्योंकि बैटर ने अच्छा शॉट खेला है, सिर्फ किस्मत का खेल है। सॉफ्टली प्लेड। इसके साथ 13 ओवर हुए, 65 बगैर किसी नुकसान के। साजिद खान अब बॉलिंग करने के लिए आएंगे। 56 मैचेस में 201 विकेट्स हासिल कर चुके हैं, बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है ये। लीडिंग विकेट टेकर थे आज से 2 साल पहले सीजन में, 11 बार 5 विकेट्स हासिल कर चुके हैं। पाकिस्तान के लिए भी सिलेक्शन हुई लेकिन फिर रास्ता भटक से गए, थोड़ा एक्शन चेंज किया है, अब एक कम बैक कर रहे हैं और हम होप करते हैं कि दोबारा पाकिस्तान टीम में भी इनकी एंट्री हो, क्योंकि बहुत शानदार कैरेक्टर हैं, बहुत इन्वॉल्व रहते हैं, हर वक्त एक्टिव रहते हैं, बाकियों को भी जगा के रखते हैं। ये क्वालिटी है इनकी, और बहुत फ़नी इंसान है, जेन्युइनली फ़नी इंसान है। और उनका जो सामना है साइम अयूब के सामने है, अच्छा मुकाबला होगा, ये अच्छी लर्निंग होगी साइम अयूब के लिए। क्वालिटी बॉलर्स को जब आप खेलेंगे तो आप सीखते हैं। जी हाँ, लेट खेला, गैप निकाला 4 रन के लिए, वेलकम किया साजिद को। जहाँ ये खतरनाक शॉट था, रिस्क बहुत इन्वॉल्व था इस शॉट में, बहुत विकेट्स के सामने से कट मारा, लेट मारा है। देखिए पहला ही बॉल किया, अंदर की तरफ बॉल आया, लेट खेले और ये शॉट इनको पसंद है, ये खेलते हैं। ऑल्दो ये रिस्की शॉट है, देखने में तो और ही रिस्की लगता है लेकिन इफेक्टिव है, रन हासिल करते हैं। यहाँ पे साइम अयूब को ख्याल से खेलना होगा साजिद खान को, क्योंकि ये बहुत तजुर्बेकार बॉलर हैं, ये सेटअप करते हैं, ऑलवेज ऑन योर फेस जिसे कहते हैं, ये रहते हैं इस तरीके से। साजिद खान शानदार कैरेक्टर है, मज़ेदार। एक बार फिर ऑफ साइड पे खेला, सीधा फील्डर की जानिब। बिल्कुल आपने सही कहा, 7 टेस्ट मैचेस का तजर्बा, 22 विकेट साजिद की, वो तमाम तर एक्सपीरियंस है और इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे। गोके ने पहली बॉल पे ही चौका लगा और इस पे भी अटेम्प्ट जरूर थी शॉट की। और वो जो चौका है उससे ये ज़्यादा नाखुश होंगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व था और इसकी शॉट होगी तो ख़तरनाक तो होगी। और यहाँ पे साइम अयूब को दिखाना होगा कि ना सिर्फ फास्ट बॉलर्स को, वो स्पिनर को भी इक्वली अच्छा खेलते हैं, क्योंकि पहला ओकेजन है कि ये एक अच्छे ऑफ स्पिनर, क्वालिटी ऑफ स्पिनर का सामना कर रहे हैं। थोड़ा सब्र करना होगा, तहम्मुल से खेलना होगा, क्योंकि जो नेशनल स्ट्रोक मेकर होते हैं उनके इंस्टिंक्ट में शामिल होता है कि बॉल नज़र आया नहीं और वो अपनी शॉट की तरफ गए नहीं। उन्हीं जो मुश्किल मरहलात हैं उन्हीं पे काबू पाना है, तभी आप बड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार होंगे। स्किल मौजूद है, टैलेंट मौजूद है, थोड़ी ट्वीकिंग की ज़रूरत है साइम अयूब को। दिफाई अंदाज ये बहुत बेहतर है। इसके साथ ओवर का इख्तिताम हुआ, 14 ओवर गए, 69 बगैर किसी नुकसान के। बत्तीस रन पर मौजूद हैं साइम अयूब। खुरम 30 रन बनाए, अच्छी रेट पे बैटिंग कर रहे हैं दोनों, और तभी रिजल्ट की तरफ आप जा सकते हैं जब आपकी रन रेट अच्छी होती है। और हम चाहेंगे क्योंकि 3 ड्रॉ ऑलरेडी हम देख चुके हैं, यहाँ पे एक रिजल्ट तो कम से कम आना चाहिए। यहाँ पे तरस गई आंखें एक रिजल्ट को, काफ़ी थके हुए लग रहे हैं। आसिम महमूद के लिए अच्छा मैच अभी तक नहीं रहा है, लेकिन एक इनिंग अभी बाकी है। हम दुआ गो कि ये अपने सेकेंड इनिंग में अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दें। 7 विकेट्स हासिल किए थे जब आखिरी बार यहाँ खेले थे। 2 ऐसे प्लेयर हैं एजाज जिन पर काफ़ी नज़रें जुड़ी हुई हैं, स्पेशली मेरी तो नज़रें डेफिनेटली उन पे हैं। अच्छा रन है ये, तेज़ी से भागे।
एक तो साइम अयूब है, डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान इनके बारे में बात कर रहा है, और मेरी उम्मीद है कि जब ये सीज़न ख़त्म होगा, जब ये 10 या 11 मैच अगर फाइनल खेलते हैं, तो साइम अयूब एक ऐसे प्लेयर हैं जो तैयार होने चाहिए इस सीज़न के, पूरा सीज़न खेलने के बाद। और दूसरे कासिम अकरम है सेंट्रल पंजाब के। ये दो ऐसे प्लेयर हैं जो मुझे लगता है पाकिस्तान के लिए बहुत जल्द खेलेंगे और फ्यूचर है पाकिस्तान का, प्रोवाइडेड कि पूरा सीज़न खेलें, पूरे 10 के 10 मैचेस या 11। तैयब ताहिर भी उस लिस्ट में डेफिनेटली आते हैं, लेकिन वो इनसे थोड़े सीनियर हैं, काफ़ी देर से क्रिकेट खेल रहे हैं। बट ये दो ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बिल्कुल इस पूरे सीज़न के बाद मुझे लगता है कि तैयार होंगे पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। फ्लैशी कली के सामने ये बॉल गिरा और जख्मों पे इनफैक्ट नमक छिड़कना कि 4 रन्स भी हुए। नाखूनों पे जख्म भी छिड़क सकते हैं। नबीकुल एक बार फिर एक्शन में, रिस्ट पे बॉल लगाई। ये उन शॉट्स की मैं बात करता हूँ, ये दूर बॉल था, इसे फ्लैशी शॉट कहेंगे। ऑल्दो लकी रहे कि बॉल डिप कर रहा था एक बार फिर। ऐसी डिलीवरीज को आप जाने दे सकते हैं। इन्हीं कमजोरियों पे काम करना है साइम अयूब को इन 10 मैचेस में, इस पूरे सीजन में। जी हाँ, लगता है यही था कि कमिट कर चुके थे ये स्ट्रोक, और बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल आखिरी लम्हात में भी वॉचफुल रहना पड़ेगा। तो बेहतर था दिफाई अंदाज, डायरेक्टेड की कोशिश, लेकिन बॉल नहीं लगा। लेकिन दूसरी जानिब एक गिफ्ट जरूर मिला रन की सूरत में। क्या जरूरत थी इसकी भाई, 4 डे मैच खेल रहे हैं, देखिए बिल्कुल तेज भाग पड़े थे। साजिद खान मौजूद थे, शायद यही इशारा था सीनियर पार्टनर का, खुर्रम मंजूर का, भाई किधर भाग रहे हैं, कहाँ को आ रहे हैं। साजिद खान बहुत तेज फील्डर है, डायरेक्ट थ्रो जो थी वो मुश्किलात में डाल सकती थी साइम अयूब को। वैल्यू करना होगा अपनी विकेट को। आपको स्टार्ट अच्छा मिल गया है, इसको कैरी ऑन करना होगा, बड़े रन्स करने होंगे। सॉलिड। और जो आपने इससे कुछ देर पहले भी बात की थी साइम अयूब के बारे में, कि जिस तरीके से उन्हें कुछ छोटी छोटी खामियां जिन पे काबू पाना, T20 से वो आए लॉन्गर फॉर्मेट में, तो शायद ये भी कुछ वजह रहती है कि खेलते साथ उन्होंने रन लेने की कोशिश की। जो फॉर्मेट चेंज ऑफ फॉर्मेट है वो भी जहन में रखना पड़ेगा। तो ये चौथा मैच खेल रहे हैं, 8वीं 9वीं इनिंग है इनफैक्ट। कुछ फेलियर्स भी हैं बीच में, कुछ अच्छे सक्सेस भी हैं, 2 इनिंग्स अच्छी भी खेले हैं। अब तक तो शायद उस जोन से तो निकल जाना चाहिए। ये एक नेचुरल फ्लेयर है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है इंसान का कि आपने रन्स की तरफ जाना होता है। और उसमें कोई बुराई नहीं है, बीइंग मॉडर्न डे क्रिकेट यही सिखाती है आपको। लेकिन जो अननेसेसरी है, जैसे अभी आपने देखा जो रन आउट का चांस था इस तरह की, या इससे पहले जो बॉल था जो आउटसाइड द ऑफ स्टंप फ्लैशी ड्राइव करने चले गए थे, ये छोटी छोटी चीज़ें जिन पे काबू पाना होगा। वरना पॉजिटिव होने में, अटैकिंग होने में, फ्लेयर होने में इसमें कोई बुराई नहीं है। मॉडर्न डे क्रिकेट यही है, और ये टिपिकल मॉडर्न डे क्रिकेटर हैं, एक उभरता हुआ सितारा, बल्कि मैं तो कहूँगा एक सितारा बन चुके हैं अब ये। सिर्फ सही जगह तक पहुंचना है। रन अप का इशू, और अंपायर ने इस बॉल को किया कैंसिल। एक और ऑप्शन भी मौजूद है केपी के पास, सरवर आफरीदी की। नेशनल T20 में हमने देखा था कि नए बॉल से बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं, अपनी लाइन और लेंथ बहुत शानदार रहती है। और कहीं ना कहीं मुझे ये फील आती है कि इस पिच के ऊपर उनकी लेंथ जो है वो बहुत काम आने वाली है। लेकिन उसके लिए उनको सेमी न्यू बॉल से तो एटलीस्ट बॉलिंग करवानी होगी। कोशिश थी कि कुछ एफर्ट करें इस डिलीवरी में, लेकिन इस बॉल के साथ ओवर का हुआ इख्तिताम। 15 ओवर हुए, सिंध 75 बगैर किसी नुकसान के।
Run rate of 5 runs per over. This has been a blistering start by these two. Saim Ayub 37 of 38, almost at a run a ball. Khurram Manzoor has had more of the strike, 31 of 54. But both these have worked very well together. A gorgeous afternoon. We've seen a display of magnificent stroke play from these Sindh openers. Sajid Khan definitely will pose a different threat to these left-handers of Sindh. Saim is having none of it. Just clears the fielder. His heart must have been in his mouth for a moment, but just over the head. Saim Ayub taking charge against Sajid, and Sajid is not happy. Fielder tried well there. Look at this, 1, 2, then smashes, and didn't tried well. Actually, he didn't jump fully, actually. If you have another look, he misjudged it. In the end, he didn't attempt. When he was jumping, he wasn't looking at the ball. That ball remained in the air for quite some time. That's what Sajid Khan wasn't happy about. If you have a close look at the mid-on at the top of your picture, look at that. And by the time he jumped, he wasn't looking at the ball. His back was towards the action. Lucky escape for Saim. But then his aggressive intent meant the fielders are pushed back, so he can easily rotate the strike. Well, Arshadullah was there, and he jumped but didn't jump properly. So Sajid was not happy on that moment, of course. Saim Ayub playing nicely. Shot put away by Khurram Manzoor. It's quick to get onto that back foot. It was in the air, but away from the fielder. Good aggression from these Sindh openers. A good solid start for Sindh. Look at this. Pulled and nicely over the mid wicket. 4 runs. Quick footwork. Really using the box nicely. Leading edge. That's all action here. 9 runs off the over. That last delivery, Khurram Manzoor wasn't in control. Have a look how quickly he turned the face of the bat. Just the leading edge. But didn't carry a long way. 84 for none. Sanullah has bowled 3 overs so far. Like we were discussing, me and Asif in our previous stint, that KP bowlers are content at bowling that fuller length. They've persisted with that so far in this innings. Edged and gone. Loose stroke from Saim Ayub. Sanullah pushed it wide. It got the edge and neatly pouched by Rehan Afridi. A big wicket. In form, Saim Ayub walks back. It was a half-hearted stroke. Look at this. And in the end, he decided to left, but it was too late. Nicely taken by the wicketkeeper. So good start, very good start from Ehsanullah. Blazing knock came to a tame end. He'll be disappointed with his stroke. 42 or 43, Sindh 84 for 1.
Saud Shakil, the new man in. He's had a lean time here at the Pindi Cricket Stadium. One game they played away from here, he scored 158 runs. Very, very talented and very, very stylish left-hander. If he gets going, rest assured you'll see some quality batting and some delightful stroke play. 53 games already, 18 50s and 1200. So his conversion is very good. That impressive average of 48 and the best of 174. He's due a good knock here. His team needs him. Sanullah with his tail up. That back of a length, so shouldered arms. That Saim Ayub dismissal was really a nothing shot in the end. He wanted to go for that drive. In the end, he thought the ball was too wide. So he tried to abort his stroke, but by that time, it was too late. And nicely taken by Rehan Afridi. Ahsan got the wicket that KP badly needed because Sindh was really rollicking along. Yes, and now this is the good time for the KP that put pressure back on Sindh. Sindh was in an aggressive mood. That short pitch delivery that we've been waiting for. So there's a good player of pace bowling. He's just got struck on the hand, I think, because he got cramped. The line was good. I think he'll feel the pain as he gets to the other side. His fingers must have got jammed against the handle as that ball struck him. It was intent was good, a quick bouncer. There's a fielder in the fine leg. In the end, so there's fine. This is what we expected from Ahsanullah, that he will challenge these Sindh batters with his short pitch stuff because he's going to get some bounce here, and because of his height he's expected to get steep bounce. But with the new ball, they were just looking to pitch the ball up, see if this can get any movement. You have to say there hasn't been much movement for the KP bowlers from the fuller length. No swing, not a lot of seam. So plan B now, probably in this half of the innings. Just pull the length back and see if they can extract that bounce. Quite a long run up. Hopping on his tiptoes. Good bounce once again for Ahsan. Yes, Ahsan started well, and he had a very good T20, international T20, national T20 stuff. And the way he is bowling, concentrating on his line, bowling his fourth over, took a very good wicket of Saim Ayub. Long run up. If you have a close look at his run up, his leg seems to go everywhere. The stride is not even, but that bounce is really relentless. This time he's hit Khurram Manzoor, and remember Khurram Manzoor has got a dodgy finger on his right hand. Again, it was a very quick and good bouncer. Khurram Manzoor wasn't expecting that raising delivery. Very well done. Nicely bowled by Ahsanullah. 86 for 1.
Nice timing from Khurram Manzoor. Khurram Manzoor showing his gentle push against Sajid. Sajid is a promising talent, played for Pakistan as well, and we watched him in test matches. Sajid had a good start to his career with Pakistan. Had a lean series against Australia, and then he went back. He worked on his action. He had that obvious flaw with that front arm, which drops pretty quickly. Then he went to county cricket, had a little stint with Somerset towards the back end of the season. He played 4 games. Didn't have a good return over there as well. Just took 5 wickets at 70 plus. This is beautifully bowled. This is the contest we've been waiting for. The Sindh left-handers versus the guile of Sajid Khan, the off-break bowler. It's a very good delivery, a typical off-spin delivery. Good pace as well. Seen this wicket lacks pace as we get into day 2, 3 and 4. So Sajid will have to watch what pace he needs to bowl. That one that went right across South's bat was pretty much the ideal pace for this wicket. So there was a good player of spin. Take his time. There you go, that angling just from the wide of the crease, the angle coming into the left-hander, and that back leg just lifted for a brief second. But before Afridi could do anything, it was background on the ground. 87 for 1. About 16, 17 minutes to go before the tea break. It's been a good session of cricket here. KP had attacked with the new ball, but Sindh's opening partnership was good. But now that 1 wicket has fallen, Ehsanullah looks like he's found his mojo in the last over. Yes, and KP will look forward to get at least a wicket right before the tea break. Interesting field change. There's a leg gully in place now. Are we going to see some chin music? Just a wide slip and a gully. He went for the Yorker instead. Beautifully played by Khurram Manzoor. He was ready and put it away in style. Nicely flicked by Khurram Manzoor. It's a typical Khurram Manzoor shot. He was looking for the Yorker, but the length wasn't good. Nicely timed by Khurram Manzoor. Nabigul is at leg gully. It's quite fine leg gully, so that ball went to his left. Keep him waiting for that bouncer. Let's see what Ehsan does. Got the edge and it didn't carry. It's quite a surprise that the edges didn't carry in this KP innings. Because generally edges have carried here at the Pindi Cricket Stadium. I think Khurram Manzoor played it with soft hands. But nonetheless, good bowling from Ehsanullah. Yes, it's a very good delivery. And Khurram Manzoor again, lucky. Didn't carry. Line was perfect. Good effort in the end, but a couple of runs for Khurram Manzoor. Ishfaq in first slip. Well, I say first slip, it's a very, very wide first slip. Another Yorker attempted, goes through the infield again.
The chase is on. Imran Khan laboring after that. Will still get there because the ball literally stopped. Field is set for the short pitch delivery, but Ahsanullah is looking to bowl that Yorker, probably wanting to surprise Khurram Manzoor. Yes, rightly said. Or might be, if we'll go with a slight change of pace. Fielder tried well, but I don't know. Imran Senior was really slow in the end. Left-handed, Saud is back on strikes. 2 slips in a gully. No leg gully for him. We do understand that in shorter format, bowlers came up with slow deliveries. Brightly in the Tri-Nation series, we have observed Trent bowled the way he was bowling. Just have a close look at Ahsan's run up. His legs, his steps, his gallop is not rhythmical, especially towards the end of his run up. But everything else is pretty good. That braced front knee, very good front arm, and a good point of release. Probably needs to work a little bit. Here goes. Smashed away. Saud was ready for this one. And a little fumble. Server Afridi couldn't control that. Sloppy effort, but a good shot nonetheless. Yes, Ahsanullah at the end not happy. Saud was pretty much prepared for that shot. A fielder down there in fine leg. Server Afridi. Quick bouncer, nicely played. And a boundary in the end. Just talking about Ahsan's run-up. Probably he needs to work on his lower a little bit. That gallop and sprint will give him more power and he'll hit the crease harder. This is typical Saud Shakil. This is elegant. A delightful cover drive. The Sindh skipper is off and running. It was an overpitch delivery and very well played by Saud. He was, look at that shot towards extra cover for a boundary. 19 overs gone, 104 for 1. Of the last over from Ahsanullah. He's bowling those attacking lengths. KP is looking to make the moves in this match. At the moment, he's just content to attack, bowls those aggressive lengths, which meant that the run rate is exceptional here. 5.43 for Sindh. Big slog in the gap. Couple of bounces. Khurram Manzoor is prepared to take the challenge and brings up his 50. Another very, very polished knock from this experienced opener from Sindh. Raises the bat and gets the applause. Well played. 50 in a stylish way. A fielder deep there in mid-wicket. Early on there was a call, catch it. But the timing was perfect. 6 fours included in this knock. Another slog sweep. This time he didn't quite middle it. He's really
looking to take the charge here. Not happy with his bat. But that's when he brought up his 50. Just down on one knee. Just got the middle of the bat. Still not happy with his bat? What's wrong, Asif? Yes. And he asking to change his bat. Ran in with the arm, inside edge. Sajid was targeting that pad. Now he's beaten Saud on both edges of the bat in the last couple of overs. Good challenge. Yeah, it could be a good contest. Look at this. Yes, will be a good contest between these two, Saud and Sajid. Again, that quicker pace is hurrying Khurram Manzoor on that occasion. That's what I was talking about earlier, that what's the right pace to bowl in this pitch. It may take a lot of effort to bowl at this pace for a long time from a spinner. It looks like that's the right pace. 7 of this over from Sajid. Sindh rollicking along. 20 gone. And Nelson's on the board. Ehsanullah so far, the bowler who picks up Saim Ayub's wicket, and rest of the bowlers still struggling, waiting. Sajid Khan, Arshadullah and Imran Khan. Hassan has gone for 31 runs, but he's picked up the wicket. That leg gully's back in place. Last over, he kept Khurram waiting for that short pitch delivery. First up. Not really rushed through off the wicket though, a bit loopy. It was on the way down when it got to Rehan Afridi. So Khurram is ready to take charge on. Went for the pull shot. Yes, that's right. It wasn't a proper rising delivery. Talking about Hassan's run up, first, like I said, that the gallop is not rhythmical at this stage, and also you see that stop start is just use of the hands, using the width, aerial, but reasonably well controlled by Khurram Manzoor. The boundaries are flowing. Yes, Khurram Manzoor is just there to charge on against every bowler. Ehsanullah once again outside the off stump. A rising delivery and nicely done in the end by the Khurram Manzoor. Got a boundary there. If you want to bowl that short pitch delivery, that's not the right line because you're giving too much room. Just get a bit straighter. Probably this is what Kamran Ghulam is talking to Ehsanullah. Just get a bit closer. Target those rib cage. Probably the badge on the helmet. That's the right line. Bit too predictable. Smashed away. That fielder is in front of square as well. Khurram is experienced, so he's read the plot. He's one step ahead of Ehsanullah. Yeah, that's the run-up we were talking about. So he starts slowly, but that gallop is not very rhythmical. You see those steps should gather pace. There you go. One very big stride just before he reaches the crease. Here he can gain a little bit of more momentum, hitting that crease harder. Will give him a couple of yards of pace. A bit of strength probably needed in that lower part of the body. But you cannot doubt that he's got the potential. This time Saud got on top of it nicely. Bit of inexperience from Hassan. Everything has been short in this over. Two experienced batters. They have been one step ahead of him. Coped with him easily. Yes, it matters a lot when we talk about the run-up of a fast bowler.
talk about the legendary fast bowlers Shoaib Akhtar, and if I talk about Shenbon from New Zealand, there were some paces, got some sheet pace, but the proper run-up as well. Another smashing pull stroke. Khurram Manzoor is on fire here, dealing in boundaries. That's the second one in the over. This is what we were talking about, Shah Faisal, that the length is not perfect. This time, properly pulled. It was an easy shot for Khurram Manzoor. Fielder was there, tried well, but it was away from the fielder. A boundary. Yeah, the fielder just dived over the ball. It was fiercely struck, but I think is it Waqar or Nabi Gul? They just dived over the ball. Bit too predictable now, Ahsanullah. In the air, away from the fielder. Lucky on that occasion. Predictable from Ahsanullah, and Khurram Manzoor also not holding back. Meeting fire with fire. 122 for 1. This is the scorecard. Khurram Manzoor 62 not out. Sam Ayub is the man. Got out by Ahsanullah. 42 on 43 deliveries, and Saud Shakil, he is not out on 11. Talking about run-ups in the previous over, Asif. The gallop and sprint of legendary Waqar Yunus. If you look at him side on at his prime, some side tail stain from the modern era. That gallop is missing from Ahsan. He looks a bit labored when he reaches the crease. That's why he's not consistent with his pace. When everything is in sync, he gets the ball through nicely. But work in progress definitely for the young man. Saud is facing Sajid. Call is for 2. No, just content with the 1. Definitely run up. Will add a couple of yards of pace and also save his energy. Because you saw him at the end of the last over. He looked very frustrated, looked tired. There's a lot of energy that goes to waste when you labor like that to the crease. Khurram Manzoor is not letting off. He's taking Sajid to the cleaners. Every opportunity that he gets down on one knee and smashes him on that mid-wicket region. Yet another boundary. This is his favorite length. Look at that shot towards mid-wicket area. And even a fielder deep in the square leg, but there's a huge gap. Quicker delivery from Sajid. Doesn't take a lot of time between the overs, but I think umpires will still call it time. And it's time for a cuppa at the Pindi Cricket Stadium. This afternoon session has been full of action. Unbelievable run rate of 5.82 from Sindh in the first 22 overs. They've really attacked KP hard. Kamran Ghulam is an inexperienced skipper, and Sindh has really took advantage of that. KP did bowl aggressive lengths, you have to give him that. They were trying to make things happen, but in the end Sindh, who won that session quite convincingly. 128 runs for 3 wickets in the whole session. That over rate is slightly disappointing, but the run rate isn't.
His impressive run rate, 5.77. Well batting by Khurram Manzoor early on, Saim Ayub as well. And some impressive batting, as I said, that Khurram Manzoor 67. The strike rate is good, 42 from on 43 deliveries, and Saud Shakil is still there with 12. All these strike rates are very impressive. KP started with Imran Khan and Arshadullah. Arshadullah went for plenty. So did Ahsanullah. Sajid also hasn't been able to stem the flow of runs. The only wicket for Ahsan. Just the 22 overs for 128 runs. That opening partnership was of 84 runs. That really set the tone for Sindh. Like I said, action-packed session. The afternoon session. Saim started off with his streaky boundary, but then he put on a show. First that straight drive, then the cover drive. Elegant and delectable Khurram Manzoor. Typical Khurram Manzoor, using the pace of the bowlers, good use of the wrist. Saim, the elegance personified. Khurram Manzoor kept him good company. These two complemented each other very nicely. Half a chance maybe, but that back foot punch and then that trademark cut shot against the spin and the streaky stroke. Both of them, they didn't allow Sajid to settle. Near escape there for Saim, but then Khurram Manzoor took charge really after Saim's dismissal here. He put Ahsanullah and Sajid Khan to the sword. Saud got a couple of boundaries as well. This one his best stroke so far. And this was a sight that we've seen many times during this session. 50 was brought up in a belligerent fashion. Too much room outside the off stump. Too short, too predictable. Khurram Manzoor, too good a player to miss out on that. This was signing off of the session, and Sindh being the clear winners. And this is my summary so far. Khyber Pakhtunkhwa 384 and Sindh is chasing, and they are 128 for 1. This is the time for the tea break. Catch you after the tea break for the with the live action.
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। यहाँ पे दूसरा दिन राउंड चौथे का ये मैच खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के दरमियान जारी है। यहाँ पे सिंध अपनी पहली इनिंग में 128 रन बना चुके हैं। 22 ओवर्स का खेल हुआ है। रन रेट शानदार है 5.82 की, और ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिगनिंग है सिंध की बैटिंग लाइनअप की। खुर्रम मंजूर ने बहुत शानदार बैटिंग की है, 67 रन पे मौजूद हैं। साइम अयूब ने अच्छा आगाज़ किया था, लेकिन एक बार फिर अच्छे आगाज़ के बाद अपनी विकेट गंवा बैठे। साउद शकील 12 रन पर मौजूद हैं। खुर्रम मंजूर की बहुत शानदार इनिंग रही है, बहुत ही अटैकिंग, बहुत ही पॉजिटिव स्टार्ट के साथ बैटिंग की। कोई भी बुरा बॉल उनसे बच नहीं सका। रन्स लेते रहे, क्वालिटी रन्स। ग्राउंड के चारों तरफ स्पिनर्स को भी बहुत ही शानदार तरीके से टैकल किया है। साजिद खान को कोई भी बुरा बॉल उन्होंने जाने नहीं दिया। ये क्वालिटी रही है इस इनिंग की, और स्पेशली साजिद खान को तो उन्होंने दो आड़े हाथों लिया है। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की है, शानदार इनिंग, और ऐसा लग रहा है जैसे इस इनिंग में एक बड़ी इनिंग हमें देखने को मिल सकती है खुर्रम मंजूर की जानिब से। रन रेट बहुत शानदार है। मुश्किलात ज़रूर रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के बॉलर्स को। इमरान खान 5 ओवर्स में 15 रन दिए। अरशदुल्ला से काफ़ी कुछ एक्सपेक्टेड था, लेकिन महंगे साबित हुए हैं, और वाहिद विकेट हासिल की है। एहसानुल्लाह ने 6 ओवर्स में 42 रन देकर 1 विकेट हासिल की, वो भी बहुत टैलेंटेड साइम अयूब की। ये विकेट जो गिरी, साइम अयूब बहुत शानदार बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर लूज शॉट, कंसंट्रेशन में थोड़ा खलल आया, और आसान सा कैच रहान आफरीदी को दे दिया। विकेट हासिल की एहसानुल्लाह ने। खैबर पख्तूनख्वा ने अपनी पहली इनिंग में 384 रन बनाए। सरवर आफरीदी की शानदार सेंचुरी, कामरान गुलाम ने 93 रन बनाए। सिंध अपनी पहली इनिंग में 128 रन, 1 विकेट का नुकसान पे ट्रेल है 256 रन की। और मेरे साथ आ गए हैं यासिर हमीद। एक्साइटिंग मैच यासिर। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा स्टार्ट लिया सिंध ने, और केपी की टीम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा एफर्ट, क्योंकि ये एफर्ट है बॉलर्स के लिए। इस पिच में हमने पहले इनिंग्स में भी देखा, सऊद शकील भी आके अच्छा खेल रहे हैं, 2 बाउंड्रीज भी ली इन्होंने, और बैटर्स के लिए बहुत आसान है ये पिच। जिस तरह हम समझ रहे थे कि बॉलर्स के लिए होगा, लेकिन वेदर थोड़ा सा गर्म है, उसकी वजह से बैट्समैन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। अरशदुल्ला 6 ओवरों में 39 रन दिए, टच एक्सपेंसिव, और कोई आउट नहीं किया। यहाँ एंड चेंज किया है इस बार, मीडिया सेंटर एंड से अब इरफान बॉलिंग करेगा, अरशदुल्ला बॉलिंग करेंगे। एक स्लिप, एक गली के साथ बॉलिंग करेंगे। ऐसा हमने सिंध की बॉलिंग लाइन में देखा था कि स्लिप बहुत जल्दी से हटा दी गई थी, क्योंकि ज़्यादा मूवमेंट मिल नहीं रही है बॉलर्स को। ये शानदार पार्टनरशिप है सऊद और खुर्रम के दरमियान। 44 रन की सिर्फ 36 बॉलों पे। आप सोच सकते हैं कि मैच किस तरीके से चल रहा है। रन्स तेज़ी से आ रहे हैं। जो रन रेट है वो 5.77 की है, और 4-डे क्रिकेट में ये बहुत शानदार रन रेट होती है। जी हाँ, बड़ी पॉजिटिव बैटिंग की है, और बैटिंग लाइन भी इनकी जो है बड़ी डीप है, बड़ी अच्छी बैटिंग लाइन है। इसके बाद फवाद आलम है, और उमैर बिन यूसुफ हैं, तो बहुत अच्छी इनकी स्टार्ट भी अच्छा हुआ। एज था, लेकिन थोड़ा सा वे फील्डर से बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। लकी स्केप सऊद शकील के लिए। यहाँ आगे पड़ा हुआ बॉल था, जिसे ड्राइव करने गए, लकी रहे कि फील्डर से बॉल थोड़ा दूर गया। थोड़ा शेकी स्टार्ट है सऊद शकील के लिए। बल्ला शायद थोड़ा जल्दी बंद कर लिया था। जी हाँ, बिल्कुल मिड ऑन खेलने गए थे, और बॉल थोड़ा सा बाहर निकला, फ्रैक्शन, जिसकी वजह से एज निकला सऊद का। लकी रहे। ऑफ टाइम को पैक कर लिया है, तो प्लान जाहिर है कि रन्स भी रोकने हैं और विकेट्स की तरफ भी जाना है। बैलेंस ढूंढना होगा यहाँ पे। जी बिल्कुल। इस वक्त 7 फील्डर जो है वो ऑफ टाइम पे मौजूद हैं। एक स्लिप है जो कि चौथी पोजीशन पे है, गली है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर, कवर एक्स्ट्रा कवर, और डीप पॉइंट बिल्कुल ही पैक कर दिया, और प्रिडिक्टेबल हो गए इस फील्ड सेट के साथ, और डेफिनेटली यहीं पे बॉल करेंगे, और
बैट्समैन के माइंड में भी यही चीज़ है। जहाँ सिर्फ 2 फील्डर्स ऑन साइड पे हैं, मिड ऑन और डी फाइन लेग पे। तो प्लान तो यही है कि आउटसाइड दी ऑफ स्टंप पे खिलाया जाए। यहाँ पे केपी का क्या प्लान आपको लगता है कि रन्स रोके जाएं या विकेट्स हासिल की जाएं? देखिए, इनको रन्स रोकने के लिए जाना पड़ेगा और टाइट लाइन ऑफ लेंथ से बॉल करनी पड़ेगी और उसके बाद बैट्समैन से गलती करानी पड़ेगी। अगर रन्स रुकेंगे तो बैट्समैन गलती करेगा, और उसको 3 4 5 मिल रहे हैं तो वो गलती करने का नहीं सोच सकता। तो इसलिए इनको मेंटेनेंस चाहिए और कंसिस्टेंटली अच्छी बॉलिंग चाहिए। अभी तक थोड़ा सा लूज़ लग रहे हैं केपी की टीम, क्योंकि आगे बॉल किए इन्होंने, उसमें इनको रिजल्ट नहीं मिले। जहाँ ज़्यादा मदद मिली नहीं है केपी के फास्ट बॉलर्स को, इस पिच से ज़्यादा मूवमेंट हमें देखी नहीं है। और शायद जो गलतियाँ सिंध ने की थी अपनी लेंथ को लेके, क्या ऐसा ही हमें केपी की बॉलिंग में भी नज़र आ रहा है? इनकन्सिस्टेंसी लेंथ में, या बहुत आगे बॉल कर रहे हैं या बहुत पीछे बॉल कर रहे हैं? जी बिल्कुल, और जो वो एरिया ऑफ अनसर्टेनिटी होता है वहाँ पे बॉल इतने पिच नहीं हुए, हमने देखा है बहुत आगे हुए हैं या पीछे हुए हैं। तो ये थोड़ा सा कोई एरिया है जहाँ पे वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ये अच्छी लाइन थी। अब ये ऐसी लाइन है कि यहाँ पे बैट्समैन जो है वो सोचता है कि इसको मैं यहाँ से अगर गलती करेगा तो फिर वहाँ पे इसको रिजल्ट मिलेगा। 132 पे 1। साजिद खान 5 ओवर्स में 27 रन दिए और खुर्रम मंजूर ने तो लाजवाब तरीके से खेला, इनको अटैक किया है। जब भी बॉल आगे पिच किया गया या हवा दी गई है बॉल को, क्या अब भी उसी प्लान से करेंगे कि फील्ड जो है लेग साइड पे स्प्रेड कर दी है? मिड विकेट स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग, लॉन्ग ऑन इन पोजीशन है। ऑफ साइड पे सिर्फ 3 फील्डर हैं, स्लिप के साथ 4। तो जैसा आप कह रहे थे यासिर, रन रोकने की तरफ ज़्यादा ध्यान है अब केपी का। जी हाँ बिल्कुल, और साजिद जो है वो एक्सपीरियंस बॉलर हैं, उनको पता है इस कंडीशन में कैसी बॉल करने हैं, और एक अच्छा बॉल भी कर सकते हैं ये, जिससे ये सरप्राइज़ कर सकते हैं खुर्रम मंजूर को। तो इस वक्त तो डोमिनेट कर रहे हैं खुर्रम मंजूर इस सिचुएशन को। 67 पे खड़े हैं, 78 बॉल, स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा है, और किसी तरीके से केपी को इनकी विकेट चाहिए। इस तरीके से आहिस्ता आसानी से रन हासिल हो रहे हैं लॉन्ग ऑन की जानिब खेल के। और खुर्रम जितने एक्सपीरियंस बैटर हैं, काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि ऐसी फील्ड सेट पे, ऐसी पिच पे कैसे बैटिंग करनी है। और यहाँ पे दिखाते हुए जिस अथॉरिटी से बैटिंग कर रहे हैं, 68 रन पे मौजूद हैं। साउथ शकील के लिए भी ऑफ साइड पे ज़्यादा फील्डर हैं। क्या ये सही तरीका होता है कि आप रन रोकने की तरफ जाएं, फ्रस्ट्रेट करें? 4 डे क्रिकेट की अगर हम बात करें, क्योंकि टाइम बहुत मौजूद है। जी अली, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि पिच में भी आपके पास कोई वो थ्रिल नज़र नहीं आ रही पिच में, कोई टर्न हुआ हो या कोई ऐसी चीज़। तो इसमें फिर एक ही प्लान है कि आपने ट्रैप करके आउट करना है, और वो यही है, ट्रैप इसी तरह बनता है जब आप रन रोकेंगे और आप कंसिस्टेंटली उसी जगह पे बॉलिंग भी करेंगे अपनी फील्डिंग के अकॉर्डिंगली, तभी फ़ायदा होगा इस बैक फील्ड का। क्योंकि अगर आप बैक फील्ड भी रखें और इधर उधर बॉलिंग भी करें तो सिंगल्स आसानी से हासिल हो जाते हैं। यहाँ पे साजिद खान का बहुत जल्दी से ओवर ख़त्म हो गया। 24 के बाद 133 पर 1 सिंध। कामरान गुलाम काफ़ी एक्टिव नज़र आए हमें, कप्तानी कर रहे हैं इस मैच में। खालिद उस्मान थोड़ा अनफिट थे मैच शुरू होने से पहले, उनकी जगह पे कामरान गुलाम ने अच्छा स्टार्ट किया बैटिंग से। तो और मौसम भी अब बेहतर है, हवा चल रही है, कंडीशंस थोड़ा कदरे आसान है फील्डिंग साइड के लिए। लेकिन क्या इतनी हवा से मदद हासिल होगी बॉलर्स को? जी हाँ, डेफिनेटली मिलती है, रिवर्स स्विंग मिलती है। और ओवर्स हम अगर देखें तो इस इनिंग्स में हो चुके हैं 24 ओवर्स हो चुके हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा बॉल सेमी न्यू है,
तो जोरदार तरीके से ड्राइव खेले, शानदार। ये कमाल का शॉट है खुर्रम मंजूर, कोई भी बॉल आउटसाइड दी ऑफ स्टंप उसको नहीं छोड़ते हैं। जोरदार तरीके से खेल के 4 रन हासिल किए। जी ऑन द ऑफ खेले और पूरी कंट्रोल से ये शॉट, अगले कदम पे अपॉर्चुनिटी मिस नहीं की खुर्रम ने। बॉल में इतनी पेस नहीं थी, लेकिन रियल पेस जो है वो खुर्रम मंजूर की तरफ से नजर आई। कमिटेड लग रहे हैं इस बार, 72 रन पर मौजूद हैं। इसे गाइड कर दिया थर्ड की जाने, फील्डर वहां मौजूद है, एक ही रन बनेगा और ये बहुत ज़रूरी है। सीजन का भी चौथा मैच है, एक सीनियर प्रो खुर्रम मंजूर जैसे हैं, उनका रन्स करना बहुत ज़रूरी है सिंध की टीम के लिए, क्योंकि स्ट्रगल करते हुए हमें नजर आए हैं। साइम अयूब की बात करते हैं यासिर, क्योंकि वही उनका ही चर्चा है पूरे पाकिस्तान में, जिधर भी बात हो रही है साइम अयूब की बात हो रही है। क्या क्या समझते हैं आप कि जिस तरीके से वो सेट होते हैं, 30-40 रन बहुत शानदार करते हैं, बहुत कमाल का अट्रैक्टिव लगते हैं, उसके बाद एक लूज शॉट, ऐसा क्या करना चाहिए एज अ बैटर? आप उनको क्या मशवरा देंगे कि इन छोटी छोटी जो कैजुअलिटीज़ हैं इनसे इज्तनाब किया जाए? इस बॉल के बाद बात करेंगे। देखिए साइम के पास जो शॉट्स हैं, जो उनकी स्लॉट में बॉल होता है वो उनसे मिस नहीं होता, बस उस पर फोकस करें। जो बाहर का बॉल है उसको छोड़ें। बाहर का बॉल अगर वो वहाँ पे हो भी शॉट खेलने के लिए, तब भी वो उस पे ना जाएं। थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, पेशेंस का मुजाहरा करना पड़ेगा और थोड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी अपनी शॉट्स की। जो स्लॉट में होगा वो तो उनका शॉट है ही है, जिस तरह बिल्कुल मुंह का बॉल है या वो जो शॉट्स खेलते हैं वही शॉट्स हैं। थोड़ी सी बॉलें ज़्यादा कंसीड करनी है। अच्छा शॉट साउथ का। या एक बार नज़र डालते हैं जिस तरीके से आज साइम अयूब सेट होकर आउट हुए, इसे क्या कहेंगे आप? कैजुअल शॉट कहेंगे? जी हाँ, ये बिल्कुल कैजुअल खेले और कोई शॉट नहीं थी, ना ये रोका इन्होंने, ना इन्होंने, इसको कह सकते हैं कन्फ्यूजन थी इनके माइंड की कि यार इसको मैं क्या करूं। तो वो वही जो उनका वो स्लॉट का बॉल ढूंढ रहे थे, थोड़ा सा दूर था तो कमिट हो गए थे कि यार यहाँ पे बॉल होगा तो मैं इसको चौका मारूंगा। थोड़ा सा बाहर था तो बल्ला वैसे ही चला गया। अच्छी फील्डिंग कप्तान कामरान गुलाम की जानिब से। डिसअपॉइंटेड होंगे साइम अयूब डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉमिस शो किया इन्होंने, बहुत। और जैसे हम पाकिस्तान में तो एक नया बैटर जब भी आता है तो हम सब उसको सर आंखों पे बिठा लेते हैं, इतनी कमी रही है यंग बैटर्स की। बाबर आजम के बाद एक तसल्ली सी हुई है कि अब जो नई लॉट आ रही है वो अच्छे फॉर्मेडेबल बैटर्स हैं, क्योंकि अब बाबर आजम उनके हीरो हैं। ओह, 139 पर 1 सिंध। रावलपिंडी का मौसम खुशगवार सा हो गया है, बहुत ही शाम के टाइम तो स्पेशली यहाँ से बहुत ठंड सी हो जाती है। आपको ड्राइव का बहुत शौक है, आपके लिए तो आइडियल मौसम है ड्राइव के लिए। वैसे किसने कह दिया आपको मुझे ड्राइव का शौक है? अक्सर देखा मैंने F7 में आपको गाड़ी पे झूमते हुए ऐसे मौसम में। चलिए वापस हम एक साइम अयूब का एक सवाल जो वापस मेरा रह गया कि साइम अयूब को क्या करना चाहिए ऐसा, ये जो बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो नेचुरल उनकी मूवमेंट है, इससे बचा जा सके? कोई फिजिकल, कोई मेंटल एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए? देखिए गलती को ध्यान में रखें और उसके बाद उसकी मेरे ख्याल से थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, शैडो प्रैक्टिस करें, विजुअलाइज करें। थोड़ा जब मैं बैटिंग के लिए जाऊंगा बाहर का बॉल नहीं छेड़ूंगा, ये इस चीज़ को डिसाइड करके, और वो बस ध्यान में रखें मैंने ये गलती नहीं करनी, सिर्फ ध्यान में होनी चाहिए गलती, तो गलती खुद ही जो एरर है वो निकल जाता है।
केयरफुल रहना चाहिए। केयरफुल रहना चाहिए। यहाँ जैसे जैसे क्रिकेट खेलते जाएंगे आई एम श्योर ये सारी चीज़ें सीखते चले जाएंगे। अभी ओह ये चांस हो सकता था लेकिन थोड़ा वाइड गया चौटले के फील्डर से। साजिद खान जब भी एक्शन में होते हैं कुछ ना कुछ तो आपको देखने को मिलता है, कुछ एंटरटेनमेंट। जी हाँ बिल्कुल, बड़ी तंदही से बॉलिंग करते हैं और बड़ी दिल लगा के बॉलिंग करते हैं। थोड़ा सा अगर मेरी लाइकिंग में अगर फ्लाइट दें तो उनको शायद टर्न मिले। बहुत फ्लैट थोड़ी सी कर रहे हैं, आई लाइन से नीचे बॉल कर रहे हैं, तो बड़ा आराम से वो लोग उसको खेल रहे हैं। इसे पुल कर दिया, फील्डर वहाँ मौजूद हैं, एक ही रन बन पाएगा। क्या फ्लाइट ना देने की ये वजह है कि क्योंकि अटैक किया है दोनों बैटर्स ने, स्पेशली खुर्रम मंजूर ने, उस वजह से थोड़ा बैकफुट पे आ गए हैं, उस तरीके से फ्लाइट दे नहीं रहे हैं। 26 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ, 141 पर 1 सिंध। साजिद खान पे काफ़ी रिलाई कर रही है इस वक्त केपी की टीम, क्योंकि इनको लंबे बॉल करने हैं और इनको सोचना पड़ेगा। एक बार फिर खुर्रम मंजूर ने मिस की लाइन, काफ़ी अपसेट लग रहे हैं अपने आप से। हमेशा ही जब भी इनको आप बैटिंग करते हुए देखेंगे अगर ये स्ट्रोक मिस करते हैं तो अपसेट हो जाते हैं, क्योंकि शायद अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत हाई सेट किए हुए हैं कि वो इसको हमेशा ही खेलेंगे ऑन साइड पे। जब वो मिस होते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट ज़ाहिरी बात होती है। काफ़ी एनिमेटेड कैरेक्टर हैं, परफॉर्मर हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। सिंध की अगर हम ग्रेट्स का नाम लेंगे तो उनमें खुर्रम मंजूर का नाम आएगा, सिंध के लिए स्पेशली। केपी को अब विकेट की तलाश है, लेकिन जिस तरीके से खुर्रम बैटिंग कर रहे हैं लगता नहीं है कि आउट होने वाले हैं। खुर्रम मंजूर की बात कर लेते हैं यासिर, आप क्रिकेट खेले होंगे साथ इनके, बहुत ही शानदार परफॉर्मर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से कंसिस्टेंटली पाकिस्तान के लिए नहीं खेल पाए। क्या इसमें फॉर्मेट का मसला है कि सही फॉर्मेट पिक नहीं किया गया इनको? या लेकिन ये जब टीम में आए थे तो इन्होंने सारी फॉर्मेट्स में रन किया था। इवन इन्होंने मुझे याद है T20 जो नेशनल T20 उसमें भी 100 भी किए थे, तो उसके बाद तो इनका मतलब किसी भी फॉर्मेट में आप इसे खिला सकते थे जब हर जगह परफॉर्म करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी अपनी अनलकी होता है यार प्लेयर, जब वो ऊपर क्लिक नहीं कर पाता या अपनी लक की बात होती है। बट इन्होंने खेला पाकिस्तान के लिए, टेस्ट क्रिकेट खेली और इस बार टेस्ट क्रिकेट खेली, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। आई गेस 50 भी किया इन्होंने, तो मे बी ये थोड़ा सा और खेल सकते थे। जो इनकी परफॉर्मेंसेस हैं और इस तरह कंसिस्टेंटली इन्होंने परफॉर्म किया। यहाँ आखिरी बार इनको हम एशिया कप में नज़र आए थे T20 फॉर्मेट में बांग्लादेश में, उसके बाद से पाकिस्तान साइड का हिस्सा नहीं रहे हैं। शायद इनका मुकाबला भी था, वो बहुत टैलेंटेड बैटर्स के साथ था, अहमद शहजाद, नासिर जमशेद, शर्जील खान, आई गेस शर्जील खान, बिल्कुल थे। हाँ जी, तो T20 में तो मेरा नहीं ख्याल ये इतने इफ़ेक्टिव शायद हों, बट लेकिन लॉन्गर वर्जन के बहुत अच्छे प्लेयर हैं। ऑन साइड पे खेलकर 2 रन्स आसानी से हासिल करेंगे। ये एक ऐसे बैटर हैं जो अपनी बैटिंग के लिए हंगरी नज़र आते हैं, वैल्यू करते हैं अपने पिच को, बैटिंग को, लंबी बैटिंग करना जानते हैं, शौक से बैटिंग करते हैं। दैट्स ट्रू, बिल्कुल सही बात है। प्राइस रखते हैं अपने विकेट की। 143 पे 1।
ये चौथा मैच है असगर को हम सिर्फ प्रैक्टिस करते हुए देख रहे हैं। बहुत लंबी बॉलिंग करते हैं, लंच इंटरवल हो, सुबह का सेशन हो, लेकिन मैच अभी तक हमें खेलते हुए नजर नहीं आया। बहुत ही शानदार लेफ्ट आर्म स्पिनर, बहुत प्रॉमिस शो किया था जब पहली बार पाकिस्तान के सर्किट में आए थे। उनके साथ फराज हैं, एक और बहुत टैलेंटेड लेफ्ट हैंड बैटर। तो टैलेंट तो सिंध से हमेशा से आता रहा है। आपको कुछ स्पेसिफिकली सिंध से ऐसा लगता हो यंगस्टर साइम अयूब के अलावा जिसमें काफ़ी प्रॉमिस हो? जी उमैर बिन यूसुफ अच्छे हैं, इनके मिड ऑर्डर में बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है। और इसके अलावा जाहिद महमूद वेरी गुड लेग स्पिनर, सऊद शकील, अबरार अब केपी के हैं बट सिंध के लिए खेल रहे हैं और वो उनकी टीम का हिस्सा हैं, बड़े अच्छे आउट भी कर रहे हैं। इस फील्डिंग हुई इस दफ़ा जो कि 1 रन का सबब बनी। आसानी से खेले थे। ये स्लॉपी वर्क है, फास्ट बॉलर पॉइंट पे खड़ा हो और ऐसा ना हो, ये मुमकिन नहीं है। एक स्लिप के साथ बॉल कर रहे हैं अब। कंडीशंस बहुत आसान है इस वक्त। से खेल दिया हवा में, 2 फील्डर्स मौजूद हैं लेकिन ये बॉल बिल्कुल उनके दरमियान से जाएगा 4 रन के लिए। खुर्रम मंजूर को अगर आप आगे बॉल करेंगे और जिस तरह की वो फॉर्म में है वो नहीं छोड़ने वाले हैं। शानदार 4 रन हासिल किए। जी हाँ बिल्कुल, साजिद खान इस वक्त बिल्कुल सूदमंद साबित नहीं हो रहे अपनी टीम के लिए। एक और फ्लैट बॉल, बड़ा इजी पिकिंग है क्योंकि आई लाइन से नीचे जब भी बॉल होगा बैट्समैन के लिए ऑफ स्पिनर का बड़ा इजी पिकिंग होगा। और ये काउ कॉर्नर में खेल के उन्होंने 4 रन हासिल किए। खुर्रम मंजूर इस वक्त पूरी तरह कंट्रोल में। ऑफ स्पिनर अगर दूसरा नहीं करता है तो राइट हैंड बैटर के लिए तो बहुत आसानी हो जाती है। अब राउंड द विकेट आए हैं, जिसे कट किया है बॉल, फील्डर मौजूद है लेकिन उनके सामने से बॉल चला जाएगा 4 रन के लिए। खुर्रम मंजूर बहुत ही शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं, बाउंड्रीज अपनी मर्जी से हासिल कर रहे हैं। एक बार फिर इजी पिकिंग खुर्रम मंजूर के लिए। पॉइंट पे कोई डीप फील्डर मौजूद नहीं था और कवर से होती हुई बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। 4 रन और हासिल किए। खुर्रम मजीद अपने पंजे घाटते हुए पिच पे। ऐसा लगा 1 सेकंड के लिए कि तारिक सईद साहब बैठे हैं मेरे साथ। बहुत खूब यासिर हमीद। कम क्या, आपकी तो बात ही कुछ और है ली। 28 ओवर्स के बाद 153 पर 1 सिंध। पाकिस्तान का परचम इस वक्त लहराते हुए शो करते हुए कि यहाँ पे मौसम कितना अच्छा है, हवा कितनी चल रही है और उतनी ही अच्छी बैटिंग खुर्रम मंजूर कर रहे हैं। इतना अच्छा मौसम, उतनी अच्छी बैटिंग। जी अब शॉट्स खेल रहे हैं सारे और ये भी एक टाइम होता है बॉलर्स के पास। सिर्फ 95 बॉलों पे 85 रन किए हैं और अपनी हर शॉट खेल रहे हैं। इनको अब बॉल अच्छा नज़र आ रहा है और यही टाइम होता है कोई गलती कराने का, क्योंकि जब 100 के करीब जाएंगे तो थोड़े से मोहतात हो जाएंगे। मज़ीद 5-10 रनों के बाद देखा एक बार फिर ऑफ स्टंप की बाहर बॉल थी और एक दफ़ा फिर अपने हैंड्स को थ्रो किया लेकिन बॉल की पेस को इतनी नहीं लगी जिसकी वजह से यहाँ थोड़ा एडजस्ट भी कर गए हैं पेस को, पिच को, और आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉलिंग कर रहे हैं। थोड़ा कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि रन्स आ रहे हैं। साहबजादा फरहान डेफिनेटली अनलकी साबित हुए जो इस पिच पे ज़्यादा रन्स नहीं कर सके। ऑलरेडी उनको स्टार्ट अच्छा मिला था लेकिन बड़ा स्कोर नहीं कर पाए। कामरान गुलाम ने भी
अच्छे 92 रन बनाए। बैटिंग के लिए शानदार पिच है ये। काफी शफल किया और गाइड कर दिया ऑन साइड पे। 2 रन तो यकीनी होंगे। जी देखें, खुर्रम मंजूर बिल्कुल ऑफ स्टंप पे आ गए थे और उन्होंने शॉट बना के खेला और मेरे ख्याल से ये एक जो है एक अलार्मिंग है केपी की बॉलिंग के लिए। जब बैट्समैन आपको इस तरह आके खेले मींस के काफी प्रेडिक्टेबल शायद हो गए बॉल अपनी लाइन और लेंथ पे। कोई स्विंग नहीं हो रहा, बिल्कुल सीधा सीधा बॉल आ रहा है और खुर्रम ने अच्छी बैटिंग की है। देखें 30वें ओवर में सिर्फ, और लास्ट मैच में अगर याद हो तो इन्होंने 50 या 70 बॉलों पे 17 रन किए थे, तो बिल्कुल अपने उसमें चले गए थे, शेल में चले गए थे। लेकिन इस इनिंग्स में ये अपनी शॉट्स खेल रहे हैं, तो अपनी शॉट्स जो है वो बैट्समैन को खेलनी चाहिए, उनको रोकने का कुछ फ़ायदा नहीं है, वो यूज़लेस हो जाती है वो चीज़। तो अभी अपनी टीम को भी अच्छी पोजीशन में ले गए, अभी 5 की एवरेज से रन्स हैं इनके और सारी शॉट्स भी खेल रहे हैं। बैटिंग अभी काफ़ी आनी है सिंध के लिए। फवाद आलम, साद खान, उमैर बिन यूसुफ, मोहम्मद उमर, आसिफ महमूद दोनों बैटिंग कर सकते हैं। हसन विकेट कीपर राइट साइड पे, आज अच्छा दिन नहीं रहा है, तो उसे 3 कैचेस ऐसे रहे जो इनको शायद अटेम्प्ट करनी चाहिए थी अपनी राइट पे। पहला मैच खेल रहे हैं, सरफराज को रिप्लेस किया है। एक बड़ी इनिंग इनसे भी ड्यू है, साउथ शकील से। यकीनन तीसरा मैच खेल रही है सिंध की टीम यहाँ पे और सारा जो एडवांटेज है उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं। ओवर इख्तिताम पजीर हुआ 156 for 1। जी हाँ, केपी की मैनेजमेंट रिफतुल्लाह मोहम्मद और जाहिद सईद जो कि मैनेजर हैं और यकीनन सोच रहे होंगे कि जो प्लान किया था वो चीज़ नहीं हो रही। बैकफुट पे चली गई केपी की टीम। खुर्रम मंजूर की एग्रेसिव बैटिंग की वजह से, पॉजिटिव इंटेंट की वजह से और स्ट्रोक प्ले की वजह से बहुत ही अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। अगर केपी की टीम को कोई वापस लेके आ सकता है तो वो साजिद खान है। इनको अपनी यूटिलाइज करना पड़ेगा अपने आप को और थोड़ा सा अगर ऑफ स्टंप से करें बॉल, क्योंकि ऑफ स्पिनर हैं, बीच से बॉल करेंगे तो उनको इजी है उसको मैनेज करना। थोड़े तेज कर रहे हैं, ट्रेजेक्टरी भी लो है, फ्लाइट बिल्कुल नहीं दी इन्होंने। जब से एटलीस्ट मैं देख रहा हूँ इनको इस सेशन में बिल्कुल फ्लैट बॉलिंग की है। शायद वो लेग बिफोर का चांस ले रहे हैं अली। या ये शायद रन सेविंग बॉलिंग ज़्यादा है रादर देन अटैकिंग आउट करने वाली बॉलिंग से, क्योंकि 5.26 की रन रेट से बैटिंग हो रही है। लेकिन मसला ये है कि रन्स भी उस तरीके से सेव नहीं हो रहे हैं। आसानी से 1-2 तो हासिल कर रहे हैं दोनों बैटर्स। तो शायद वापस प्लान ए पे जाने की ज़रूरत है, थोड़ा अटैक करने की ज़रूरत है, थोड़ा एयर देने की ज़रूरत है बॉल को। देखिए एक बार फिर फ्लैट बॉलिंग है जिसे आसानी से कट किया है। यहाँ पे ये इंतज़ार कर रहे हैं कि बैटर ही कोई गलती करे तो करे।
हमसे मत उम्मीद रखिए। जी हाँ, एक तो वो गलती नहीं कर रहे और दूसरा कोई चांस जब निकलेगा तो उसको अवेल करना पड़ेगा इन्हें, जिस तरह कोई अच्छा कैच स्लिप में या सिली मिड ऑन पे। 157 पे एक। ग्यारह रन दूर हैं खुर्रम मंजूर एक शानदार सेंचुरी से, और हम चाहेंगे कि अपने 3 फिगर्स तो ये कंप्लीट करें, क्योंकि मैच के लिए बहुत शानदार है, पूरे टूर्नामेंट के लिए भी शायद। कब तक एक बैटर सब्र करता है यासिर, जब ऐसी फील्ड सेट हो? फ्रस्ट्रेशन तो डेफिनेटली होती है क्योंकि रन्स आ रहे हैं, और एकदम से जब ऐसी फील्ड सेट हो जाए तो क्या करना चाहिए बैटर को? देखिए, उनके लिए ऑलवेज एक रन तो मौजूद है। अगर कट खिलाते हैं वो, तो कट का ही वेट करना चाहिए, और जो बॉल आगे करे वो अच्छी तरह टाइम हो, अगर गैप में लगे तो 4 रन है। तो मेरे ख्याल से इसमें कोई एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है नहीं। तो जो फील्ड सेट है उसके हिसाब से तो ये इसी तरह होना चाहिए जो बात की मैंने आपसे। और ये 1 रन। या कवर का फील्डर सर्कल से बाहर से है तो सिंगल तो हमेशा अवेलेबल है, जब भी बॉल उधर जाएगा सिंगल तो होगा, क्योंकि ना वो फील्डर कैचिंग पोजीशन पे है ना रन सेविंग पोजीशन पे है। तो अग्री करेंगे आप केपी के इन टैक्टिक्स से, क्योंकि रन सेविंग के, क्या रन्स बचाने से मैच बच सकेगा? क्योंकि मैच तो तभी बचेगा जब विकेट्स हासिल होंगी। जी बिल्कुल, किसी न किसी बॉलर को कुछ स्पेशल करना पड़ेगा यहाँ पे, उसके अलावा कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। बॉलर्स भी थकते जा रहे हैं, लेकिन किसी एक को, हाँ इनके पास एक बॉलर ऐसा है जो कि मैन विद द गोल्डन नाम है, सरवर आफरीदी। सरवर आफरीदी एक ऐसे बॉलर हैं कि जब भी उनके हाथ में बॉल हुआ है, जब भी कप्तान ने उनको बॉल दी, उन्होंने विकेट ज़रूर ली है। जी देखा हमने नेशनल T20 में एग्जांपल है, लेकिन वो जो बॉलिंग थी वो सर्कल के अंदर बॉल करते थे, नया बॉल करते थे। क्या सेमी न्यू बॉल से भी उतनी इफेक्टिव होंगे ये? शायद एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है अगर वो 100% फिट हैं, फील्डिंग में जरूर मौजूद है। ये शानदार ड्राइव है, कमाल का ड्राइव खेले हैं साउथ शकील, पिक्चर परफेक्ट, 4 रन हासिल करेंगे। जी खूबसूरत शॉट, क्लासिक शॉट, क्लास शो की यहाँ पे सऊद ने अपनी, आगे गिरा हुआ बॉल और बहुत ही खूबसूरत शॉट। बिल्कुल सही बात की आपने, पिक्चर परफेक्ट, हाई एल्बो, हेड स्ट्रेट। मुश्किलात काफ़ी बढ़ गई हैं। अरशद ने 11 ओवर में 59 रन दे दिए हैं, बहुत महंगे साबित हुए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा सुनने को मिला था हमें इन 2 बॉलर्स के बारे में। एक को तो हमने देख लिया था पहले, लेकिन इनके बारे में भी बहुत कुछ सुना था, लेकिन उस तरीके से इफ़ेक्टिव नहीं हुए। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाया है, इनकन्सिस्टेंट रहे अपनी लाइन और लेंथ में, और उतना ही अच्छा खेला गया है खुर्रम और साइम की जानिब से। 43 बॉलों पे 42 रन बनाए थे साइम अयूब ने, तो आप समझ सकते हैं कि इनिंग के स्टार्ट से ही कितनी अथॉरिटी दिखाई है इस सिंध साइड ने। ये देखिए, पिक्चर परफेक्ट की आपने बात की थी, स्ट्रेट बैट, हाई एल्बो, हेड पोजीशन परफेक्ट, फुटवर्क परफेक्ट। एक 162 पर 1 सिंध।
Manzoor nearing another 100 in first class cricket. This has come in double quick time. 90 of 107 deliveries. Sindh run rate is still up above 5 runs after tea. The game has moved along very quickly on this day too. Into the final session. Alongside me in the comm box is Ijaz Ahmed. Good evening, Ijaz. Thank you very much, Faisal. Good evening everyone. Hope you're enjoying this wonderful batting. Is in 32nd over, 163. Really a good call, like in terms of run rate. Sajid has wheeled away from the pavilion end into his 10th over. He's been able to put brakes on scoring compared to the other KP bowlers. Just pushing through. This has been the hallmark of this Sindh side. They have batted well. Khurram has been the leading scorer so far in this inning. And with this, Sajid Khan's quick over has been bowled. 32 gone, 163 for 1. Pretty relaxed Sindh changing room. They toiled hard, but this quick fire reply has really thrown this game wide open. KP was expected to make inroads. For once, the Sindh bowlers can put their feet up. I'm sure they've had their lunch. Just the rest. That's what they need. Back-to-back games has really taken toll on these bowlers. On the up, smashed away through the covers for 4 runs. Well, this is beauty of this Khurram Manzoor's batting or inning, I must say, that he has just caught the gaps in a perfect manner. Beautiful execution, excellent into the gap. Standing up tall, putting that front foot down and finding the gap to perfection. Still a little bit of room to free his arms, but he threw the kitchen sink. He really spanked it away. Arshadullah going at almost 6 and over. Didn't create much impression, and definitely that question was asked earlier. Why Arshad Iqbal is not in this playing 11. Irfanullah Shah, who we've seen bowl terrifically well on similar pitches, he was also left out. But definitely Arshadullah is under a lot of pressure to perform to keep his place in the side. Sajid Shah and Adil Amin. Once again spanked away down the ground for another boundary. Khurram Manzoor dealing in 4s. Excellent. This is really clean hitting. 99. Khurram, before this he has scored 30 times. 100 putt. Look at the beauty. How firmly he's hitting. Watching the ball and earning runs. To stand and deliver. Khurram Manzoor is in that kind of mood. That early burst really
freed him up, and since that he's played with that freedom throughout his innings. Wasn't much from KP to make him change his gears. He's batted in top gear all the way. Oh, that lucky inside edge will earn him a boundary. Probably not his best stroke, but he's earned his luck. And that celebration shows how much this innings means to him. And that peculiar celebration, we'll ask him what it means. But that smile is just precious. Well played, Khurram Manzoor. Yes, excellent. This is really a wonderful inning. And playing a big part here for his team. Really a big thank, because 103 and 112 deliveries. Excellent batting. Strike rate has been massive. And the confidence he has got with his century will take him up to the skies. He will surely fly high. 3 boundaries in the overs. So nothing nervous about the 90s for him. 103, and look at that strike rate. Almost 92. 15 hits to the boundary. Most of them came right off the middle of the bat. Taking the applause from the opposition as well. Very sporting, Khyber Pakhtunkhwa. They acknowledge that Khurram Manzoor has played really well. Maybe time to take a deep breath. Just restart his innings. Make it a real big one. That leave would suggest that his mind is already set on the next target. Yes, exactly. Positive steps. What we witnessed here in this innings. That he has just been settling down. And there was some sort of pressure of the pacers that might be thinking that those pacers, the tall pacers, would surely make an impact. But he has responded well, making this 103 in a best way. Well, good delivery to finish the over. That's the moment how he got his 100. Like I said, not his best strokes. Just celebration. What does that mean, Ijaz? Any clue? I think he's been impressed with one of the movie actor. Really wonderful. This is brilliant. 175 in 33 overs with 1 wicket down. Well, we can look forward. Sajid Khan going through his overs quickly. So he's not allowing the batter to settle down. Sometimes it happens that a batter has been taking his guard and he's approaching to him. What it happens that batter has been thinking, what next I should be planning? And he's up against to bowl him. He's just making dot deliveries. But I think so that over here at this stage, Saud and Khurram, they have put on a good partnership. They've been looking forward, positive. Not allowing any sort of thing here to the bowlers, to the fielders. Their calling has been positive. They are picking up the spots. Goes through his overs pretty quickly. I'm sure the fast bowlers at the other end, they don't enjoy this because they get very little time to recover between the overs. That's Sajid Khan, his own peculiar ways. Overdone. Literally 75 or 80 seconds, all it took. 175 for 1. .384
what has been put on by KP. 148 by Sarwar Afridi, and same sort of reply from Khurram Manzoor, still there at 103. That's Khurram Manzoor's 100. Set the Pindi Stadium ablaze with his stroke play. Belligerent against spin. Good use of the crease. Anytime the width was offered, he's prepared to take the challenge. Go for those big drives. Most of them came off the middle of the bat. Richly deserved. And that's back live. Sweeper will come in and just prevent the boundary. But Ijaz talking about the 100 of Khurram Manzoor as we see those final two drives. The last one wasn't off the middle of the bat. 3100, and he's been around. What a magnificent career for this experienced man. Yes, a big name, and really this has been a superb effort. The highlight for the newspapers for tomorrow. Khurram Manzoor touching his 31st century in first class. Over 11,000 runs. That has been a massive, really a wonderful first class test cricketer. He has produced the beauties in the past for Pakistan as well as for his Sindh region. But overall, really a good opener. And his inning is reflecting the balls he has faced and the runs scored here. Yeah, this partnership is now 93, and Saud's contribution is only 24. For Wad Alam, not even padded up. Umar bin Yusuf on the back row is ready. He will come out at number 4. Like I said, finally a chance for the bowlers to put their feet up. Last time around here, the team got dismissed very quickly inside 50 overs. So not much of a break from back-to-back tough schedule for these bowlers. Definitely enjoying that moment where they see their batters dominating. They would want them to play for most of tomorrow as well and see where this game goes and put KP under pressure. Yes, exactly. Second day today. The third will be coming up. And the way we're watching here, witnessing here, the Sindh's batting, really, they are the top order players. They are performing well. They are making all of their efforts, as Saud is also looking good, though that he's almost on to the 50% the strike rate. Courtesy this Khurram's inning made them so easy for Sindh. Wait on was the call. One thing with this Pindi Cricket Stadium pitch has been that in the previous rounds as well, any help that's there is generally with the new ball other than that first day. Because of this lush green outfield and a lush green square, we don't see much reverse here, although Imran is a very good exponent of reverse swing, but we haven't seen. Look at that square, almost going right across your picture, but there's not many abrasive surfaces. The outfield also in good nick. The Kookaburra is also not famous for that reverse swing, as we see one fielder coming across from that offside onto mid-wicket. Probably this is where Imran would like to see if he can get some swing back into the right-hander. Out of all three games, this has been the pitch where we've seen where the batters are most comfortable driving on the up. Yes, exactly. The bounce has been even all the times. Look at that, beauty. Behind the ball, just driving through, getting the momentum, being a batter. And I think so, you're right. It's really a good one. There is something for the bowlers like earlier on in the early session. 1 hour, 1.5 hours. And after that, this has been so easy for the batters to bat, dictate their terms. Courtesy, look at that, 104 in 118 deliveries for Khurram Manzoor. And, rather the KP batters, the middle order, they did enjoy batting here.
Once again, timing has been superb. That bounce that Ajaz was talking about is so even that the batters, when they're set, they really enjoy that bounce. You can see plenty of back foot play. This was another gorgeous stroke, just straight to the fielder on that occasion. .177 for 1. There you see, 104 runs in 119. Khurram started well, still there. Giving a good hand to Saud Shakil, though that time batted well in his 42. Almost run a ball. The much awaited arrival of Sarwar Afridi, the man with the golden arm. He's known to break partnerships. He's slower in the air. He will make the batters wait more and see if he can induce that error where the batters just go for their stroke a bit early. Just the 6 wickets in the first class game. Also, Ajaz, very noticeable that KP didn't get the ball to swing at all with the new ball. Yes, you're right. And I think so that the timing, that has been the key. Sun was there, not earlier on. There you go, they're packing towards offside, one slip and a gully, extra cover mid off, then back foot point, sort of cover fielder in the circle, and he's just trying to break that trap there. So there's a very fluent driver through the offside. We noticed that he does like to go for those deliveries. Slip in a gully and that short cover, regulation, short extra cover rather, regulation cover and an extra cover just hanging back a little bit. It's pretty clear that Sarwar wants to bowl on one side of the pitch. Just the 2 fielders on the onside. A fine leg and a mid-on. 7-2 field. There you go, the 2 fielders in your picture. Fine leg and mid-on. Huge gaps there. That should tell Saud that Sarwar would look to ball outside the off stump. Waited for it nicely. Just a single though. Yes, and that Sarwar's medium pace should be more accurate, because everyone is here. They're waiting for any sort of wicket. The bowlers, the fielders, they're trying to keep changing the bowlers. And Sarwar has been brought in. And that's not express, but there is some sort of thing that might be. They can change the pace, might be a bit more accuracy. There you go, towards offside. They're changing for the right-hander. Khurram, gully, short extra, some covers, 7 sort of fielders. 7-2 field and Khurram Manzoor manipulating it very nicely. Big chase there for the big fast bowler Arshadullah. Khurram won't allow Sarwar Afridi to bowl to him like that. He will make the play. It's good tactics from the experienced man. Yes, exactly, Faisal, because Khurram is really experienced. And look at that, he knew that there is gap towards onside. He just walked towards offside and just making that shot, earning runs. Left hand, right hand combination is really giving headaches to Kamran Ghulam, the KP skipper. Chasing a wide one. Rehan Afridi went up immediately, but nothing from Sarwar. 181 for 1. Well, there is some sort of action or drama that fielders try to generate and create here, but the bowler was quiet
He was not appealing for that because he knew that the bat might be hitting the surface. And there you go, Khalid Mahmood Senior once again spot on. Slip has disappeared as well. Belligerent stroke from Khurram Manzoor. He's really in the groove. He's not allowing any bowler to dictate terms to him. Yes, exactly. He's batting tremendously well. There is nothing unorthodox for him because he's batting superbly, no risk. And look at that, he's so easy in taking those runs after making those kind of confident shots. Playing a bit of the chat. But you're doing good. He's a professor by profession. He's never short of a word. And he got hold of you, Ijaz, in the morning. He's giving you a lecture. Found the gap, but the sweeper is there. Now KP clearly is looking to stem the flow of runs. He's trying to bowl one side of the wicket and stop that flow of boundaries. Yes, exactly. Sometimes being a bowler, you need to attack onto both batters. But if one is batting well, you need to irritate the other one because the batting has been so easy. If one batter is scoring runs, the other is just keeping quiet and saving one end. So I think that there should be something extraordinary that you need to block the runs. Saud Shakil as Khurram is more than 100 runs and can create some drama here. Probably this should rank as one of Khurram Manzoor's very good knocks. Right up there, maybe. We'll ask him that question because the way he's striking the ball, almost everything is coming out of the middle of the bat. This man couldn't get to his 100, but he played equally well. Put his team in a good position. That's why despite this start, I think KP is still in the game. Just a couple of quick wickets and things can turn very quickly. Yes, you're right. Foundation was not that solid, but they capitalized beautifully. Imran doesn't have the pace that he used to have. But still, that bouncer had a little element of surprise. And Khurram, who was planting that front foot and bludgeoning everything, just had to be a bit watchful there. Yes, exactly. He's been really watchful because at such stage you have scored 100. The batter might go after such kind of hook and pull shots. Can make mistakes because he knew that he's been so confident, watching the ball so easily. But these are the times when a good batter can make mistake. Miscue went up into the sky. So I think it's a good test. Imran's thinking is good. That might be any one of them can play a rash shot up into the sky and then they can get a wicket. Saud, on the other hand, is prepared to dig deep. As long as Khurram is there, the partnership's working well for Sindh. Yes, partnerships really productive. Would it see from KP, then now these two, Khurram and Saud. And I think so that rather than Khurram, they should try on Saud because he's a sort of player that can go flashy towards offside in terms of temperament.
Point fielder is hanging a bit back. Imran is looking frustrated. 185 for one. And it's time for drinks here at the Pindi Cricket Stadium. मैच जो है बराबर का चल रहा है। 384 रन्स केपी ने पहली इनिंग में बनाए और जवाब में शानदार 185 रन पर सिर्फ एक विकेट गंवाई है सिंध की साइड ने। खुर्रम मंजूर ने शानदार 109 रन और अभी आउट नहीं हुए। ट्रेल जो है वो 199 रन की है। और आज के दिन की सबसे ख़ास बात जो रही वो खुर्रम मंजूर की एक शानदार सेंचुरी थी, जिसमें बहुत शानदार ड्राइव्स, स्पिनर को भी उतने ही शानदार तरीके से, साजिद खान को तो सेटल होने ही नहीं दिया गया। दोनों तरफ ग्राउंड के शॉट्स मारते हुए नजर आए और अथॉरिटी से जिस तरीके से खुर्रम मंजूर ने बैटिंग की है, ऐसा लगा जैसे जवानी वाले खुर्रम मंजूर वापस आ गए हैं। बहुत ही कमाल की बैटिंग का, थोड़ी किस्मत ने भी साथ दिया और शानदार सेंचुरी स्कोर की और अपनी एक ख़ास किस्म की सेलिब्रेशन। सुबह इनसे ज़रूर पूछेंगे कि इस सेलिब्रेशन के पीछे क्या राज हो सकता है। यासर हमीद से पूछते हैं शायद इस सेलिब्रेशन के पीछे क्या राज होगा।
डोंट नो, मे बी किसी को अपने फेवरेट किसी एक्टर की इन्होंने कॉपी की हो शायद, बट ओवरऑल बहुत आला खेले, अच्छी इनिंग्स, स्ट्राइक रेट भी अच्छा, जिसकी वजह से इनकी टीम इस वक्त बड़ी ही मजबूत पोजीशन में है। 37 ओवर्स में 185 रन कर चुके हैं, 5 के ऊपर की एवरेज है, खेल रहे हैं, पूरे 5 की एवरेज है। आगे से ये बहुत फ़ायदा हो जाएगा इन्हें, जो अभी ट्रेल है इनको 199 रन की है सिंध की टीम को, तो मे बी ये शायद लीड लेके और मैच अदर वे राउंड भी हो सकता है, जो केपी ने सोचा नहीं था तो वो भी हो सकता है। एक और सेंचुरियन, पहले बल्ले से जिम्मेदारी निभाई और अब बॉलिंग से जिम्मेदारी निभा रहे हैं सरवर आफरीदी, शानदार सेंचुरी स्कोर की। और प्लान आप देख सकते हैं, फील्ड ऑफ साइड पैक्ड है, 7 फील्डर्स हैं ऑफ साइड पे, और ये अब से नहीं, ये काफ़ी देर से सिलसिला चल रहा है। केपी इसी प्लान पे चल रहे हैं कि एक साइड पैक की जाए, फोर्स किया जाए गलती करने पे, लेकिन अभी तक गलती की नहीं है। दोनों बहुत ही शानदार तरीके से खेल रहे हैं। जी हाँ, प्लस पिच जो है वो काफ़ी अच्छी है बैटिंग के लिए। ये देखें पीछे इनकी बैटिंग भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। उमर बिन यूसुफ, उन्होंने पिछले मैच में सेंचुरी स्कोर की, फिर फवाद आलम ने पहले मैच में सेंचुरी स्कोर की, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइन है। और जो आप बात कर रहे हैं कि जो केपी का प्लान है वो उस तरह एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, उसकी वजह पिच भी है, थोड़ा सा बॉल बड़ा काफ़ी टाइम मिल रहा है, स्लो पिच है, जिसकी वजह से अब देखें ये शॉट जो उन्होंने खेले काफ़ी दूर से था, अगर पिच में थोड़ा बहुत जान होती तो वो स्लिप की तरफ जा सकते, लेकिन पिच काफ़ी बैटिंग है। यहाँ स्लो से स्लो होता चला जाता है ये पिच। बहुत कुछ एक्सपेक्टेड था साजिद खान से, हमें लगा था शायद कि वो काफ़ी कुछ करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यहाँ वाइड बॉल का इशारा किया, ये नुकसान तो होगा, क्योंकि आप जब ऑफ स्टम्प पैक करेंगे तो बॉलर की भी कोशिश होगी आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प बॉल की जाए, और करने में आप ज़्यादा बाहर भी जा सकते हैं। क्या ये थोड़ा हार्श था? क्योंकि प्रेडिक्टेबली नेगेटिव बॉलिंग कर रहे हैं आउटसाइड दी ऑफ स्टम्प, और थोड़ा सा बाहर गया तो फिर अंपायर को ये लगा शायद कि ये भी शायद नहीं, लेकिन इस बार हाथ फैलाने की बजाय हाथ बांध दिए उन्होंने। सीरीज हो गए इस बार। खालिद महमूद, अच्छी अंपायरिंग की इन्होंने पिछले मैच में भी, और इस मैच में भी बहुत अच्छी अंपायरिंग कर रहे हैं। सऊद शकील जो कि 27 पे खड़े हैं इस वक्त, और शॉट सीधा फील्डर के हाथ में। यासिर, एज अ बैटर अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली इनिंग का 200 या दूसरी इनिंग का 100 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है एज अ बैटर? सेटिस्फाइड क्या किससे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फोर्थ इनिंग 100 हो या पहली इनिंग का 200 हो? 200 इज़ ऑलवेज स्पेशल, क्योंकि 200 जो है आप अपने करियर में इतनी बार नहीं कर पाते। सेंचुरियाँ तो चले आप कर ही लेते हैं, चौथी इनिंग की सेंचुरी, लेकिन वो डिपेंड करता है आप चौथी इनिंग में सेंचुरी के मैच जिताएं तो वो ऑब्वियसली वो स्पेशल होगी। अगर मैच जिताया हो सेंचुरी ने तो फिर दोनों में से चूज़ करना हो फिर सेंचुरी डेफिनेटली। समा मैच विनिंग इनिंग होनी चाहिए, मुझे यही लगता है कि आप 200 करें पहली इनिंग में या 100 करें चौथी इनिंग में। जैसे उमर बिन यूसुफ ने सेंचुरी की, आई थिंक वो बहुत स्पेशल थी। आखिरी मैच में भी आपने उनका जिक्र किया, मैच नहीं जिता पाए लेकिन काफ़ी करीब ले आए थे जीत के। जी हाँ बिल्कुल, वहाँ पे उन्होंने बस आखिर में आके थोड़ा सा लूज़ कर गए, अपने ऊपर नहीं ले सके। अगर थोड़ा सा और अपने ऊपर लेते तो शायद वो मैच फिनिश भी कर सकते थे। 15 ओवरों में मेरे ख्याल से कोई 70 रन थे या 75, डूएबल है। ओवर अख्ताम पजीर हुआ 186 पे। यहाँ पे भी काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग गुफ्तगू चल रही है कि जितने गौर से हसन और उमर बिन यूसुफ फवाद आलम की बात सुन रहे हैं, शायद उनके अगले ड्रामे का स्क्रिप्ट भी हो सकता है, क्योंकि एक्टिंग करते हुए नजर आते हैं हमें फवाद आलम। हाँ जी बिल्कुल, अब अपने आप को एक्टिंग में एक्सप्रेस करते हैं। उनके कोई ड्रामा भी आया था, कोई एपिसोड मैंने नहीं देखी लेकिन एक ट्रेलर देखा था, फिर उसके बाद फ़ौरन टीम में आ गई है फिर उनकी बैटिंग हमने देखी,
आपको कभी ऑफर हुई किसी सीरियल में आने की? नहीं कभी शौक हुआ आपको? नहीं, बिल्कुल एक्टिंग तो मुझे बिल्कुल नहीं आती। क्योंकि देखने में तो आप माशाल्लाह बहुत हसीन है, तो मुझे लगा शायद आपको ऑफर तो हुई होगी। देखने में तो आप भी हीरो लगते हैं अली, जिस तरह बॉडी आपने बनाई हुई है माशाल्लाह, और जो मसल्स हैं आपके, बिल्कुल हीरोज़ वाले हैं, जो आजकल जो पंजाबी फिल्मों के नहीं होते, जो कंटेम्प्रेरी पंजाबी फिल्म्स हैं। क्रिकेट में बात करते हैं यासिर। इमरान खान सीनियर वापस आ गए हैं। 7 ओवर्स में 21 रन दिए। यहाँ पे विकेट की तलाश है, कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, ये कामरान गुलाम को सोचना होगा, प्लान करना होगा। क्या खुरम तो लाजवाब तरीके से खेल रहे हैं। पिच आप अगर बॉल हो इतनी ज़ोर से मारते हैं कि इवन जो फील्डर करीब में खड़ा है उसको भी ज़ख्मी कर दिया है। कामरान गुलाम है या साहबजादा फरहान है? जी नहीं, खालिद उस्मान है जो कि हाथ पे लगी और फिर जॉ पे लगी, ये बड़ा ही उफ, यहाँ पे जब बॉल लगती है तो पूरे कान में और सर में, पूरे इस एरिया में दर्द होता है। होपफुली विल बी फाइन। ऑकवर्ड बॉल्स हुआ, थोड़ा हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं इस मोमेंट को सारे प्लेयर्स। देखिए अपने आप को बिल्कुल थ्रो किया उन्होंने। कमिटमेंट तो कमाल की निभाई है। खालिद उस्मान इस मैच में अनफिट हो गए थे मैच शुरू होने से पहले, इससे पहले कप्तानी करते नजर आए हमें। नासिर हुसैन फौरन से पहुंच गए, ये क्वालिटी है नासिर हुसैन की, इन्वॉल्व रहते हैं, अच्छे अंपायरों में शुमार होता है इनका। साजिद खान इनिंग जब शुरू हुई थी और आज के अभी के साजिद खान में बहुत फ़र्क है। काफ़ी हमें हल्ला गुला करते नजर आए, काफ़ी लाउड थे साजिद खान, लेकिन अब जो जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है, जिस अथॉरिटी से सिंध के बैटर्स बैटिंग कर रहे हैं, खामोश से हो गए हैं सिंध के फील्डिंग साइड। ऐसी सिचुएशन में अब केपी जो है वो किसी मिरेकल का इंतज़ार कर रही है। असल में कोई हो जाए इस तरह के, कोई ऐसा बॉल हो जाए, कोई ऐसी शॉट मार दें, इनको 2-3 विकेट्स मिल जाएं, वही चीज़ इनको मैच में ला सकती है। अदरवाइज़ तो जिस तरह खेल रहे हैं आई गेस पूरी तरह। या इमरान खान सीनियर में वो पोटेंशियल है, क्योंकि उनकी लेंथ ऐसी है जिस पे बैटर डाउटफुल हो सकते हैं, अनसर्टन हो सकते हैं। वो जो 5 मीटर एरिया हम जिसे कहते हैं, जो बैटर के फ्रंट फुट के सामने होता है, उस पे बॉल ज़्यादा करने होंगे। और इनमें वो अहलियत है कि कंसिस्टेंटली वहाँ बॉल कर सकते हैं। जी हाँ खालिद, कैप्टन को कैप्टन ने रिप्लेस किया है। खालिद उस्मान मिड ऑफ पे खड़े हैं और अभी अभी एक ज़ोरदार हिट से उनको हाथ पे लगी थी। लेकिन दाद देनी होगी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की यहाँ पे। खालिद उस्मान को ऐसा लगा जब मैच शुरू होने वाला था कि 2 स्पिनर्स की गुंजाइश नहीं होगी शायद, तो उन्होंने बिल्कुल हिचकिचाए नहीं, उन्होंने कहा मैं बाहर बैठता हूँ, क्योंकि साजिद जो हैं वो फ्रंट लाइन बॉलर हैं, उनको खेलना चाहिए। यही कामयाबी का राज है केपी के पूरे रीजन की अगर हम बात करें। जी ये चीज़ है इनमें, और ये शुरू से है, सेक्रीफाइस वाला जो चीज़ है शुरू से इनमें है, तो यही चीज़ इनको कैप्टन तक पहुंचा गई कि क्वालिटी होती है एक इंसान की, एक प्लेयर की, कि वो अगर 2 की बात आई तो अपने आप को सेक्रीफाइस किया। लेकिन स्पिनर्स का काम था इसमें, 3 फास्ट बॉलर्स की जगह अगर 2 स्पिनर्स होते, 2 फास्ट बॉलर होते, तो आपका क्या ख्याल है? देखिए लंबी बॉलिंग करनी है, और ऐसी विकेट जब आप कप्तान शुरू ग्राउंड में आते हैं तो घास नज़र आता है, ये तो बाद में पता चलता है कि पिच स्लो होती चली, लेकिन अगर कोई टीम पहली बार यहाँ पे आएगी, घास देखेगी, तो वो नेशनली 3 फास्ट बॉलर्स तो खिलाएगी। लेकिन खालिद उस्मान की अगर हम बात करें, ये ज़्यादातर ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, बैटिंग भी शानदार करते हैं,
और 6 विकेट्स हासिल की थी आखिरी मैच में। उस फॉर्म को मद्देनज़र रखते हुए हम अगर बैटर भी एक शॉट कर लेते और खालिद उस्मान को खिला लेते तो वो भी अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता था। स्पेशली जिस तरह की टेल हमने केपी की नज़र आई हमें, तो अगर इसकी एडिशन हो जाते तो बेहतर हो सकता था, कॉम्बिनेशन टीम का बैलेंस बेहतर हो सकता था। या बिल्कुल, शायद ये बात अब जो केपी की मैनेजमेंट है वो भी शायद सोच रही हो कि यार ऐसा कर लेते हम तो बेहतर हो सकता था, क्योंकि खालिद एक अच्छे बॉलर भी हैं, बड़ी टाइट लाइन एंड लेंथ से बॉल करते हैं और वो फोर्स करते हैं बैट्समैन को कि उन पे रन्स करें, इजी रन्स नहीं देते। लेकिन इमरान खान सीनियर इस वक्त उन पे भी जिम्मेवारी है विकेट्स की, क्योंकि सीनियर बॉलर हैं और काफ़ी सीजन कैंपेनर हैं। जैसे अरशद इकबाल की हमने बात की, वो बाहर बैठे हुए हैं, बहुत टैलेंटेड बॉलर हैं वो भी। या आदिल अमीन ऑलराउंड क्रिकेटर हैं, ऑफ स्पिन करते हैं, बैटर भी हैं। ऑप्शंस तो बहुत शानदार हैं जो रिज़र्व प्लेयर्स में हैं। इरफान उल्लाह शाह, ये 4 ऐसे प्लेयर हैं जो रिज़र्व हैं, इस मैच में शामिल नहीं है। काफ़ी बेंच स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है केपी की। ये अच्छी लाइन है, यहाँ पे करें, थोड़ी ज़ोर से करें ताकि अगर थोड़ा सा मिस टाइम हो तो स्लिप की तरफ जा सके। 39 ओवर्स के बाद 187 पे 1। शायद एक बॉल रहता है अभी। जिन्हें काफ़ी लेट फैसला किया नासिर हुसैन ने कि ओवर हो गया, शायद स्कोरर के साथ दोबारा चेक किया गया। काबीरू हॉक और काइट, मुझे तो ये सब एक जैसे लगते हैं, हॉक, काइट, शाहीन। मैं उनसे डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया, मुझे सभी बहुत ख़तरनाक लगते हैं। लेकिन इस वक्त ये बहुत सुकून में हैं, बहुत इत्मीनान से हैं, खाना शाना खा के बैठे हुए हैं। तसल्ली बख्श। फ्लैट बॉलिंग जारी है साजिद खान की जानिब से, सीख नहीं रहे हैं। एक्चुअली फ्लाइट देते हुए ये इनको शायद ये इस चीज़ से डर रहे हैं कि उसमें टाइम बहुत मिलेगा और उसमें थोड़ी सी लाइन आगे पीछे होगी तो पक्का चौका है, इसलिए थोड़ा सा टाइट लाइन रखी हुई है। इस बार स्वीप किया खुरम ने, तेज़ तेज़ कर रहे हैं, तो तेज़ तेज़ करने का अब एक ही मकसद हो सकता है, तो टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि रन्स ना बने उन्हें। इस बार थोड़ा सा मिडिल लेग पे गया बॉल और इजीली उनको मैनेज किया। जहाँ जब आप अपनी सारी फील्डिंग लेग साइड पे सेट करेंगे तो एक नेचुरल होता है बॉलर का कि वो लेग साइड की तरफ जाता है, क्योंकि फील्ड के अकॉर्डिंगली बॉल करता है। और जैसे आपने कहा कि टाइट लाइन और लेंथ, वो अपनी फील्ड के अकॉर्डिंगली बॉल कर रहे हैं। लेकिन शायद अगर एक फील्डर उठा के ऑफ साइड पर ले आएँ और थोड़ा चांस लिया जाए, हवा दी जाए आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। जी हाँ बिल्कुल, और यही एक तरीका है विकेट्स लेने का। उनको इनवाइट करें, ठीक है, मिड ऑफ मिड ऑन ऊपर रखें, आप इनवाइट करें, ऊपर से मारें वो, ये बेटर है। थोड़ा सा और फ्लाइट दें, जो आई लाइन है इससे ऊपर होना चाहिए बॉल स्पिनर का, ताकि उनकी बैट्समैन की जो आईज है ऊपर नीचे हो उसमें वो गलती करेगा। क्योंकि मसला उनको ये है कि पिच से ज़्यादा मदद हासिल हो नहीं रही है, स्पिन बॉल हो नहीं रहा है, बाउंस भी बॉल हो नहीं रहा है। तो जो वाहिद जो चांस है वो यही है कि फ़्लाइट में रिसीव किया जाए, जैसे बरार ने किया, फ़्लाइट में रिसीव किया। लेकिन ऐसा मूड कोई साजिद से नज़र नहीं आ रहा है। साजिद खान खुद भी एक फ्लाइटेड डिलीवरी पे आउट हुए थे, अबरार से निकल के मारी थी, तो शायद ऐसा ही कुछ उनको बैटिंग में बॉलिंग में भी करना होगा।
क्योंकि चुप से लग गई है। 40 ओवर्स मुकम्मल हुए, 188 पर 1 सिंध। अच्छा सिंगल हासिल किया, मारते ही भाग पड़े थे। खबर का फील्डर काफी मिड में है, तो सिंगल तो अवेलेबल है। जी हाँ, बैट्समैन के लिए हेवन है ये पिच इस वक्त, क्योंकि बॉल बल्ले पे भी आ रहा है, आउटफील्ड भी तेज़ है और इतना स्लो भी नहीं है कि शॉर्ट टाइम ना हो। मतलब थोड़ा सा बल्ला दिखाते हैं तो वो बीच में आके, तो जो आने वाले बैट्समैन हैं जैसे फवाद हैं या उमैर बिन यूसुफ, डेफिनेटली बड़े हैप्पी बैठे होंगे बाहर के, हमारी जब बारी आएगी हम भी इस तरह की बैटिंग करेंगे। लेकिन ये 40 ओवर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं नए बॉल तक। शायद नया बॉल लें तो फिर कुछ गेम चेंज हो जाए। चालीस ओवर का आपने जिक्र किया, लेकिन जिस रेट से सिंध बैटिंग कर रहे हैं कहीं देर ना हो जाए। 40 ओवर में जिस और 160 रन जब कर लेंगे तो उसके बाद 30-35 रन अगर बच जाएंगे तो बहुत बहुत तेज़ी से रन हो जाएंगे। और शायद कहीं लगता है कि इस पार्टनरशिप ने सिंध को बहुत आगे ले गए हैं इस मैच में। 105 रन की पार्टनरशिप, ऐसी ही पार्टनरशिप एक लगी थी केपी की जानिब से जब कामरान गुलाम और सरवर बैटिंग कर रहे थे, बहुत तेज़ रन बने थे। और ऐसा ही कुछ इस पार्टनरशिप में भी हो रहा है, रन रेट बहुत शानदार रहा है। जी अली, और आपसे मैं एक बात पूछूंगा, जिस तरह ये पिच नज़र आ रही है, पिछले मैच में भी थोड़ा सा वेदर कूल था, ठंडा वेदर था, ओवरकास्ट कंडीशंस भी थी, तो फास्ट बॉलर को हेल्प मिल रही थी। अच्छा शॉट, 4 रन होंगे। खूबसूरत शॉट सऊद शकील का। फ्लोइंग ड्राइव। बहुत ही कमाल के टाइमर हैं, लेकिन ज़्यादा जोर नहीं लगाते हैं, सिर्फ टाइम करते हैं खूबसूरती से। और इस बार तो प्लेसमेंट भी कमाल की रही। 4 फील्डर्स मौजूद थे, इवन बाउंड्री पे भी फील्डर मौजूद था, लेकिन बाइसेक्ट कर दिया सारे फील्डर्स को और शानदार तरीके से 4 रन हासिल किए। बहुत ही स्वीट टाइमर हैं सऊद शकील। 150 रन की इनिंग खेल के आए हैं फैसलाबाद में, जब आखिरी बार वहाँ खेले थे। यहाँ पे भी होप कर रहे होंगे एक और बड़ी इनिंग। आगाज़ तो मिल गया और जैसी पिच है एक बार फिर, लेकिन इस बार फील्डर के हाथ में। सब कुछ बैट्समैन के हक में जा रहा है इस वक्त और बॉलर्स थोड़े परेशान हैं। थोड़ा आगे बॉल करते हैं, थोड़ी सी अगर लाइन इधर उधर हो जाए तो 4 रन। वेदर का बहुत इफ़ेक्ट होता है। लाइक जिस तरह ये पिच है, अगर यहीं पे अगर बादल होते तो यहाँ पे अच्छा भला स्विंग हो रहा होता। क्या उस सेशन की याद आई जब सदर्न पंजाब बॉलिंग कर रहा था, सिंध बैटिंग करने आया था लास्ट मैच में, एकदम से क्लाउड कवर हो गया, हवा चल रही थी और जिस तरीके से बॉलिंग हुई, अब्बास, इलियास, अहमद बशीर, इन तीनों ने बहुत शानदार बॉलिंग की थी। अगर आप उसको रेफरेंस दे रहे हैं उस मैच का। और जी हाँ, बिल्कुल इसी मैच का रेफरेंस दे रहा हूँ। और हालांकि उमैर बिन यूसुफ ने एक एंड संभाला हुआ था, लेकिन फिर भी वो मैच जीतना चाहिए था, किसी न किसी टीम को जीतना चाहिए था। उमैर बिन यूसुफ को फिनिश करना चाहिए था या बॉलर्स को वहाँ से किसी एक बॉलर को फिनिश करना चाहिए था। लेकिन जो मॉरल विक्ट्री है वो सिंध को जाएगी, क्योंकि एक टाइम पे ऐसा था जब कहीं नहीं हम सोच सकते थे कि सिंध इवन ड्रॉ भी करेगा, लेकिन जिस तरीके से वापसी की, बहुत ही शानदार। कामरान गुलाम अभी तो बाहर बैठे, एक ये भी ऑप्शन हो सकते हैं लेफ्ट आर्म स्पिनर।
जी हाँ बिल्कुल, इनको करनी चाहिए बॉलिंग, अभी तो नज़र आ रहा है। और ये बड़े क्लेवर बॉलर हैं, कुछ ना कुछ ये भी क्रिएट कर सकते हैं, कोई अपॉर्चुनिटी। 193 पे 1। पांच बॉलर्स का इस्तेमाल किया है केपी के कैप्टन कामरान गुलाम ने। सिर्फ एक ही बॉलर हैं जो विकेट हासिल कर सके हैं, वो एहसान उल्ला हैं, जिन्होंने 6 ओवर्स किए हैं, सिर्फ 42 रन दिए हैं। थोड़े महंगे ज़रूर साबित हुए लेकिन एक विकेट हासिल किए। अरशद अला जिनको हम पहली बार देख रहे हैं, वो भी महंगे साबित हुए, 71 रन दिए हैं। साजिद खान जिन पर बहुत कुछ डिपेंडेंट था, उन्होंने भी 43 रन दिए बगैर किसी विकेट हासिल किए। तो मुश्किलात रही हैं केपी के बॉलिंग यूनिट के लिए। 193 पर सिर्फ एक ही विकेट हासिल कर सके अभी तक। जी हाँ बिल्कुल, सिंध के लिए स्मूथ सेलिंग, जस्ट लाइक दिस काइट, चील की तरह। बॉलिंग में भी तब्दीली हुई है पवेलियन एंड से। एहसान उल्ला आए हैं बॉल करने और काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इनसे, लेकिन 6 ओवरों में 42 दे चुके हैं। ये काफ़ी एक्सपेंसिव थे लेकिन विकेट एक हासिल की इन्होंने। कुछ स्पेशल करना पड़ेगा एहसान आपको। और फील्ड जो है वो लेग साइड के लिए पैक है, शॉर्ट डिलीवरीज के लिए फील्ड सेट है। मिड विकेट पे एक फील्डर है, स्क्वायर लेग पे है, एक शॉर्ट स्क्वायर लेग पे भी है, एक डीप स्क्वायर लेग पे भी है और एक फाइन लेग पे भी है। गली में भी एक फील्डर मौजूद है। प्लान यही है, इसे शानदार तरीके से डील किया है। बहुत ही कमाल का शॉट इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद है लेकिन वो देखते ही रह गए। 4 रन हासिल कर लिए हैं। अटैकिंग क्रिकेट जारी है खुरम की जानिब से। जी हाँ, जैसे कि खुरम को पहले से मालूम था कि शॉर्ट पिच डिलीवरी होगी, उन्होंने एरिया पहले से सिलेक्ट किया हुआ था कि अगर पीछे करेगा तो मैं इसे यहाँ पे मारूंगा, और वही रिजल्ट हासिल किया खुरम मंजूर ने। क्या बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता है बॉलर जब आप इस तरह की वन साइडेड फील्ड सेट करके बॉलिंग करें, तो बहुत आसान हो जाता है बैटर के लिए एक्सपेक्ट करना कि कहाँ बॉल आएगा। एक बार फिर इसे खेले हवा में, फील्डर वहां मौजूद है। जी हाँ, आसानी से ये कैच ले लिया और जो प्लान था वो काम कर गया। एहसानुल्लाह और कामरान गुलाम को और एक बहुत बड़ी विकेट हासिल की अपनी टीम के लिए। इसीलिए इनको वापस लाया गया था कि विकेट की ज़रूरत थी और बड़ी विकेट खुरम की हासिल की। जी हाँ बिल्कुल, प्लान जो है वो काम कर गया केपी का, और ये इसी चीज़ की ज़रूरत थी और इसी तरह की बॉलिंग चाहिए होती है। अली, इस तरह की पिच पे आपके पास एक ऐसा बॉलर हो जिस तरह एहसान उल्ला है, बहुत ही आला, स्पॉट ऑन, तेज़ बाउंसर आया, उनके पास टाइम नहीं था और बिल्कुल अच्छी ज़बरदस्त बॉलिंग, एक्सीलेंट बॉलिंग और एक्सीलेंट रिजल्ट केपी के लिए। और बिलाखिर खुरम मंजूर 116 रन बना के अच्छी इनिंग्स, एक्सीलेंट इनिंग्स, 130 बॉलों पे सिंध की टीम ने दूसरी विकेट गंवा दी। उमर बिन यूसुफ, नए आने वाले प्लेयर, बहुत ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही स्किलफुल बैटर हैं। बहुत शानदार इनिंग खेली थी आखिरी मैच में, सर्दन पंजाब के खिलाफ 100 रन किए थे और ऑलमोस्ट अपनी टीम को मैच जितवा दिया था। बहुत ही स्पेशल प्लेयर हैं, स्ट्रोक मेकर हैं ये भी, जैसे साइम अयूब हैं या खुरम मंजूर हैं। सेम स्ट्रैटेजी से बॉल करेंगे लेकिन इस बार एक फील्डर को शायद स्लिप में लेके आ रहे हैं उमर बिन यूसुफ। तो प्लान काम कर गया। जी हाँ बिल्कुल, वो प्लान काम कर गया। लेकिन ये उमर बिन यूसुफ है, नए बैट्समैन है, 32 मैचेस खेले, 1900 रन
और 5 50s और 600s इनका कन्वर्जन रेट अच्छा है। नया बैट्समैन है, इसको थोड़ा सा आगे से भी देखेंगे, पीछे से भी देखेंगे, दोनों साइड्स इनके लिए ओपन है। या फील्डर स्लिप में ऐड किया है एहसानुल्लाह, उमैर बिन यूसुफ को बाउंसर ही किया है। एक खास बात जो उस बाउंसर की जो मुझे नजर आई खुर्रम मंजूर को, वो डायरेक्शन थी। वो वेल डायरेक्टेड बाउंसर था जो बिल्कुल उनके हेलमेट की तरफ आ रहा था, जिसे छोड़ना भी मुश्किल था, उसे खेलना ही था और राइज कर रहा था बॉल। जी हाँ बिल्कुल, बॉल जो है वो गॉट बिग ऑन हिम और वो फिर छक्का मारने चले गए, जो जिस वजह से वो टाइम नहीं कर सके और सीधा हाथ में दे के आ गया। ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि उससे पहले एक बाउंड्री हासिल की थी। उन्होंने सोचा हुआ था कि ये बॉल पीछे आएगा, मुझे मारना ही मारना है और मैं मार सकता हूं, मैं मार रहा हूं। ओवर कॉन्फिडेंस, आसान कैच नबी गुल के लिए। और प्री प्लान भी था कि मैंने मारना ही है, छोड़ना नहीं है, तो प्रीएम्पशन थी शॉट में। बैटर की ईगो भी हर्ट होती है कि आप इतने बड़े बैटर 100 पे खेल रहा हूँ, एक ही जगह फील्ड सेट कर रहे हैं, एक ही बॉलिंग करेंगे तो डोमिनेट तो मैं करूंगा। एहसानुल्लाह अब उमैर बिन यूसुफ को एक बार फिर प्लान ये है कि शायद बाउंसर ही हैं, लेकिन इस बाउंसर का फ़र्क ज़्यादा पड़ेगा नहीं। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप है, आसानी से जाने दिया। जो बाउंसर खुर्रम मंजूर को किया गया वैसे ही बाउंसर ज़्यादा होने चाहिए, वेल डायरेक्टेड। इनको अब सोचना चाहिए, नए बैट्समैन है, खुर्रम मंजूर तो जा रहे थे, उनका माइंडसेट और था। नए बैट्समैन ही आगे से थोड़ा सा स्ट्रगल शायद करें, तो इनको आगे करें बॉल। मेरे ख्याल से ये यहाँ पे थोड़ा सा जी कंट्रोल नहीं कर पाए और बिल्कुल स्पॉट ऑन था। बाउंसर जो था बिल्कुल ऐसी जगह पे ही था, हेलमेट के ऊपर। जहाँ अच्छी पेस से किया हुआ था, बहुत मुश्किल था छोड़ना भी उसे, और ऐसी पोजीशन में आ गए थे कि उसे खेलने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं थी। उमैर बिन यूसुफ अभी अभी आए क्रीज पे, माइंड नहीं करेंगे इस तरह की बॉल छोड़ने में। थोड़ा सा आगे उनके बल्ले को टच कराएं, फील कराएं थोड़ा। जहाँ शायद सेटअप कर रहे हैं एक आगे वाली बॉल को, क्योंकि काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो गए। आउटसाइड द ऑफ स्टंप बाउंसर करते रहेंगे तो ज़्यादा मसाइल होंगे नहीं। मसला तभी होगा जब बाउंसर जो है वो हेलमेट की तरफ आएगा। ये बेहतर है, शानदार कमबैक किया यहाँ पे एहसानुल्लाह ने। विकेट हासिल की इस ओवर में, 4 रन भी दिए। 197 पर 2 सिंध। It's a good delivery from Ihsanullah and ending up this over with dot delivery, 197 for 2 Sen. Umair bin Yusuf, new man in after departure of Khurram Manzoor. A stunning knock by Khurram Manzoor. Server bowling his third over.
And I've been joined by Ijaz Ahmed in Combox. Welcome, Ijaz. Thank you very much, Asif, and what a time here to witness these moment like 197 for 2. Sindh, and though that they have lost the key batter for a Manzoor, but still they have got plenty of options like Saud and Umar bin Yusuf. Both of these two, they can bat well. Slightly changing the fielding. It's a fine leg that has been coming in. I've got 2 slips, short extra, then cover and mid off, mid on. A pretty solid start and good foundation for Sindh. The way they have started their innings, and their concentration was pretty much aggressive. This is what showed by Khurram Manzoor early on, Saim Ayub. So they're in good position now. A very good partnership between Saud Shakil and Khurram Manzoor. Yes, you're right. Good partnership as Umar bin Yusuf is there. 4 deliveries for him. There you go, 2 slips. Gully, then there is a deep point. So they have got him to drive through to get runs. Really a wonderful player, Umar bin Yusuf. He has already got 110 runs against Southern Punjab on this very venue. So in a good nick, in a good form, he should carry that because it's a good time as a platform is already set, 198. He can really bat well for this evening, tomorrow. Yes, when we talk about his batting average, 37 in a domestic career. The good thing is that server just targeting stumps, wicket to wicket. And if I talk about his line or length, his 3rd over, been watching that he has been brought to pick a wicket, but Ehsanullah bowled very nicely against, especially against Khurram Manzoor. There was a plan and then he executed. Good delivery, excellent. In a moment that when a batter is looking for the back of length and might be slightly fuller, really a beautiful delivery to bowl on. Have a look. He is just attempting a Yorker, and the batter was not ready for such kind of attempts. Really lucky to got his bat there. He was on the go while playing that shot. One run in this over, 43 gone, 198 for 2. Look at this match summary. Khyber Pakhtunkhwa early on, some stunning knocks from Sarwar Afridi and Kamran Ghulam, 384. And then the way Khurram Manzoor played, tremendous century from Khurram Manzoor. They're still behind 186 runs. Well, good time for the captain, Saud Shakil, to perform there in the centre. Already done the hard work, like 32. Mer, there you go. His son already got 2 wickets. So with a good confidence, he's just backing the off onside. There you go. 4 fielders. Yes, coming up with the same intentions. Bowling bounces, some quick bounces. And this was the strategy against the Khurram Manzoor as well. And he got wicket of Khurram Manzoor as well. Yes, good one, good attempt. And I think that when you can bowl such kind of deliveries, these are really bold and quicker one. You should be delivering
because you need wicket. Your team need wicket here. And these are really good attempts by applying the fielders and working according to the plans. Look at his economy in test, especially in domestic match. If I talk about 7.2 overs, conceded 46 runs, but already taken 2 wickets. So I think these are the intentions. Well, quite stunning. Eagerly watching somewhere. Might be for food. Again, a short pitch delivery, a bouncer from Ehsanullah. Yeah, he's attempting really in a good way, like the balls we have been witnessing here. 3 deliveries. And he's attempting, trying to get something from the surface. And I think so that the captain has just given him the planes, bowl, short pitch deliveries. But those should be accurate enough. Because when you're pitching the back of line deliveries with no pace, batsmen can harm you, can play you well. There's some sort of changes. In the fielding side, I think they are applying one more slip. And Akali, fielder has just gone from onside towards slip cordon. Yes, again. Plan has been changed now. Look at these 4 fielders, very short on mid-on. Wow. So this is the 3rd bouncer in a row. Well, the beauty of cricket, being a pace bowler, that just giving that 2 more deliveries to go. All the time umpires, they are counting on each other. But really a wonderful bowling. He's just bending his back and look at that. Height, pace. And batter did see it earlier. That's why it's just gone down. Just to leave it. Because at such time, like with a dying sun, you are not in a position to give your wicket away. Over the wicket now. Ehsanullah had a very good and rising delivery. It was really quick as well. Look at that. Ehsanullah is demanding from the batter, why you're not hitting me? Yes, exactly. The gestures just giving us a bit of the hint that he was just saying him, go and pull it. Because that was in your slot. Make it some purchase from here and at a good time you're just heading away from that delivery. It reminds me, Wahab Riaz over to Shane Watson in 2015 World Cup. Again, a quick bouncer, bit low. So, a very good over from Ehsanullah, a bit aggression from him. Well, Sajid has been quick into his overs. The way that he's bowling now from media end, change of end for him might be change of luck because his wicket column has been empty. Not getting any sort of thing, but he's going through his overs quickly. So let's see, loopy deliveries, quicker one. He has got one slip. Nice confident start from Umar bin Yusuf as well. And he's changing and asking for the fielders. There's a change now. I think
There's a fielder, a short mid-wicket, and now short mid-on. And there's a feeder in deep as well. Yes, it's really a good way, because that delivery was just keeping its line. Sometimes might be he's getting some spin, because over here I think Sajid, he's just trying to pitch those deliveries towards offside. That's the line. That might be one or two can break here, or might be getting onto the pads, can get some leg befores. But Umair, this man, really a wonderful cricketer. He has got good hand-eye coordination while playing the spinner, either the pacers. I wonder if he's bowling on the same line, why he's not taking a short leg or a silly mid-on. Because this is the time for the KP that they got an important wicket, an important breakthrough. So they could put some pressure on KP batters, sorry, Sindh batters. Well, to me, I think he's allowing the batter to drive through covers. And his Mohammad Umar, fast bowler, might be ready for to give services as a night watchman. Rest the dressing room is calm. Ehsanullah continuing with the same aggression, with the same line, and smiling there. Yes, one for the over. What umpire has just given him. It reminds that you have done it here. But I think that this is really a good thinking by the bowler. He's just trying to make some tests here for the batter. That if you have been asking me to go after the ball, you need to be more confident and more practice in such kind of shots. Pull and a hook. And this is the real test of Saud Shakil's patience as well. Not out on 32. Skipper understanding his role. And it was uppish, but in the gap. Just for a single. Yes, and I think this time he has just accepted and acted upon the advice of his son. Previously we did see that he was just saying him to go after the ball, play it, connection should be there, and this time he connected, though uppishly. Bit of risk involved in that shot, but he's really lucky. No one was there. Look at that, he was just playing away from the body at point fielder, but no one was there, just going through safely there. Everyone was watching and thinking that that should have gone towards him. Oh, very good delivery. A quick and very, very good bouncer from Ehsanullah. All pressure on Umair bin Yusuf. Well, Asif, this is a good time because sun is there, light is perfect. You can bowl such kind of deliveries. Before that, umpire will be calling the spinners to come on. I think it's a good time to test the batters at this stage. Very good bowling from Ehsanullah. I like his aggression. I like his confidence and temperament as well. The way he's coming up. Early on, we were talking about his bowling action. And bit work required. Ehsanullah is in aggression, yeah? Yeah, things happening here. Yeah, at evening session. And I think this is really a good point for everyone to watch, see. Beautifully. There you go. Trying to say something from the ball.
This is the typical aggression from the fast bowlers we watch all around the world. Wow. Again, the intentions are same, and the second from the over is the signal from the umpire. But Ehsan is really testing the batters here. But you need to give credit here because I think Saud Shakil, who played a shot officially, but Umair bin Yusuf, he's just settled down, not going after the ball, to touch it, to go and play and give some chances to the opponent. Very much close to get their meters out, light meters, because sun is going down, the shades are getting longer. He's just watching towards his clock. Good looking shot. It's a very good shot with a straight bat. Nice timing and rushing towards boundary. Very good boundary from the Umair bin Yusuf. Yeah, this has been one of the hardest shot on drive in the cricket. What we witnessing here, beautifully played. So easy and comfort. Look at that. Straight bat. Head has been perfect. Balance is right and it's just earning 4 runs. This is really a wonderful batting. Shows the skills what Umair has got here. Really a good talent. .46 gone, 2 or 3 for 2. Sajid continuing. A cut shot. Fielders running towards ball, but it's a very sloppy affair. I must say that. And Sajid is not happy. Look at his aggressive eyes. Yes, exactly. He has timed it to the perfection. Arshad was after the ball. Look at that. Bit of width. Played it late. All along the ground and into the gap. Chase was there. Arshad having a good chase, but the ball has got the batter legs. But there were lots of cricket balls. So now this time Sajid. Previously Ehsanullah was doing the same thing. Whenever we talk about that, Saud Shakil got good temperament, plays good against spinners. Yeah, he's a good talent. Can play well against pacers, spinners, the medium pacers. Would you see that he has improved over the years? Being a captain, being a leader, you need to perform every time when you are in the center, either in a bowling department, in a batting. But this man is wicketless in his 14th over. Yes, a bit struggling, looking to get some wickets. And he's struggling with his line and length as well. I think he's also not getting his time. Quickly comes on and trying to do the job. Good one is just finishing the over with a good delivery. 47 overs been bowled in, 2 or 8 for 2. So this is the bowling from KP. Arshadullah and Ehsanullah got 2 wickets, but both of them the economy rate is 5.92 from Arshadullah and 5.67 from Ehsanullah. The rest of the bowlers, they're just looking to get some wickets. And fall of wickets, 84 for 1, and the second was really good partnership, 197 on second. Khurram Manzoor got out from Ehsanullah. Ehsanullah continuing his 10th over. It's a cut shot, but fielder there, protection there, just for a single. And he has played well this time. He's just making a bit of the practice of that shot, which was played up officially at a point region when he played it previously, but this time getting better. Oh, there's something that you're running in the danger zone.
Umpire Khalid Mahmood Senior having a close eye. There you go, we're just concentrating onto the run-up. You need to be out of that danger zone. There you go, Mr. Khalid Mahmood going into the center, having a close look at that area, because spikes, that can really harm the surface. 2 slips in a gully for Umar bin Yusuf. Down the leg side. He's asking for the caught behind you, and the keeper was not able to collect that. Well, when you're waiting so long and you are in aggression, I think so he is more excited. 2 might down the leg side away from the bat, and the ball was not even collected. I think he didn't see it as the wicket keeper. Desperately looking to get a wicket there. Overall, if you see that that the aggression is good, but it should be proper aggression. Yes, aggression is good for the players, but the better way is just to speak with a bat, with a ball. Have a look. Really behind the ball. Excellent. Oh, can I? Well, I think it's better just to go and bowl, even though that sometimes the gestures, the new modern era, the batters are not that scared. Umar bin Yusuf and Saud, both they do understand that they would have to bat till the end. There is no chance for the mistake. And Khalid Usman, he's in for some fielder, I think so. There is some player who is having a bit of the rest. It's a long day. But good to see him back on field. 2 slips and a gully, but let's see what results these bowlers can take from here. The KP bowlers, really hard call. oh, it's a very good delivery. Oh, goodness me, it came in and inches away from the stumps. Yeah, it was really a close call. The ball just nipping back. Look at that, where the wicketkeeper had just taken it. It had just gone down the leg side, behind the stumps. Movement. But he's just generating some good pace and making lots of efforts. We can really witness from his bowling that he's trying to get wickets. He's just making something to happen. Oh, again, good delivery. So, ending up this over with this dot delivery, 48 gone, 209 for 2 Sindh. Saud Shakil.
40वां रन बनाया उन्होंने अपना। अच्छी इनिंग्स खेली है सर झुकाकर, और उमर ने पैड किए हुए। नाइट वॉचमैन शायद आएगा। ज़्यादा वक्त बचा नहीं आज के खेल में। 5:15-16 के आसपास जो है वो दिन का खेल ख़त्म कर दिया जाता है कम रोशनी की वजह से। जो खेल का मुकर्रर वक्त है वो तो 5 बजे तक है, लेकिन ओवर्स क्योंकि मुकम्मल नहीं हुए इस वजह से खेल जारी रहेगा जब तक रोशनी इजाज़त देगी। खुशामदीद अली यूनुस। बहुत शुक्रिया शाह फैसल। मुश्किल वक्त है बैटर्स के लिए, क्योंकि अब खेल किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है, तो चाहेंगे दोनों बैटर्स के नॉट आउट जाएं। काफ़ी डिसअपॉइंटिंग दिन रहा है केपी की बॉलिंग की अगर बात करें, स्पेशली साजिद खान। जो एक्सपेक्टेड था वो डिलीवर नहीं कर पाए हैं। बहुत तेज़ बॉलिंग की है, बहुत फ्लैट बॉलिंग की है। आपके कहने की देर थी। जो फ्लाइट हासिल की, अच्छी लेंथ थी। स्पिन के लिए खेले उमर बिन यूसुफ। ज़्यादा स्पिन है नहीं इस पिच में। यहाँ एरिया अच्छा ही है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। और पूरे दिन से हम ये बात करते रहे हैं कि आप ये लाइन बेहतर लाइन है रादर देन लेग स्टंप लाइन के। फिर वही अटैकिंग लाइन ऑफ स्पिनर के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर। ओवर का इख्तिताम 210 पर 2। On the defensive KP side because of that assault there. दोनों अंपायर्स काफ़ी गुफ्तगू में महव रहे कि क्या ये रोशनी काफ़ी है मैच कंटिन्यू रखने के लिए। बज़ाहिर यहाँ से देखें तो अभी काफ़ी है, क्योंकि अब एहसानुल्लाह अगर बॉलिंग करेंगे तो डेफिनेटली बहुत जल्दी फैसला करना होगा, क्योंकि इनका जो आज इरादा रहा है वो ख़तरनाक रहा है। शॉर्ट पिच डिलीवरीज, बाउंसर्स, विकेट भी हासिल की खुर्रम मंजूर की बाउंसर पे। अच्छी जानदार बॉलिंग की है, तगड़ी बॉलिंग जिसे कहते हैं। रनअप में शाह फैसल आप बात कर रहे थे आगे ऑफ द एयर, रनअप में मसाइल नज़र आए हैं हमें। जी बिल्कुल। ये जब आखिर में आते हैं तो कोशिश करते हैं कि उनका जो रिदम है, क्योंकि वो पीछे से सही नहीं आ रहा होता, तो एक लंबी स्ट्राइड लेकर उसको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जब क्रीज के नज़दीक पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है जैसे लेबर कर रहे हैं। उस तरह का स्मूथ जो है वो रनअप नहीं है, स्पेशली जो उसका लास्ट पार्ट है। तो क्रीज को जब हिट करते हैं तो मोमेंटम लूज कर जाते हैं बजाय गेन करने के। दाद देनी होगी साउथ शकील को भी, जिस तरीके से हैंडल किया है इनकी बॉलिंग को। ये आप रनअप की बात करते हैं, स्ट्राइड से शुरू करते हैं, फिर लंबे बीच में कर देते हैं, फिर एक्स्ट्रा लंबा स्ट्राइड हो जाता है। अभी नए नए आए हैं, काम होगा, सीखेंगे, ज़्यादा बॉलिंग करेंगे, डिफरेंट कोचेस के साथ काम करेंगे, क्योंकि बेसिक्स तो ठीक दिखाई है। पेस अच्छी है, एक्शन अच्छा है, छोटी ट्वीकिंग तो हमेशा ही हो सकती है। बिल्कुल जो रनिंग स्टाइल है, अगर ये भी थोड़ा इम्प्रूव कर लें। बेसिक एक स्प्रिंटर की तरह फास्ट बॉलर का रनिंग स्टाइल होता है। शॉर्ट और वाइड साउथ दिन के इस लम्हे पर अपनी विकेट गंवाना नहीं चाहेंगे। बहुत ही करीबी मामला था ये। ये रेयर गलत शॉट अटेम्प्ट किया साउथ शकील ने आज इस इनिंग में। आउटसाइड दी ऑफ स्टंप बॉल, जरूरत नहीं थी, बस जाने देना चाहिए था। शायद बॉल ने उतना बाउंस नहीं किया जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऊपर से खेल गए, लेकिन लाइन इतनी बाहर थी कि उसको छोड़ने में शायद ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए थी। वैसे भी परसेंटेज शॉट नहीं था, फील्डर मौजूद है बाउंड्री पर। बहुत डिसिप्लिन्ड और कॉम्पैक्ट इनिंग रही है ये साउथ शकील की जानिब से, एक प्रॉपर कैप्टन इनिंग। ये जब बैटिंग करने आए थे तब खुर्रम मंजूर बहुत ही शानदार फ्लो में थे,
अच्छा साथ निभाया उनका, टेक्निकली बहुत साउंड है। साजिद खान, क्या गुफ्तगू हो सकती है कि कब बंद करेंगे, फास्ट बॉलर की जगह स्पिनर लगा दिया जाए। मुझे नहीं लगता ये क्रिकेट की कोई बात हो रही थी। थोड़ा सा लगता है कंसंट्रेशन लूज की है सऊद ने, क्योंकि बिल्कुल अभी भी अगर आप उनका फुटवर्क देखें तो दोनों पैर बिल्कुल क्रीज पर ही जमे रह गए। स्ट्राइड नहीं लिया, वेट नहीं आया शॉट में, बिल्कुल दूर दूर से हाथों से ही खेल दिया। एग्रेशन दिखा रहे हैं केपी के बॉलर्स मुसलसल सिंध के बैटर्स के खिलाफ। या ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मुसाफिर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, लंबे मुसाफिर हैं, कहीं दूर जाना है, ट्रेन लेट है, थके थके दिन के आखिर में चाहेंगे कि अब रिलैक्स हुआ जाए, वापस जाएं, हॉट शावर लें, रिलैक्स हों, कल दोबारा आएँ। इस मैच की जो ट्रेन है वो भी छूटी नहीं सिंध के हाथ से, जिस तरह की उन्होंने रिप्लाई की है। ये एक्सप्रेस फास्ट बॉलर हैं, उसको अच्छा राइड किया, काम करना पड़ेगा स्वीपर को, और सरवर आफरीदी ने अच्छे से बॉल को चेस किया और 2 रन बचाया अपनी टीम के लिए। आपने ट्रेन की बात की, रावलपिंडी की बात की, और हम इस वक्त रावलपिंडी में हैं, तो ये हो नहीं सकता कि हम जिक्र ना करें रावलपिंडी एक्सप्रेस। ग्रेट शोएब अख्तर, इसी स्टेडियम पे उन्होंने अपनी क्रिकेट का आगाज़ किया। पाकिस्तान अंडर-19 की तरफ से न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ वो खेले थे टेस्ट मैच। ये शोएब अख्तर इनक्लोजर भी है, हमारे दाएं जानिब का जो स्टैंड है। और फिर उसके बाद जो उन्होंने जितना दुनिया में नाम कमाया, ना सिर्फ अपना बल्कि इस शहर का भी, रावलपिंडी एक्सप्रेस। काफ़ी सारी मशहूर लाइंस, मशहूर कमेंटेटर्स की उनकी रावलपिंडी एक्सप्रेस के नाम से बहुत उन्होंने धूम मचाई दुनिया क्रिकेट में, जब तक वो खेलते रहे। तो हम कह सकते हैं एहसानुल्लाह खैबर एजेंसी एक्सप्रेस होंगे, उनका ताल्लुक वहाँ से है, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से वो भाग के आ रहे हैं। खैबर एजेंसी एक्सप्रेस तो नहीं, लेकिन एक खैबर मेल जो है बड़ी मशहूर एक ट्रेन है, ये खैबर मेल के ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं, थोड़ी सी अगर अपनी रनअप पे काम कर लें। वैसे खैबर मेल भी इतनी ज़्यादा एक्सप्रेस होती नहीं है। 214 पर 2 सिंध काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए। अगर आपको याद हो, जब हम दिन का आगाज़ किया था तो हमने बात की थी कि केपी शायद बहुत आसानी से ये मैच जीत लेगा या बहुत कमांडिंग पोजीशन में रहेगा, लेकिन ऐसा रहा नहीं है कुछ। खुर्रम मंजूर की शानदार बैटिंग, साइम अयूब का अच्छा साथ, सऊद शकील की अच्छी बैटिंग, डेफिनेटली सिंध इस मैच में वापसी कर गया, ये तो कहना पड़ेगा। जी बिल्कुल, और जितनी तेज़ी से उन्होंने रन्स किया, वो एक आउटसाइड चांस अपने लिए भी उन्होंने बना लिया इस मैच में। जब साजिद खान लेफ्ट हैंडर्स को बॉलिंग कर रहे हैं, उन्हें भी ज़रूर उस्मान ख्वाजा की याद आती होगी। जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ वो खेले थे, बहुत ज़्यादा रन्स बनाए थे उस्मान ख्वाजा ने भी। 214 पर 2। उस्मान का दिल भी
अंपायर्स एक बार फिर इकट्ठे हो गए हैं, लाइट मीटर निकालेंगे, रीडिंग लेंगे और कल वाली रीडिंग जिस पे मैच ख़त्म किया गया था उसी रीडिंग का ख्याल करना होगा। और शायद यहाँ पे उन्होंने बैटर्स को कहा है कि काफ़ी हो गया है, अब लाइट काफ़ी नहीं है कि मैच को जारी रखा जा सके। और आप जानते हैं कि दोनों अंपायर्स बहुत ही प्रोफेशनल अंपायर हैं, एक एक चीज़ का ख्याल रखते हैं, बहुत एक्टिव नज़र आते हैं। नासिर हुसैन अब बेल्स को उखाड़ फेंकेंगे और इसका मतलब यह है कि मैच आज के दिन का इख्तिताम पजीर हुआ है। 214 रन बनाए हैं सिंध ने 2 विकेट्स गवा के, ट्रेल अभी भी 170 रन की है। अच्छी बैटिंग की है साउथ शकील ने, एंड पे अच्छा साथ भी निभाया उमैर बिन यूसुफ ने। और कल जब दोबारा आएंगे तो दोनों वेल सेट बैटर्स होंगे और अच्छे तेज़ रन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कल पहले सेशन में इन दोनों से। जी बिल्कुल, दोनों फ्री फ्लोइंग प्लेयर्स हैं और ज़रूर आज के दिन के इख्तिताम तक उन्होंने एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। और ये रीडिंग लेने का सही तरीका है और वो रीडिंग जो है ये बाकी मैच में जिस तरह अली ने कहा कि इस्तेमाल होगी, लेकिन दाद देनी होगी सिंध के इन दोनों बैटर्स को। और इससे पहले खुर्रम मंजूर और साइम को भी दरमियान के सेशन में रन रेट तो बहुत ही लाजवाब था, 5.77 का आज के दिन के खेल में। तीसरा सेशन ज़रूर सिंध के नाम रहा, सिर्फ 1 विकेट और 86 रन उन्होंने बनाए। पूरे दिन में हमें तेज़ रफ्तार बैटिंग देखने को मिली, अच्छी बॉलिंग देखने को मिली। फर्स्ट क्लास क्रिकेट का एक और अच्छा और दिलचस्पी से भरपूर दिन था आज यहाँ पे पिंडी स्टेडियम में। ये एक स्ट्रॉन्ग आगाज़ है। दोनों खुर्रम मंजूर और साइम अयूब ने रन्स किए। खुर्रम मंजूर ने सेंचुरी स्कोर की, 116 रन्स बनाए। साइम अयूब डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि आगाज़ मिलने के बाद अपनी विकेट गवा दी कैजुअल शॉट मार के। साउथ शकील ने बहुत ही सॉलिड इनिंग खेली है 43 रन की। उमैर बिन यूसुफ ने उनको अब ज्वाइन किया है 5 रन पर, वो मौजूद हैं 214 पर 2 सिंध। 2 विकेट्स हासिल किए हैं एहसानुल्लाह ने, बाकी विकेट्स की तलाश में रहे तीनों बॉलर्स इमरान खान, अरशदुल्ला और साजिद खान जो कि मेन स्ट्राइक बॉलर्स हैं। लेकिन अगर सबसे जो हैरानगी वाली बात है वो इकॉनमी है, सबकी ही ज़्यादा है। 3 की भी अगर बात करें 5.92 अरशदुल्ला की, 4.91 एहसानुल्लाह की, 3.19 साजिद खान की। तो महंगे साबित हुए हैं सारे बॉलर्स केपी के। और इनिंग्स की का जो रन रेट है वो 4.2 है, जो कि काफ़ी अच्छा समझा जाएगा सिंध के लिए। ये अरशदुल्ला की आपने बात की, काफ़ी वेरिड लाइन और लेंथ पे उन्होंने बॉल की, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन के सामने स्ट्रगल किया और सिंध के बैटर्स ने उसका भरपूर फायदा उठाया। स्पिन में साजिद खान ज़्यादा इंप्रेशन नहीं कायम कर सके। साउथ शकील जब ड्राइव करते हैं तो उससे बेहतर नज़ारा देखने को नहीं मिलता। खुर्रम मंजूर ने भी भरपूर कुव्वत वाले स्ट्रोक्स खेले। जब भी शॉर्ट पिच बॉलिंग हुई उसका भी भरपूर उन्होंने जवाब दिया। आखिर में वो शॉर्ट पिच बॉल पर ही आउट हुए, लेकिन इससे पहले काफ़ी रन इस स्ट्रोक पर बना चुके थे। उमैर बिन यूसुफ का ओपनिंग स्कोरिंग शॉट जो था वो बाउंड्री थी। सऊद ने भी आखिर तक देखभाल कर संभाल कर बैटिंग की और नॉट आउट वापस गए। जो मैच की सूरत हाल है 2 दिन के बाद, सिंध की टीम अभी भी 170 रन से पीछे है, लेकिन अच्छा जवाब दिया उन्होंने। 384 रन का जो स्कोर किया था खैबर पख्तूनख्वा ने। खुर्रम मंजूर की सेंचुरी और कप्तान साउथ शकील 43 पर नॉट आउट हैं आज की शाम। अब जबकि दूसरे दिन का खेल अपने इख्तिताम पजीर हुआ है तो यहाँ पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से हम भी आपसे इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है कि आपने हमारी कवरेज को एंजॉय किया होगा और हम दोबारा आपके साथ हाजिर होंगे लाइव एक्शन के साथ। तो तब तक हमें पिंडी स्टेडियम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान, शब बखैर।